हेलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये सही है। ठीक हो गया, हाँ, ये नहीं बंद है। बाकी सारी आगे हो रही है ना। हाँ, मैं वो कर दिया। क्या कर रहा है? हेलो। अब उनने
Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible and if so like this आप लोग please comment में hand raise कर दें जिन जिनको मेरी आवाज आ रही है. Thank you so much. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable and distinguished panelists, ladies and gentlemen. Welcome to another orientation and open house session. First of all, I would like to congratulate all the participants who now become a part of Shifa family during this diploma in family medicine, which is integrated also with certificate course on mental health and research for universal health coverage. My name is Dr. Huda Shoaib. I'm campus director here at Global Institute of Human Development, Shifa Ta'mir Millat University. I'm also the course coordinator of this diploma. We will now proceed with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. Jazakallah. In this prestigious session, which is basically the orientation session for our candidates of batch 2023, and also an open house session for those candidates who have not registered themselves yet. This diploma in family medicine with integrated certificate course on mental health and research for universal health coverage is held by Shifa Ta'mir Millat University, Global Institute of Human Development, जो कि शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी का एक constituent unit है, School of Universal Health Coverage and Central Institute of Family Medicine. In the start of the session, we shall have a quick presentation. हमारे जो panelists आप लोगों को explain करेंगे and वो हमें help भी करेगा कि how we are going to enrich our insights and knowledge of the course being launched और इसका future impact क्या होगा आगे. Before we proceed forward, हम अपने panelists का introduction आपके साथ करवाते जाते हैं. Our first panelist is Professor Dr. Abdur Nasir Shah. Dr. Nasir Shah is a professor of family medicine at Central Institute of Family Medicine. Professor Dr. Zafar Mirza, he is the ex-health minister and professor of health system and population health. Dr. Zafar Mirza is also leading School of Universal Health Coverage, and he's also a faculty of Global Institute of Human Development, Shifa Ta'mir Millat University. Professor Dr. Saima Parvez. Dr. Saima is the head of Department of Family Medicine and she's working in Shifa Ta'mir Millat University. Professor Dr. Fareed Minhas. Professor Dr. Fareed is the professor of psychiatry and global mental health at Global Institute of Human Development, Shifa Ta'mir Millat University. Professor Dr. Seham Sikandar. Dr. Seham is the professor of global mental health at Global Institute of Human Development and Shifa Ta'mir Millat University. And we have with us Dr. Sayyid Usman Hamdani,
who is the founding director and assistant professor at Global Institute of Human Development, Shifa Ta'mir-e-Millat University. Today we have two more special honorable guests. One is the Professor Dr. Muhammad Iqbal Khan, who is the Vice Chancellor at Shifa Ta'mir-e-Millat University. Professor Dr. Muhammad Amir, Dean Faculty of Health Sciences, Shifa Ta'mir-e-Millat Universities. Our honorable guests will also join us during these sessions. Before we proceed forward, I would like to go through some pictures in the slides, जो कि हमें background knowledge के बारे में बताएंगी कि how family medicine practice came into being. And we are very lucky and privileged to share this historical moment of the 63rd session of WHO EMRO session in Cairo, in which the resolution to introduce family practice was approached. And let me share the work that has been done behind the scenes to develop the family medicine in the EMRO regions, which consist of 22 countries. And these are the glimpses of sessions conducted by the representative and technical experts from 22 countries. The aim was to develop a family medicine diploma in the region. These are further few glimpses. This is the screenshot of meeting that was conducted throughout the COVID-19 pandemic. और इससे हमें यही नजर आता है कि WHO was so committed to promote family medicine in region, and they continued during the COVID time also. This is the historic picture when right in the capital of Pakistan, Islamabad, WHO country and the 10 countries of Pakistan signed an agreement to promote family medicine in Pakistan. We are lucky that Shifa Ta'mir-e-Millat University is also a part, and this is the few glimpses in which there is collaboration with the Ministry of Health and the other organization, WHO itself. Above all, this diploma program of STMU is very lucky to have people who are pivotal in this journey. And the man behind the scene who was pivotal to pass the resolution to WHO and who supported the family medicine in 22 countries, Professor Zafar Mirza. And the person, he's the technical support who has given to Pakistan to develop the curriculum is Professor Dr. Nasser Shah. We are very lucky to have both of them. We are going to start the session with the bigger picture, and none other than Professor Dr. Zafar Mirza. Dr. Zafar, can you hear me? Ji, I can hear you. The floor is yours. Please continue. Okay, Ji. Thank you very much, Dr. Huda, and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all the 145 participants who are online today. It is a real privilege and honor to have this course starting and being part of it. जिस तरह के भी डॉक्टर खुदा ने बताया, जब वो बैकग्राउंड बता रही थी, तो ये जो 63rd सेशन था रीजनल कमेटी ऑफ WHO इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजनल ऑफिस, ये टेक्निकल पेपर जिसके नतीजे में ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह I had this honor to present that paper. Or there's a long journey since then where we were actually promoting this idea of family medicine among general practitioners in our 22 countries of the region to a day that we are having this inaugural session with all of you participating. So let me first of all congratulate all of you who have registered in this course by just assuring you that you have made a very right decision and you are becoming part of not just this course but a national movement for advancing universal health coverage, strengthening primary health care, both in private as well as in the public sector. All of you are the most important pillars of this primary health care, as we will talk about it in a minute. But let me start with also a global context which is set by Sustainable Development Goals, which are now going to end in 2030, a most comprehensive package for human development
in human history, which what we call Sustainable Development Agenda. And obviously, health is very, very central to this Sustainable Development Agenda. Can you please click, Huda? So the third goal in this SDGs is actually a goal which is related with health, and it seeks global health and well-being for everybody. Next, please. And you see, please press once more. So the SDG, health and well-being, which has universal health coverage as one of its target to be achieved by 2030, is not possible if we do not focus our attention on strengthening and expanding and ensuring the quality of the primary health care. And when we say primary health care, basically it is a very wholesome package, which is not just focused on delivering curative services, but it also involves preventive services, promotive services, rehabilitative services. And not only that, it steps out of health sector, and it also talks about multi-sectoral collaboration and multi-sectoral actions to promote health by empowering people and communities. And all this can happen only at the primary healthcare level, where not just curative services are delivered, but also we set up a system to deliver essential public health functions which generate early warning signs for any epidemic or any other public health emergency. And this is only possible if an integrated approach is adopted at the primary healthcare. Next, please. So as I was just saying, whereas health is the centerpiece of the Sustainable Development Agenda, universal health coverage is the centerpiece of the health goal. And within universal health coverage, primary health care is the centerpiece. So all of these are essential ingredients of this recipe, which we call universal health coverage, which is not possible without each other. And all these elements, primarily primary health care and universal health coverage, are interdependent and they reinforce each other. And one in its own right is not present a complete story. Next. So we keep mentioning universal health coverage, but what I have noticed is that even at a very high level of policy making, people continue to show ignorance about this very fundamental concept of universal health coverage. So I thought that I will very quickly explain this to you. WHO understanding and conceptualization of universal health coverage is that when all people and communities can use 5 kinds of services: promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health services that they need of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to financial hardship, which means that those who cannot pay cannot be ignored. They have equal right to receive quality health services. Only then universal health coverage and its stream become possible. Next. Now, when we talk about universal health coverage, it is also very important to set the context for this and also understand that what different important factors surround universal health coverage. So first of all, we all have talked about, and we keep mentioning, human right to health. So universal health coverage, if you like, is realization of fundamental human right to health. Hence, it is very actively promoted by different programs at different levels by World Health Organization. It is, as I just mentioned, it is part of Sustainable Development Goal Agenda. The national governments have adopted in recent years their national health policies, which are based on the idea of advancing universal health coverage, and which in itself is dependent on primary health care. Next, please.
Now, where does the role of you people, general physicians, family physicians come in? So whereas I have, cascaded this explanation, UHC, which is dependent on PHC, but when you actually go at operational level, primary healthcare itself is not possible without family physicians and general practitioners. When I say GPs and family physicians, I interchangeably use this term. So do not get confused because of that. But the important thing is that whether in public sector, whether in the private sector, it's general practitioners and family physicians who are the first point of contact in many cases for people who come with their health problems to them, or they go out through community health services and monitor the delivery of community health services. So the role of primary healthcare and the role of family physicians and GPs within PHC is so fundamental, so basic that we cannot go without them. Next, please. You have already heard about it, 63rd session of regional committee, which actually after that technical paper that I mentioned at the beginning, the 22 ministers of health in Eastern Mediterranean region, including Pakistan, Iran, Afghanistan, and North African countries, came up with this resolution that in order to strengthen primary health care, we need to scale up family practice because that's the only way towards progressing towards universal health coverage. Next, please. Now, the thing is that, and this is very important point, in a developed world or in a high-income countries, for example, in UK, where we all keep hearing about NHS, GPs are given a lot of importance, lot of resources, lot of dignity and respect because of this realization that they are most important players in healthcare. So as a result, a lot of investment is done in terms of their education and training. And there is a total of around about 11 years of medical education and postgraduate training, which enable a doctor to be called as general practitioner in NHS. In developing countries, in low and middle income countries, the situation is not the same. So in our countries, since we have set up ourselves through our policies to advance universal health coverage and to strengthen primary health care, we have realized over the last couple of years especially that we need to invest in the upgradation of knowledge and training of general practitioners. But we cannot afford at this point in time for every GP, and it is also not possible that every GP does proper post-graduation, does MCPS or FCPS, and rightly so also in some cases where GPs who have been in practice for more than 5 years have already gathered a lot of knowledge and a lot of experience about delivering healthcare, but a certain level of refurbishing of their knowledge would suffice, would work. So as a result of this, the resolution that I was showing to you in the last slide was actually, it called for a bridging programs, flexible training programs for existing GPs while they continue to do their practice by administering a 1-year short course, which we call diploma, will enable them to upgrade their skill sets for becoming more accomplished family physicians. Next, please. So as I was saying, the standard pathway of clinical practice in Pakistan for doctors to initiate their practice is MBBS, house job, postgraduate training if they want to become specialist,
and practice. But in case of family medicine, actually anybody who is registered, as all of you know, registered with PMDC can actually put up a board and start practice. So basically, please keep clicking, Dr. Huda. So in order to fill that gap, which I was just mentioning, to invest in the upgradation of knowledge and skills of our general practitioners, according to the recommendation of WHO and following their recommendation, this has now started as a diploma program, as a bridging program, which can bridge that in case of family medicine for practitioners to upgrade their skills. And this is not just happening in Pakistan, it is happening in many other low and middle income countries. Those of you who have this understanding that perhaps this is an inferior way of post-graduation, or maybe since perhaps we cannot afford or we could not manage MCP and FCPS, so this is the second best. Actually, this is not the case. For many of you who are already specially in practice, it will definitely upgrade you as a family physician with post-graduation. But for those who have less experience and who are just starting the practice or just few years in the practice, this is a first step. This is how I would put it. This is a first step towards, if you like, also get a proper post-graduation, that is FCPS and MCPS in our case, or MRCGP, if you like. So this also prepares you for that. So this would be a wrong way of perceiving it, that it is perhaps a low-grade, education. No, this is a very well thought-out program recommended by WHO, and countries are following that. And this is why in Pakistan, many actually, as you know, private universities and public sector universities, medical colleges, they have actually initiated this one-year diploma program. I think around about 10 universities in Pakistan are already doing this. Next, please. So in our case, and this is perhaps my last few thoughts that I want to share with you, is that our diploma is perhaps one of the most credible program of family medicine for 1 year. And the reason for that is that we have spent about almost 2 years in, putting this together, taking everybody on board, collaboration of all important organizations. For example, the Shafat Amir-e-Millat University, which is one of the largest private sector universities, their Shifa College of Medicine, Global Institute of Human Development, School of Universal Health Coverage, all of them have played a very important role there. And also the Department of Family Medicine, particularly in Shifa College of Medicine, has played a very important role in developing this program. Then Central Institute of Family Medicine, I think all of you know Dr. Nasir Shah and his very long-standing, passionate efforts to promote family medicine in Pakistan. So it is a collaboration, very active collaboration between Shafat Amir-e-Millat University and Central Institute of Family Medicine. World Health Organization, with whom we have a MOU, which we have signed with them. And not only WHO, but Ministry of National Health Service Regulation and Coordination, and then British Asian Trust, all of them are active partners, collaborators, and supporters of this program. Next, please. And another unique feature of this diploma is that, and this is actually the approach that we are taking in our global Institute of Human Development and School of Universal Health Coverage in STMU, is that we have to align our public health, medical education and training with the needs in the country. And this is why
we have actually included, unlike other programs, and I have seen many of them currently being delivered in Pakistan, that we have, for example, built in certain special modules and special streams within this one-year diploma. First one is on mental health. The burden of disease because of mental health is huge. There is no, at a GP level or at a family physician level, there is hardly any attempt being made in the country currently to actually also train our general physicians, practitioners in mental health. So there is an inbuilt 6-month diploma, certificate course on mental health education and training and practice. Then as GPs and family physicians, you sit on a huge opportunity to undertake different kinds of research during your practice. But as we say, eyes cannot see what mind does not know. If we are not trained and we don't have the right skill sets for undertaking clinical research during our practice, we will lose, and many opportunities will pass in front of us. So there will be a foundational training in medical research, which is also a part of this diploma. And there is a special module because I think it is very important that all of you also have a bigger picture in which all of you fit in. You have a very important role to play. So the larger context within which universal health coverage and primary healthcare is being advanced in Pakistan and strengthened, we also give you a very good comprehension of that and the role, specific and special role that you have within that. And as I earlier said, all of this then prepares you for MCPS in family medicine. If you want, you can continue on to FCPS and also for MRCGP. Next, please. So I will end here. I will be myself teaching the universal health coverage module. So I will be in touch with you personally. I will end by just saying that among many options when I left government were available to me to pursue, but I have chosen this path to actually invest in our next generation of medical practitioners, especially GPs and family physicians, and also next generation of our medical students and public health students, so that we contribute in strengthening their capacity and understanding of our healthcare needs in the country so that they can more effectively play their role. I wish you good luck in pursuing this diploma, and I will be, inshallah, from time to time in touch with you. Thank you very much, Huda. Back to you. Thank you so much, Dr. Zafar. Indeed, a very detailed overview on universal health coverage और इसकी importance क्या है family medicine में और इसको क्यों मॉड्यूल में ऐड किया गया है, ये डॉक्टर जफर मिर्जा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. आई होप कि सब लोगों को क्लैरिटी है. इन केस के अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं जो स्टिल अनआंसरेबल हैं फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन क्वेश्चन आंसर सेशंस. और रियली इट्स Dr. Zafar as explained that how universal health coverage and primary health care centers are interdependent on each other, which are further dependent on family physicians. So I thank you, Dr. Zafar, for this. Next is, I would like to request Dr. Saima Parvez to take the floor and brief us about the diploma in family medicine. Over to you, Dr. Saima. Ji, Assalamu alaikum. Thank you so much. Okay, so I will now talk to you about a little bit about an orientation to diploma program. As you can see, it's a one-year program. We've started from this month. It's a blended learning program with online option with Google Classroom and pre-recorded lectures. And then there's a practical component in which we are encouraging people who do not have the required experience to join us
for clinical rotation so that we give you that experience, and as well as some workshops. Our online contact sessions are approximately 150 hours, and our practical sessions, by practical sessions I mean the workshops that we have planned for you, they will be roughly about 50 credit hours. Yes, next please. So we've started already, and we will intend to go on till the next year, inshallah. So who can apply for this diploma? So anyone who has done their MBBS, who has done their house job and has a valid PMC or PMDC certificate are eligible to apply. Next, please. So anyone who is an MBBS graduate within the country, we are encouraging doctors who are working in the BHUs, RHCs, or any GP clinics or medical officers who do not have a postgraduate degree. This is an opportunity to get one. And you can join, especially those general duty medical officers who are working without any postgraduate degree, they can register for this diploma. And also a lot of lady doctors who we know that are unable to achieve a postgraduate degree, we would encourage them to apply and join this program. So for those of you who have less than 5 years of experience after doing your house job, we are arranging clinical rotations for you depending upon where you are residing. Or generally, what we have designed is that for family medicine, we would want an 8-week rotation, medicine, peds, and one of the surgical or obs-gynae specialty, 8 weeks each, emergency medicine 4 weeks, and psychiatry 4 weeks. Next, please. So the modules that are present, universal health coverage, this is a unique module, jo ke kisi aur, as far as my knowledge goes, there is no family medicine program which is also giving due importance to UHC or universal health coverage. And you've just heard from the pioneer of UHC, Dr. Zafar Mirza, who just spoke to you previously. We will be having modules on communicable diseases, principles of family medicine, medical surgical problems, mother and child health, mental health, and of course the practical skills. These will be conducted through workshops. And the common medical problems, you're aware, cardiovascular, respiratory, endocrine, GI problems, neurological, dermatological. So again, the teaching material has been divided into modules, and they will be delivered through your Google Classrooms, and it will be self-paced. So yeah. And these are the surgical problems, common surgical problems. So at least your theory should be well taken care of. Next. And these are the practical skill workshops that we intend to do. This is according to the cities where you reside. So we will have a communication skills workshop and using clinical equipment. We will have a workshop on doing a focused clinical examination. There'll be workshops on research and on basic life support. It's a blended learning course. We don't want you displacing yourself from your hometown. So your lectures, your assessments, your discussions, they are going to be online. We will have hands-on workshops according to our candidates, because our candidates are widespread all over the country, and we will arrange workshops for them accordingly, and we will tell you in due course of time, so don't worry. And then we will also arrange clinical attachments for you depending upon which cities you reside in or which cities are closest to you. So when we have next year, inshallah, we'll be having our first examination of this diploma. So we intend to do it in 2 sites, Islamabad and Karachi. So those who are in the northern parts of the region, Islamabad, KPK, AJK or Gilgit-Baltistan, they will have their examination in Islamabad, and those from the south, they will have their exam center in Karachi. So this is only once. Your assessments will be, we will talk to you about the assessment. So you will have to do a consultation, an observation of your consultation. We will arrange the facilitator for you.
So at least 2 what we call COTS, consultation observation tool, and 3 mini CX. So this is a mini clinical examination. So we will assign a facilitator for you who will actually assess you on your skills. End of modules, जो आपका online program है, there are MCQs that you will have to attempt, and you can only attempt them once you've gone through the theory material. And then in your final assessment, you'll have an exam of 100 MCQs and a 12-station OSCE. This will be, as I said previously, will be in Islamabad and Karachi. Next. So who will award the diploma? The Shifa Ta'mir-e-Millat University will give you a diploma. And remember, I think एक चीज which we want to highlight is हम अपने डिप्लोमा या मास्टर्स को नहीं चमकाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग हो जाए और आपकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए so that you can then go on to appear in MCPS Family Medicine and MRCGP International. And these are affiliated with the CPSP and the Royal College of GPs respectively. So, so we will, for this year, we're talking about the diploma in family medicine. For those of you who are successful in completing the diploma by the end of next year, we will then put you into the master's program if you so desire. And master's program will just consist of continuation of subspecialty rotations. And in master's program, you will be given more orientation about research methodology and doing research. Okay, so that is all from my side. Thank you. Thank you so much, Dr. Saima. Indeed, एक डिटेल ओवरव्यू दिया है डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन में, और सबसे पहले तो मैं उन पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करती हूँ जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है और जो हमारे साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं. आई होप कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो आप लोगों की हैं वो इसमें एड्रेस होंगी. अगर नहीं भी हुई तो वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो. प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. Thank you so much, Dr. Saima. Next, we will come to the mental health component, which is integrated in the Diploma Family Medicine. And I would now request Dr. Syed Usman Hamdani to take a lead in briefing us about the integrated certificate course on mental health and research for universal health coverage, and how we can implement the research practicum जो कि diploma में embed हुआ हुआ है. And उसकी बाद में आगे impact क्या आएगा. Over to you, Dr. Hamdani. Thank you, Dr. Huda. Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to all participants. Dr. Huda, can you advise me? अभी मेरे 6:40 हो रहे हैं लंदन में, तो we are running 5 minutes late. So इसका मतलब है कि I have until 6:50. ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही है. बिल्कुल ठीक है. Thank you so much. सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम. और जैसे डॉक्टर जफर ने और डॉक्टर साइमा ने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है कि वाई दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल प्रोग्राम, जिसमें ज़्यादा फोकस ये है कि हम किस तरह से स्किल्स बिल्ड करें और एक बिग विजन पे हमारा फोकस है. इसमें हमारा मेंटल हेल्थ को शामिल करने का एक मेन मकसद ये था कि बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में देखे जाते हैं और लोग जीपीज़ के पास जाते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन एडिक्वेट केयर ना होने की वजह से, स्टिग्मा होने की वजह से, एडिक्वेट ट्रेनिंग और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ना होने की वजह से जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन का टाइम होता है, जब ये चीज़ें फर्स्ट अपीयर होती हैं और लोग जाके फर्स्ट टाइम किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हेल्थ सीख करते हैं, वी मिस दैट विंडो. मैं अपने करंट रोल में मैं रिसर्च लीड हूँ वेलकम ट्रस्ट में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं यहाँ इनका मेंटल हेल्थ का रिसर्च लीड हूँ. Before I was in Islamabad at Shifa Ta'mir-e-Millat University, and I continue to support the university and the programs. तो we felt the need कि अर्ली इंटरवेंशन में जीपीज़ का बहुत अहम रोल है. और दूसरा जो अहम एस्पेक्ट है सारी चीज़ का वो ये है कि हमें अपने एंड यूज़र्स यानी जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जाए, और वो तभी हम पहुंचा सकते हैं जबकि हम उनको उनके डोर स्टेप पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो एविडेंस बेस्ड हों, कल्चरली अप्रोप्रिएट हों और इफेक्टिव हों. एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करें उन तमाम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव दैट वी हैव. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड
कि प्रोफेसर फरीद मिनहास, डॉक्टर सिहाम सिकंदर और डॉक्टर ज़िले हुमा, apart from the other faculty, are going to be working with us on this mental health and research for universal health coverage program. और हमारा ब्रॉडर विजन इंशाल्लाह यही है कि किस तरह हम अपनी वर्कफोर्स को, हेल्थ केयर वर्कफोर्स को एट द ग्रास रूट लेवल ट्रेन करें कि वो अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट कर सकें एट अ कम्युनिटी लेवल. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ आउटलाइन. आप में से जिन लोगों ने लास्ट ओरिएंटेशन अटेंड की थी उनको इसका इल्म होगा. जो लोग नए हैं, दैट इज़ बेसिकली ये उनके पर्पस के लिए है. सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो लोग DFM के, डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के प्रोग्राम के अंदर एनरोल होंगे, उसी के लिए हमने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट को इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि कोई जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाए, रादर देन के एक अलग वर्टिकल प्रोग्राम बना दें जिसकी स्टैंड अलोन कोई हैसियत ना हो. और इसका जो एक बहुत अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि रिसर्च प्रैक्टिकम, and I have seen some queries as well in the chat box, so I'll address those queries as well. Research is really important because unless you generate evidence on your own population, तब तक आप अपनी पॉपुलेशन को टेलर मेड bespoke solutions नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो वी विल वर्क विद यू टू मेक श्योर कि आपकी रिसर्च स्किल्स को पॉलिश किया जाए और आप अपनी कम्युनिटी को बेहतर तौर पे समझ सकें और उनके लिहाज से इंटरवेंशंस और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर सकें. We have very strong track record working with the Department of Mental Health at World Health Organization. और हमने पाकिस्तान में रहते हुए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए हैं, CBT, जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेस्ड इंटरवेंशंस होती हैं, जो कि कम्युनिटी में फर्स्ट लाइन के तौर पे रिकमेंड की जाती हैं फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन. दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर इंटेंडेड to be delivered by non-specialists. So these are not for psychiatrists and psychologists to be delivered, बल्कि जो frontline workers हैं हम उनको ट्रेन कर सकते हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो वी विल वर्क विद यू टू सी कि हम किस तरह आपको इनमें सर्टिफाई करें और आप इन प्रोग्राम्स को अपने पेशेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर. और वी विल वर्क विद यू टू डिलीवर हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स. आई हैव सीन सम क्वेश्चंस. हमने कोशिश ये की है कि हर चीज़ को हाइब्रिड रखें, वर्चुअल रखें. हम देखेंगे कि अगर पार्टिसिपेंट्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद हैं और जो है हम उनको इन पर्सन बुला सकें और वर्कशॉप कर सकें, लेकिन दिस विल बी हाइब्रिड. सो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि यू डोंट हैव टू लीव योर वर्क प्लेस, यू डोंट लीव टू हैव योर कमिटमेंट्स, एंड आपको हम वहीं पे डिलीवर कर सकें. So what will GPs achieve as a result of whole of this package? I'm sure कि इस तरह के कॉन्टेक्स्ट जो मैंने सेट किया आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी. फी स्कॉलरशिप्स, I'm sure आप लोगों को अब ये अवेयरनेस होगी कि हमारा जो इसमें मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट कोर्स है, जिन लोगों ने उसके लिए ऑप्ट किया है उनको फ़ी में एक बड़ा रिबेट मिला है और एक स्कॉलरशिप मिला है. उसका मकसद ये है कि वी डोंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस प्रोग्राम. हमने पूरे का पूरा जो मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स है उसको एज अ स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूट कर दिया है डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन में. तो जिन लोगों ने दोनों प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया है उनकी फीस रिड्यूस होकर आधी से भी कम रह गई है. और उसका मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी नेग्लेक्टेड एरिया. पेशेंट बर्डन बहुत ज़्यादा है, एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्कुल मैसर नहीं है. तो हम ये चाहते हैं कि अपनी हेल्थ वर्कफोर्स को ट्रेन करें और वो इन सर्विसेज को एट डोर स्टेप ऑफ द कम्युनिटी इम्प्लीमेंट कर सकें. और मैं ब्रीफली आपसे एकेडमिक कैलेंडर शेयर करूंगा एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स. नेक्स्ट. सो अभी तक 130 कैंडिडेट्स ने हमें एक्चुअली फीस जमा करवा दी हुई है इस मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के लिए. And we can see already that there is a huge demand and understanding of the importance of the subject. आप ये देख सकते हैं कि we have 66% enrollment from Punjab, 21% enrollment from Sindh, 11% from KPK, 1% from Balochistan, and there is also a foreign candidate who is registered for this program. Next. और ये cities का divide है. इसमें बहुत सारे रंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ऑल मेजर सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, स्वात, फैसलाबाद, झंग, पेशावर, रहीम यार खान, DI खान, गुजरात, एबटाबाद, DG खान, हैदराबाद. सो वी हैव पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस ऑफ ऑल ऑफ दीज. इन दो स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के दो मकासद थे. एक तो ये कि आपको ये बता सकें कि हाउ इज़ द स्प्रेड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड टू
we are aware that we will be arranging adequate training and supervision facilities for the participants in these diverse settings. So I've seen some questions related to it. So rest assured that we are aware of the spread of participants and we have mechanisms in place to make sure that you get supported training and supervision. Next. So 6 months classroom teaching होगी online, जैसे कि इस online portal के अंदर मौजूद है, और हमने इस जो ट्रेनिंग है इसको फोकस किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेनिफिट पैकेज फॉर मेंटल हेल्थ बनाया है। वो कौन सी प्रायोरिटी एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस हैं जो हमें ये पता है कि हम प्राइमरी केयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एविडेंस है कि अगर प्राइमरी केयर में इम्प्लीमेंट की जाए तो उनका बहुत फायदा होता है और जीपीज के वर्कलोड वर्क बर्डन के साथ वो कंपेटेबल है। आई हैव सीन अ क्वेश्चन कि शायद किसी की क्वेरी थी कि क्या वो जीपी इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो these interventions have been picked up based upon a lot of hard work and background work with all experts in the field, including the GPs, और even जो CBT based हमारी intervention and their brief 5 session therapies, और they are very feasible। हमने उनको implement करके रावलपिंडी में, लाहौर में और दूसरे मुल्कों के अंदर भी लो रिसोर्स सेटिंग्स में evaluate किया और publish किया to demonstrate कि they can be implemented within the primary healthcare settings। हम आपको सिर्फ स्किल नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे, बल्कि आपको स्किल में भी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको हॉन कर सकें और आगे जा सकें। एंड फाइनली एज आई सेड कि आपको WHO एंडोर्स CBT इंटरवेंशंस की सर्टिफिकेशंस में ट्रेन करेंगे हम, ताकि आप लोगों को जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस कहती हैं कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन है वो CBT बेस्ड इंटरवेंशंस है। तो वी हैव दोज इंटरवेंशंस व्हिच आर कल्चरली अडेप्टेड, evaluated in Pakistani settings, and will help you implement those for the benefit of the patients. Next. So, as I said, it is not a vertical program, but it's integrated within the main program. Next. जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि जब आप रिसर्च प्रैक्टिकम कर रहे होंगे तो आपको 90 पेशेंट स्क्रीन करने हैं जिनको आपने लॉग बुक में एंटर करना है अपने। उनमें से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 45 पेशेंट्स को UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेस्ड जो मेंटल हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करेंगे, और यू विल contribute in the improvement, a demonstrable improvement in mental health symptoms of at least 30 patients, और ये आपकी लॉग बुक का हिस्सा होगा। और हम आपके लिए स्पेसिफिक सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। सो ये वो CBT बेस्ड इंटरवेंशन है। अब आप सारे डॉक्टर्स हैं तो आपको पता है कि जामा और लांसेट दुनिया के बेहतरीन मेडिकल जर्नल्स हैं, और ये जो हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपके कह रहे हैं ये हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करके हमने खुद, आप इनकी ऑथरशिप्स जाके अगर गूगल करके देखेंगे तो आई एम वन ऑफ द लीड ऑथर्स ऑफ दिस पेपर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आर आल्सो इन द ऑथरशिप लिस्ट, एंड दीज आर पब्लिश्ड इन जामा एंड लांसेट, और ये हमने उर्दू के अंदर अब मौजूद हैं, ये WHO की वेबसाइट पे मौजूद हैं, और ये सारे काम हमने यहाँ पे किए थे। एंड वी वांट टू नाउ कन्वे द बेनिफिट टू द पेशेंट पॉपुलेशन एंड ट्रेन द हेल्थ वर्कफोर्स टू इम्प्लीमेंट इन कम्युनिटी सेटिंग्स। नेक्स्ट। इसी तरह वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि वी हैव फैकल्टी विच इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन रिसर्च, डॉक्टर ज़िले हुमा, डॉक्टर सिहाम सिकंदर, डॉक्टर फरीद मिनहास, और मैंने जैसे अपना आपको रोल बताया। तो वी विल डू दीज हाइब्रिड वर्कशॉप्स ऑन रिसर्च मेथड्स विद यू, जो कि आपको एविडेंस सिंथेसिस में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर और फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग्स में हेल्प करेगी, ताकि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर रिसर्च कर सकें जो कि रेलिवेंट हो टू द नीड्स ऑफ योर पेशेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट। So you will receive supervised clinical training in priority mental health conditions according to the Ministry of Health का Universal Health Coverage Benefit Package for Mental Health। आपको certifications मिलेंगी CBT based interventions में, आपको research training मिलेगी ताकि आप अपनी community needs को assess कर सकें और tailored program बना सकें। और हम इंशाल्लाह नए से जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है और मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च है। सो ऑफ दोज जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड होंगे, अगर कोई मजीद फैमिली मेडिसिन में जाना चाहेगा तो वो फैमिली मेडिसिन का मास्टर्स ऑप्ट कर सकेगा, और आप में से जो लोग फिर पब्लिक हेल्थ या रिसर्च के एरिया को एक्सप्लोर करना चाहेंगे एज अ GP विद स्पेशल इंटरेस्ट, so these are the future avenues that we are working on. Next.
सो 40,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप है वो लोग उन लोगों के लिए जो कि इस मेंटल हेल्थ के सर्टिफिकेट कोर्स में भी एनरोल होते हैं। आपको इसके लिए प्रैक्टिसिंग जीपी होना ज़रूरी है और यू शुड साइन अप फॉर द रिसर्च प्रैक्टिकम, ताकि आप सिर्फ नॉलेज बिल्ड ना करें बल्कि हम प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्डिंग में भी आपके साथ काम कर सकें। नेक्स्ट नेक्स्ट सो दिस इज द एकेडमिक कैलेंडर। ये इंशाल्लाह आपको ओरिएंटेशन पैकेज कंप्लीट मिलेगा और इसमें आपको नजर आएगा कि किस मंथ में हम क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज आपके साथ कर रहे होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज़ जहां से हम आपके साथ शुरू करना चाहेंगे वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने मेंटल हेल्थ के इस प्रोग्राम में और रिसर्च में अपने आप को एनरोल किया है, सो विल ऑर्गेनाइज सम सेशंस विद यू टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रोफेशनल एंड वर्क सर्कमस्टांसेस, और आपकी जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल नीड्स हैं उनको समझ सकें, ताकि वी मेक दीज प्रोग्राम्स बेनिफिशियल फॉर यू रादर देन अ बर्डन फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इन द नेक्स्ट मंथ और सो, कि हम आपको रीच आउट करेंगे, आपकी सर्कमस्टांसेस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि हाउ दिस प्रोग्राम बेस्ट suits your circumstances and how we can work with you to facilitate your role. Next. ये एक brief सा teaching plan है. So needs assessment, online courses, clinical skills in mental health, research methods workshop, and then research practicum. Next. I think I'll revert अभी question answer को later part of the presentation के लिए. And I would like to invite Dr. Seham for his quick note to the participants, who is the faculty of this course as well. Dr. Seham, over to you. Thank you, Dr. Usman. Nothing to add. Welcome on board. We look forward to interacting with you and help you get oriented with this mental health certificate course. Look forward to your queries and interacting with all of you. Once again, welcome on board. Back to you, Dr. Usman and Dr. Huda. Dr. Huda, over to you. Thank you so much, Dr. Usman Hamdani and Dr. Seham Sikandar. Indeed, आपने इतना डिटेल ओवरव्यू दिया है मेंटल हेल्थ का, रिसर्च प्रैक्टिकम का, एंड इट इज़ रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो रजिस्टर भी हो चुके हैं और उनके लिए भी कि जिन्होंने हमें अभी एक ओरिएंटेशन सेशन के लिए ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह दे विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस शिफा फैमिली। सो डियर कैंडिडेट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं डॉक्टर आमिर, मोहम्मद आमिर और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान, जो कि वाइस चांसलर हैं शिफा के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो आई वुड लाइक टू गिव द फ्लोर टू प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर, हु इज द डीन फैकल्टी of Health Sciences, Shifa Ta'mir Millat University. Dr. Amir, am I loud and clear and you can hear me properly? Dr. Amir? Dr. Huda, we can hear you, but we can't hear Dr. Amir. I think he has joined now. He has joined now. अब आप सुन सकते हैं? जी सर, लाउड एंड क्लियर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच लिमा और डॉक्टर उस्मान हमदानी। हमने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, द रीजन बीइंग कि हमारी ओरिएंटेशन थी आज शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की, तो वी जस्ट वर फिनिशिंग देयर और हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी एज अ डीन, आई वेलकम यू ऑल to this orientation of first ever diploma program in family medicine। और इसमें बहुत सी चीज़ें encouraging हैं और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो 100+ हमारे फर्स्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा encouraging नोट है हम सब के लिए। और जैसा कि अभी जो ओरिएंटेशन और जो इंट्रोडक्शन आपको अभी तक दिया गया होगा, आई थिंक के उसमें आपको बता दिया गया होगा कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम जो है ये हाउ कैरेक्टरिस्टिक इट इज एंड हाउ डिफरेंट इट इज। और ये जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इट इज नॉट जस्ट लाइक अनदर डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम। और जिस तरह डॉक्टर उस्मान हमदानी के मैं सुन रहा था, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली, लेकिन it should also be taken as very encouraging or entertaining as well।
हमें आम तौर पे हमारे प्रोफेशंस में फैमिली मेडिसिन या जनरल प्रैक्टिशनर को एक ही समझा जाता है और जनरली एक स्पेशलाइज्ड सर्विस नहीं समझी जाती है, एक जनरल सर्विस है, इसीलिए जनरल फिजिशियन कहा जाता है। तो शायद उनके दिल में भी ये होता है और या देखने वालों के भी या सुनने वालों के या जो एंगेज होते हैं उनके साथ कि उनका लेवल ऑफ ट्रेनिंग और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस शायद उस लेवल का नहीं है जो बाकी स्पेशलिटीज में उसमें है। लेकिन अब वक्त जिस तरह गुजरा है तो उससे अब ये एक इतना अहम एक शोबा है हमारी सारी हेल्थ केयर का। बेसिकली इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक्स है, और अगर ये बेसिक्स हमारी बेहतर होगी तो हमारे बाकी सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उसकी बेसिक भी बेहतर होगी। तो ये कमिटमेंट और ये एनकरेजमेंट आप सबके माइंड में होनी चाहिए कि एज ए फैमिली फिजिशियन वी आर गोइंग टू मेक द बिगेस्ट डिफरेंस। और उसके साथ जो एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट थी जो कि पहले नहीं थी, but it was just considered the 5 years of जो MBBS program से आपने सीख लिया, that's enough. So we all have realized, and you must have realized, even if you are a young graduate or you've already been practicing in this field maybe more than a decade or so, and if you have chosen to take up this course, तो यही इस चीज को शो कर रही है कि इसमें कुछ lack of academics था जिसको हमने अब कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके कि इसको भी फुलफिल किया जाए। और जब इसके अंदर एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमारी फैमिली मेडिसिन की प्रैक्टिस जो है वो मच मोर एथिकल, रेलेवेंट और कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी के लार्जर एम्बिट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर में ये जो उस एपिटॉप तक जाते हुए ये एक जबरदस्त तरीके का एक इंटीग्रेटेड और एक सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल एंगेज तरीके से इस डिप्लोमा कोर्स में, बेशक इसमें ज्यादातर ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, थोड़ा ऑन साइट होगा, लेकिन ये सारा मिलके और इसके अंदर जो मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम डॉक्टर उस्मान हमदानी ने बताया, ये इस वक्त की स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में आई थिंक अगर हमारे जीपी जो है और हमारे फैमिली फिजिशियन जो है ये इससे भी इक्विप हो जाएं। और इतना थोड़ा नंबर उन्होंने बताया कि 90 to 100 मतलब पेशेंट, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिजी फैमिली प्रैक्टिस का एक दिन का शायद ये नंबर है और ये आपको ओवर द स्पैन ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि अच्छा इतने भी अगर नंबर को आप स्क्रीन करते हैं और उसमें से भी एक बहुत थोड़े नंबर को आपने इंटरवेंशन के साथ और इम्पैक्ट देखना, आपने तो सिर्फ 30 इसमें देखना। तो मेरा ख्याल है, मैं तो हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में मेंटल हेल्थ की जो नीड्स हैं लोगों की बहुत बढ़ गई हैं और वो अगर हम बेसिक प्राइमरी लेवल और फैमिली फिजिशियन लेवल पर उनको एड्रेस करना शुरू करें तो शायद वो बड़े बड़े मसलों से और बहुत बड़े बड़े एक ऑर्गेनिक डिजीज में कन्वर्ट होने से पहले यू माइट बी एबल टू इंटरवीन एंड हेल्प दोस पेशेंट। तो ये बहुत बड़ा आपकी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी अपनी लर्निंग से, आपकी अपनी कम्युनिटी में जहां पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैं अपने बिहाफ पे और यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आपको अपनी तरफ से फुल सपोर्ट का इरादा करता हूँ और ये इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान के जिस भी कोने में जिस भी जगह पे ये हो रहा है, हमारी फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रोफेसर साइमा की सरबराही में और डॉक्टर नासिर शाह जो हैं वो हमारे साथ मतलब हमारे इक्वल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पे यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये बहुत बड़ी एक नेशनल सर्विस का काम करने जा रहे हैं। और उसके साथ हमारा जो स्कूल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मतलब ये इदारे शिफा तामीरुल यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट और जो एफिलिएटेड इदारे हैं, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा लार्जर एम्बिट बन रहा है इसमें प्राइवेट सेक्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कि सब मिलके अपने हिस्से का जो काम है वो बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन ज्वाइनिंग द कोर्स and I welcome you on this course, and we have a lot of expectations from all of us. So thank you very much, all the organizers and all the participants. Welcome on board, the participants. Thank you. Thank you so much, Dr. Mohammad Amir, और आपके valuable और motivating, supporting comments जो हैं वो participants के लिए बहुत मानी रखते हैं. So thank you so much. Next, I would like to request Vice Chancellor Shifa Tameer Millat University, Professor Dr. Mohammad Iqbal Khan साहब के वो हमें अपने मजीद comments से और हमारे participants को on board लें और उनको welcome करें. Thank you. Over to you, sir. Thank you very much. Bismillah. First of all, I welcome every one of you in Shifa Tameer Millat University.
The part of Shifa Tamiri Millet University is stakeholder of Shifa Tamiri Millet University. And this is a very great day today that we start a very important diploma program. Inshallah, it will lead to the master program in future and maybe to the PhD level in future as well. तो इसमें बुनियादी तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि जो जीपी की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो तो बहुत ही big in Pakistan. The concept of GP practice is really very broad and vague, and most of the time GPs, they don't take the responsibilities of some of the things which I think they should take. So my understanding about the family medicine is that they don't take part only the curative part and the preventive part, but the social part of the medicine as well. Socialization of the medicine is a very, very important concept. और इसीलिए हमने इसको बड़ा comprehensively design किया है. और I was reading an article day before yesterday that by the end of 2030, nearly 26% of population of Pakistan will be diabetic. And at this moment, 24% of Pakistani population is having one or the other mental health issues. I don't think the specialist, mental specialists or the diabetic specialists around the world, around Pakistan are sufficient. I was told that there were only 1,500 altogether psychiatrists of any category or psychologists of clinical psychologist of any category available in Pakistan for the population of over 20 million who required mental health supports. So to including this diploma into the mental health program is to include this the certificate course of the mental health in the diploma program is a very crucial and unique as well. जिस तरह भी डॉक्टर आमिर साहब बता रहे थे कि ये इसलिए भी यूनिक है कि ये सिर्फ एक पाकिस्तान किसी एक हिस्से में नहीं है, हमला पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर द कंट्री और में हो रहा है. और न सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट होगा बल्कि इंशाल्लाह हम इसको मजीद एक्सपेंड भी करेंगे. इट विल गो बियॉन्ड दी बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह. नाउ लेकिन इसकी क्वालिटी को हमने बहुत ही क्रिस्पली डिजाइन किया है ताकि ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हमारे जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ऑफ द डे रियली फील दे आर कॉम्पिटेंट इनफ इन मैनेजिंग द डिफिकल्ट इश्यूज इन द सोसाइटी. Primary healthcare is neglected in Pakistan, and majority of the time we have seen that many areas of Pakistan, particularly the far-flung areas and the remote areas, they don't have even a doctors available for miles. They don't get available doctor for even the emergency need of our population. तो इस सारे इसका एक जो है ना एस्पेक्ट ये भी होना चाहिए कि जो इसके आर्किटेक्ट हैं कि हाउ टू मेक इट यूनिवर्सली अवेलेबल टू एवरीवन. Our school of universal health coverage is meant for that the healthcare is being provided to every single individual who need it, irrespective whether he can pay or he can't pay. So we need to devise a mechanism that those people who can't pay for their healthcare, those people should also be taken care of. And therefore, we signed an MOU with the Ministry of Health and WHO and other organizations so that we could be able to spread our idea and educate the people around the distance of the time that everyone who needs it, the healthcare should be provided. Now, the level of provision is never defined in Pakistan, and our tertiary healthcare centers are overloaded, are overcrowded with the people who need primary healthcare. And they can be dealt with a little effort or a less effort in the periphery or in the other area rather than the medical institutions which are meant for the tertiary care. लेकिन इस सारे को जब तक हम comprehensively इसको connect नहीं करेंगे कि primary और secondary और tertiary का आपस में जब तक connect develop नहीं करेंगे फिर हमको नहीं है. इसलिए architect of this
program has very finely tuned up this program so that it could be, the participant could be able to connect it nicely in the best interest of our patient, the best interest of our population and community, so that we will be able to connect it from primary to tertiary care. एक और जो चीज है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर का काफी एम्फसाइज किया जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इवन द प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे जो सेंटर्स हैं दे डोंट प्रोवाइड द एम्पल opportunity to our patients and in the general public for the preventive aspects of the diseases. उसमें communicable भी है, non-communicable disease भी है. So this is the time that our these family physicians should be educated and they should be able to develop the expertise to prevent the diseases at a very primary level and secondary and then tertiary level. The primary prevention is very, very important. There is secondary prevention and tertiary as well. तो ये जो चीज इसको कनेक्ट करने के लिए दिस स्कूल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज द यूनिक सेटअप. मैं तो इस पे देख रहा था इंटरनेट पे, मुझे कोई और स्कूल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं मिला, शायद होगा कहीं दुनिया में, अगर मुझे कोई नहीं मिला तो दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आवर पार्टिसिपेंट एज वेल. तीसरी जो चीज ये है कि यू हैव एन एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एज वेल. तो आपको एक्सेस है, आप हमारी लाइब्रेरी, सो ई लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं. हमारी दूसरी जो फिजिकल लाइब्रेरीज हैं, रीडिंग रूम्स हैं, उसको एक्सेस करते हैं. लर्निंग रिसोर्स सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं. बड़ा वाइब्रेंट हमारा डिपार्टमेंट है आईटी का, और शिफा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग इज अ वेरी upcoming department, upcoming school. Inshallah, they have a very comprehensive program for the healthcare workers to introduce different modalities of the computing at a very primary level to tertiary level, so that it would be able to magnify their work in over the period of time. और एक और चीज ये है कि we have our presence in Karachi, we have our presence in Islamabad, and we have our presence in Islamabad as well. But we are trying to find out few more places, inshallah, in Pakistan, so that we can actually facilitate you at our level, not only in the at your place, but you could be having access in these big centers. In Islamabad में alhamdulillah हमारा काफी strong एक hospital develop हो रहा है. कराची में आपके पास मुर्शिद हॉस्पिटल अवेलेबल होगा, लेकिन उसके साथ इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी एक दो अस्पतालों के साथ हम MOU करें और उनको अवेलेबल करें कि आपकी जो ट्रेनिंग है या आपकी जो ट्रेनिंग की नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें. So by this I welcome you all, and this is the first step. Inshallah we'll go to the second and third step. Maybe some of you will become the teacher as well. Shifa College of Medicine is the unique institution where the family medicine is the part of curriculum, not only the curriculum, but it's an examining subject in the final year. So in final year, we have three subjects, which the exact subjects are medicine, surgery, general medicine, general surgery, and the family medicine. And the family medicine include everything, and you all will become familiar over the period of time that how this become the part of the undergraduate education as well. जब तक हम इसको undergraduate पे नहीं लेके आएंगे तो इसकी अहमियत का एहसास जो है वो उस वक्त तक एस्टेब्लिश नहीं होगा. तो हम इसको undergraduate पे तो बहुत अर्सा पहले ले आए थे, लेकिन ये एक एग्जामिनिंग सब्जेक्ट नहीं था. Now it become a part of the other developed institution around the world that it is an examination subject as well in the exact final year examination. अच्छा, तीसरी जो चीज है वो रिसर्च है, और I appreciate the spirit of Dr. Zafar Mirza
he has actually talked to various organizations, and he's trying to build relationship with the big organization where 30 to 40 hospitals, inshallah, will be available for training for you, and more than 60 medical centers will be also available for the training purpose for the family medicine as well. इसी तरह डॉक्टर एक लिस्ट है वो डॉक्टर शाह ने काफी डॉक्टर शाह साहब ने काफी कंप्रेहेंसिव लिस्ट बनाई हुई है और उनके एक बड़ी तादाद में लोगों को इंक्लूड भी किया हुआ है और by this inshallah gradually you will become a senior medical teacher as well, like Dr. Nasir Shah and Dr. Saima. Dr. Saima ने physically यहाँ पे डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया है, उसको रन कर रही है. इसी तरह ये यूनिक एग्जांपल है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए, दूसरे मेडिकल स्कूल के लिए, अगर वो अपने यहाँ इस फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट बनाना चाहे. तो in nutshell, you people have a great strength. In the developed countries, the family physicians are the major stakeholder of the healthcare sector. वो फंड होल्डर भी वही होते हैं, यानी टर्शियरी केयर हेल्थ सेंटर्स को भी फंड वही देते हैं. They hold the fund as well. They are very strong. In our setup, the situation is slightly different, but still we hold a very strong position. If we are really trained and we really know our job and the specification of our job, what we need to do and what are the requirements to improve the period of time. फिर ये भी है कि एक ये समझ जाता है कि एक दफा MBBS कर लिया बस अल्लाह फैसला, उसके बाद जो है वो लोग आगे बढ़ते नहीं है. तो मेरी मैं बहुत जो है ना एंथुसियास्टिक इंशाल्लाह कि ये जो हमने डिप्लोमा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है और आगे इंशाल्लाह इसमें मास्टर प्रोग्राम डॉक्टर उस्मान हमदानी अभी कह रहे थे कि अब इसमें इंशाल्लाह हम मास्टर और PhD प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करेंगे और ये आपको ये स्टडी जो है वो उसमें बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी. एंड यू विल सी के ग्रोथ जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो आपके पेशेंट के ऊपर किस तरह पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करती है और अल्टीमेटली जो फायदा तो पेशेंट को होना चाहिए हमारी सारी एफर्ट का. तो मेरा ख्याल है कि ये जो एफर्ट भी है इससे मरीजों को काफी फायदा होगा और अल्टीमेटली हमारे माशरे के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी की हर वक्त सिचुएशन क्रिएट होती रहती है उससे भी हम छुटकारा पा सकेंगे. तो इस सारी साथ इंशाल्लाह आई श्योर every participant that you will be having much better understanding of medicine, your subject, as well as you will be having a better expertise, and inshallah you will be having a better patient outcome in future by learning through this process of education. Thank you very much. Or I appreciate the spirits of everyone who has organized this, and I strongly believe and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that inshallah this will be a very, very important and very pivotal tool to inshallah to develop medicine in Pakistan, healthcare in Pakistan, and ultimately the welfare of our patients in Pakistan. Shukriya. Thank you so much, VC Sahab, Dr. Muhammad Iqbal Khan Sahab, for taking out time and sharing your valuable thoughts with us on this diploma and also sharing its importance and future impact. Thank you both honorable guests for your welcoming comments. So ladies and gentlemen, we will now proceed forward, and I would like to invite Professor Dr. Nasir Shah to take a start from the presentation on course content and relative materials in the course Diploma in Family Medicine. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. और सबसे पहले तो मैं शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर मोहम्मद आमिर, डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रोफेसर जफर मिर्जा, प्रोफेसर साइमा इकबाल, डॉक्टर उस्मान हमदानी और हमारी एनर्जेटिक डॉक्टर हुदा, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हम वहाँ उस माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं जिसके लिए हम पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए थे. और मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम यहाँ तक पहुँचे. और तमाम पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने हमारी ऑफर या हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, हम पे ट्रस्ट किया और वो आए। बट एंड ऑफ द डे जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम की रौनक या जान होती है वो पार्टिसिपेंट होते हैं। सो टुडे इज योर शो, द बिगिनिंग ऑफ योर 1 year एजुकेशनल शो, और इंशाल्लाह हमारे मकासद पूरे होंगे और इंशाल्लाह ये जो इल्म का सफ़र है इसका फैज़ पेशेंट्स को और सोसाइटी को मिलेगा। और इंशाल्लाह वो जो पेशेंट जो ठीक होंगे मेंटली एंड फिजिकली, और वो दुआएं, वो बरक़ात और वो जो फैज़ होगा इंशाल्लाह वो हिसाब आपका भी होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमें भी इसका अजर देगा कि हमने इसमें अपना हिस्सा मिलाया। तो ये बहुत खुशी का दिन हम सब के लिए, और माशाल्लाह सारे लोग, वाइस चांसलर साहब, डीन ने स्पेशली टाइम निकाला, इनकी एक वर्कशॉप थी, और डॉक्टर उस्मान हमदानी बेचारे यूके में बैठे हुए हैं, वो सहरी के टाइम पे उठे हुए हैं या शायद आधी रात को उठे हुए हैं। डॉक्टर उस्मान, आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आपको हमने जल्दी जगा दिया। जी, 4 बजे मुझे उठना था इसके लिए। जी, और डॉक्टर सिहाब सिकंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद यही है कि हम अपनी ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे। नाउ माय टर्न इज टू टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट, और मेरा काम इस लिहाज से भी थोड़ा आसान है कि बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे कोर्सेज से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और उनको कल रात क्लासरूम शेयर भी कर दी गई है। जस्ट वन रिक्वेस्ट फॉर दोज पार्टिसिपेंट्स जो डिप्लोमा ज्वाइन कर चुके हैं मेंटल हेल्थ के साथ या विदाउट मेंटल हेल्थ। Yesterday, an invitation link was shared with all of you. Okay? Kindly just check your Gmails. अगर Yahoo, Hotmail है वो नहीं, check your Gmails. वहां पे आपको इनविटेशन आया होगा, accept the invitation and join. In case इनविटेशन आपको नहीं आई because of any reason, या ईमेल में गलती थी या कुछ हो, just write your name, complete name, and correct Gmail in the chat box or question answer, so that right after the session or during the session we can send you the invitation once again. ठीक, तो कहने का मकसद ये है, आप कोर्स में एंटर हो चुके हैं, जो उनको नहीं मिला इन्विटेशन वो अभी भी टाइम है, हमें अपना एग्जैक्ट ईमेल भेजिए और हम आपको उसमें ज्वाइन कर देते हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। डॉक्टर साइमा इकबाल ने भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये ब्लेंडेड है, ब्लेंडेड, और उन्होंने जिक्र किया सेल्फ बेस्ड। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ये ब्लेंड क्या होता है। क्या ये ब्लेंडर जूसर की तरह कोई मिक्सचर बनाने वाली चीज है? नहीं। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये होता है कि यू चूज मल्टीपल टीचिंग मेथडोलॉजीज टू इंश्योर लर्निंग। याद रखिए, पुराने जमाने में टीचिंग पे फोकस था कि क्या पढ़ाने का अंदाज है, अब लर्निंग पे है कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं। सो एवरी मेथड दैट reinforces learning is welcome. सो मॉडर्न एजुकेशन और खास तौर पे ऑन जॉब एजुकेशन वो ब्लेंडेड होती है। सो हमने क्या इस ब्लेंड में क्या किया हुआ है, there are recorded lectures for you. You can watch these lectures many times. ठीक है, they are very simple language में है, ताकि अगर किसी को अंग्रेजी में दुश्वारी हो तो भी वो समझ सके। नंबर 2, उस ब्लेंड में there is a repository or a bank of different sorts of videos. वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट वाली वीडियोस। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एक बैंक है। इस ब्लेंड में एवरी मंथ वी विल हैव अ फेस टू फेस लाइव सेशन, जैसे अभी हो रहा है हमारा सेशन। इस तरह का सेशन होगा, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, बातचीत होगी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसी ब्लेंड में आप देखेंगे कि आपको वहां पे एमसीक्यूज भी पड़े होंगे आपके पास। दीज एमसीक्यूज आर ओपन बुक एमसीक्यूज। आप वहां पढ़ाई करेंगे और जैसे आपको समझ में आया और आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दिए। ब्लेंड में ये भी है, जिनका 5 साल से कम तजर्बा है उनके लिए अटैचमेंट्स हैं, और आपने डॉक्टर साइमा की जबान से सुना और
डॉक्टर उस्मान के भी सुना कि हम कोशिश ये करेंगे जहां आप रहते हैं आपके घर के पास, ताकि आपको अपनी जॉब और अपना घर बच्चे ना छोड़ने पड़े। ठीक, अब जिनके बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई, वो परेशान होंगे कि बच्चे कहाँ से आ गए, तो आपको अपना घर नहीं छोड़ना है। सिर्फ मेरी हर बात को आपने यकीन नहीं करना, मेरी हर बात। तीसरा, जो स्किल्स होती हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन डिफरेंट रीजन्स लाइक लाहौर, साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध, इस्लामाबाद, वहां को वर्कशॉप्स भी कराएं। वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट वो होती है, जैसे डॉक्टर साइमा ने जिक्र किया, मिनी CX और कॉट। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। आपको किसी क्लिनिक पे बुलाया जाएगा या आपके क्लिनिक पे कोई टीचर आएगा, आप उस उस्ताद के सामने पेशेंट देखेंगे और उस्ताद आपको ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद आपको फीडबैक देगा। याद रखिए, फीडबैक इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और जिन खुशकिस्मत लोगों को ऑन स्पॉट फीडबैक मिल जाता है, दे गो टू द नेक्स्ट लेवल वेरी इजीली। तो वो फीडबैक मिलता है और उससे आप बेहतर होते हैं। और मजे की चीज बताऊं, ये वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट के नंबर्स नहीं होते, पास फेल नहीं होता। द ओनली इंटेंशन ऑफ वर्क प्लेस असेसमेंट, यानी एक उस्ताद के सामने आप मरीज देखेंगे और आपको फीडबैक देगा, वो इंप्रूवमेंट के लिए होता है, तो पास फेल का चक्कर भी नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो हमारा है प्लानिंग कि किस तरह से पूरा साल इंशाल्लाह हम गुजारेंगे। ठीक, हमारे जो ऑनलाइन सेशंस हैं, जैसे हम जिक्र करेंगे, हम लोग महीने में 2 दफा कोशिश करेंगे फोर्टनाइटली। को एक सेशन में आपके केसेस डिस्कस करेंगे, एक में हम लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव लॉग एंट्रीज, ये वो केसेस होते हैं जो आप रियल लाइफ में देखेंगे और अपनी लॉग बुक में एंटर करते जाएंगे। बस उससे हमें पता चलेगा कि आप पेशेंट देख रहे हैं। केस बेस्ड डिस्कशन वही हम महीने में जो 2 दफा होगा हम कलेक्टिव करेंगे। रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स 14 हैं, जो आपको 2 कल रात को आपको मिल चुके हैं और 2 अगले महीने आपको मिलेंगे। याद रखिए, गूगल क्लासरूम में दोज हु आर अवेयर, वहां पे हम चैट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर चल रहा होता है डे टू डे बेसिस पे, तो वहां भी बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। असाइनमेंट्स भी हम देंगे ताकि आप वो कर लें, वेरी इजी असाइनमेंट्स बट प्रैक्टिकल वंस। और एंड ऑफ मॉड्यूल का MCQs, जब कोई भी CBS और ENT खत्म होगा उसके MCQs आपको करने पड़ेंगे 1 महीने के टाइम में। अटैचमेंट्स भी आपकी कोशिश करेंगे कि अगले महीने से स्टार्ट हो और वो पूरी हो जाए। और वर्क प्लेस असेसमेंट भी साल में कम से कम 3 दफा आपकी हो। ठीक, सो ये सब एक एक्टिविटी ब्लेंड किया हुआ है, और एंड में जाके अगले साल मार्च में फिर आपका इम्तिहान होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड। ये लेक्चर्स की ग्लिम्स है जो कि हमारे डिफरेंट प्रोसेस अटेंड किए हुए हैं, उनको तो ये आम सी चीज नजर आ रही है। दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वीडियो लेक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जूम में एक रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट होता है, हमारा वो नहीं है। जस्ट स्टूडियो बेस्ड रिकॉर्डेड सेशंस विद अ पावरफुल PowerPoint प्रेजेंटेशन और विच क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो ये डिफरेंट कलर के हैं, और जो शॉर्ट होता है वो बोरिंग नहीं होता। नेक्स्ट। द अदर एडवांटेज इज कि ये जो बनाया इस तरह से गया है कि आप मोबाइल, लैपटॉप, फोन हर जगह देख सकें। बहुत से लोग ट्रेवल के दौरान भी लेक्चर सुन रहे होते हैं, फारिग वक्त में क्लिनिक में पेशेंट नहीं है, क्या आप वॉच लेक्चर्स या कोई करते हैं। ठीक, सो इट्स वेरी इजी। नंबर 2, सेल्फ पेस्ड, आप जब मर्जी लेक्चर देखिए, रात को, दिन को, वीकेंड, सुबह, शाम, सहरी, किसी भी टाइम देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। सो चैट मीन्स, जो चैट का मैंने जिक्र किया, क्लासरूम के अंदर चैट होती है, वहां आप क्वेश्चन लिखते हैं, आपको टीचर जवाब देता है, और इस तरह से डे टू डे आपकी, जैसे मोबाइल में मैसेजेस होते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज, उस तरह से चीजें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। अब आप देखिए, ये MCQs हैं, एंड ऑफ मॉड्यूल MCQs जब आप करते हैं तो आपको उसका फीडबैक भी मिलता है। ठीक, सो जैसे आपने MCQ किया और आपको उसका करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, विच रीइंफोर्सेस योर लर्निंग। तकरीबन कोर्स के अंदर 3000 MCQs हैं,
ठीक, जो आपको ये लर्निंग को रीइंफोर्स करते हैं। नेक्स्ट, एंड देयर इज अ मॉड्यूल इन विच देयर आर फोकस्ड एग्जामिनेशन, जो टेक्निक्स करके दिखाई हैं। ये थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ये एक्चुअली एक हमने 3 दिन ऑनलाइन पढ़ाया था कोविड के दौरान। सो वीडियोस पड़ी हुई थी, उसको मैंने एडिट करके क्लिप्स बनाया, बट दे गिव अ वेरी गुड आइडिया फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट, जो मैंने जिक्र किया, देयर आर वीडियोस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि द वीडियोस लाइक द हार्ट साउंड्स, वहाँ पे हार्ट साउंड्स, मरमर्स, ये सब सुनाई गई हैं, गट साउंड्स हैं, और जितनी भी क्लिनिकल साइंस होती हैं जो किताबों में होती हैं, there's a small video clip of that sign as well. The technique of examination plus clinical science. Next. So दूसरा, there's a multiple videos for different communication skills, talking to depressed patient, angry patient, breaking bad news, non-compliant patients. तो इस तरह की बहुत सी videos हैं. They will teach you communication skill, and you people are lucky. 2023 की बैच lucky है. Currently we are in a project in which we are making videos of consultation. तो 100 हमने scripts बनाई हुई हैं, जिसमें से 30 इस साल इंशाल्लाह रिकॉर्ड होंगी. Then these videos will also help you. Next. Plus real patients bank, जैसे हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, CLD, थायरोटॉक्सिकोसिस, लिगामेंट रप्चर्स, रोमबर्ग साइंस, जो पेशेंट की फाइंडिंग्स होती है वो भी आपको तकरीबन 99% ऑफ ऑल क्लिनिकल फाइंडिंग्स विल बी शोन टू यू थ्रू वीडियोस. नेक्स्ट, प्रोसीजर वीडियोस, दोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स या अपने क्लिनिक्स में प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो तकरीबन तमाम वो प्रोसीजर्स का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर विद डेमोन्स्ट्रेशन विद टीचिंग पॉइंट्स वो आपको मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग बोथ इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड इलेक्टिव प्रोसीजर्स. प्रोसीजर से मुराद ऑफिस प्रोसीजर्स, ये ना हो कि आप लेप्रोटमी करने बैठ जाएं. ये वो प्रोसीजर्स होते हैं which GPs are allowed to perform. Next. Then याद रखिए, we all of us do not have a chance to know about all the tests. In video में आप देख रहे हैं, there's a tilt table test, there's ECT, there's ETT. देखिए, हम में से हर एक को मौका नहीं मिलता कि हम लैब्स में जाएं वो सीखें. ये इनका जानना इसलिए जरूरी है, जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो हमें पता होता है कि पेशेंट को क्या बताना है. सही, तो हमने कोशिश की है कि एक रिपोजिटरी इसके भी बनाए, एंडोस्कोपी कैसे होती है, सिग्मोइडोस्कोपी कैसे होती है, बायोप्सी कैसे होती है, एंजियोग्राफी कैसे होती है, सो दैट यू नो एंड देन यू कैन एजुकेट योर पेशेंट्स. नेक्स्ट, बाकी एक बुक जो फैमिली प्रैक्टिस रिव्यू स्वानसन, वो इसलिए कि वो किताब हर साल रिव्यू होती है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड बुक, MCQ बेस्ड. वो हम देंगे जस्ट फॉर रेफरेंस. और कोर्स के अंदर नाइस गाइडलाइंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस गाइडलाइंस फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और कम्युनिकेबल डिजीज पे जो WHO की अपडेटेड गाइडलाइंस होती हैं, लाइक STI, मलेरिया, TB, वो हम शेयर करते हैं. नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंस इस कोर्स की क्या है? ठीक, वो इम्पोर्टेंस, उसकी जो अहमियत थी कि देयर इज अ मेंटल हेल्थ कोर्स, देयर इज अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. दिस कोर्स हेल्प्स यू in preparing for MCPS. This course helps you in preparing for MRCGP. This course helps you for the Masters in Family Medicine, maybe in future PhD in Family Medicine. ये बहुत से फायदे तो आपने देख लिए. प्लस आपने ये भी देखा कि WHO भी इसमें शामिल है, फेडरल मिनिस्ट्री भी शामिल है, ठीक, और इंटरनेशनली ब्रिटिश एशियन फाउंडेशन भी शामिल है हमारे साथ. वो फायदे अपनी जगह. दूसरी चीजें देखिए, isn't it convenient? क्या आप घर बैठे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वही मामूल है आपके, और आपको एजुकेशन आ रही, दरवाजे पे दस्तक दे रही है. ठीक, लेक्चर्स आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप्स पे सुन रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
और आप एक कोर्स के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल रहा है। ये इसकी अहमियत कम है कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं। यू कैन टॉक टू पीपल दैट यू हैव बीन ट्रेन्ड एंड यू होल्ड अ प्रोफेशनल डिप्लोमा। और अगर MCPS/MRCGP करें तो और बेनिफिट। ये बेनिफिट कम है कि वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट इन मेंटल हेल्थ, वहां से हो सकता है कि आपको अगले जो हमारे मेंटल हेल्थ के कोर्सेज है उसमें और को डिस्काउंट मिले। ये बेनिफिट कम है कि आपको इतनी नॉलेज मिल रही है, स्किल्स मिल रही है, वो भी घर बैठे, कि आपके क्लिनिक अच्छी हो जाए, आपकी स्किल्स अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और आपकी फैमिली वाले आप पे नाज करें, आपके पड़ोसी आप पे रश करें, और आपके मरीज एंड जो वो दुआएं दें, आपके कोलीग्स आपको देख के मोटिवेट हो एंड लुक एट यू एज अ रोल मॉडल। पेशेंट केयर जो इम्प्रूव होगी, वो दुआएं और वो बरकत, वो तो अपनी जगह है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स देखें, एक ऐसा MBBS डॉक्टर जिसने कुछ नहीं किया और ऐसा MBBS डॉक्टर जिसने डिप्लोमा किया, मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट उसके पास है, उसकी स्किल्स हाई है, तो उसकी जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होते हैं। नेक्स्ट चलिए, that was the last slide. Just a few words about my afternoon sessions, जो कि afternoon session में हमारे साथ होंगे। In the afternoon session इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे फैमिली मेडिसिन सब्जेक्ट पे, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल्स प्ले कर सकते हैं एज ए GP हम लोग, और जो हमारा वकार है, जो और हमारा मकाम है, जो या खोया हुआ मकाम है, उसके बारे में बात होगी। तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो पार्टिसिपेंट्स नहीं भी हैं, जो आज विजिटर्स हैं हमारे इस मॉड्यूल में, वो भी आए, वो भी वो सेशन अटेंड करें। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर यू। ठीक, और आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो सेशन जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Nasir, for your valuable suggestions, comments, detail on diploma in family medicine. I hope कि हमारे जो participants हैं उनको काफी हद तक clarity जो है वो मिल गई होगी डॉक्टर नासिर की बात सुनने से, डॉक्टर उस्मान की बात सुनने से, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर जफर मिर्जा, सबके कमेंट्स और उनकी प्रेजेंटेशन देखने से आई एम श्योर कि एवरीवन इज क्लियर नाउ। लेकिन कुछ रूम होता है क्वेश्चन आंसर्स का, सो हम अभी प्रोसीड करते हैं विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। सो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड थी जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज थी, उसको हमने यहाँ पर एड्रेस किया हुआ था। तो आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर उस्मान हमदानी कि हम क्वेश्चन वाइज इनको एड्रेस कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जिनका ऑन स्पॉट डॉक्टर साइमा ने और डॉक्टर उस्मान ने उनके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स और चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो इवन देन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं एड्रेस हुए हुए, वो हम लोग अभी इस स्लाइड के बाद उनको उनके साथ वॉक थ्रू करेंगे। सेकेंडली, जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है इस डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन में, उनसे गुजारिश है कि वो अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो है वो चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर दें और आवर टीम विल गेट बैक टू देम ऑन दिस। सो डॉक्टर उस्मान, कैन यू हियर मी? आर यू विद मी सर? बिल्कुल, आई कैन हियर यू डॉक्टर हुदा। जी, हमारा पहला क्वेश्चन था कि हु विल सुपरवाइज द रिसर्च प्रैक्टिकम? थैंक यू डॉक्टर हुदा। आई थिंक दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। स्पेशली मैंने चैट बॉक्स में देखा कि कुछ डॉक्टर अब्दुल हफीज ने भी ये क्वेश्चन किया हुआ था, डॉक्टर सानिया ने भी इससे मुतालिक एक सवाल किया हुआ था कि रिसर्च के हवाले से कि वो किस तरह से क्लिनिक की सेटिंग्स में हो रही होगी। तो देयर आर टू पार्ट्स टू इट। वन इज द रिसर्च मेथड्स की वर्कशॉप, जिसका मकसद है कि आपका नॉलेज बेस बिल्ड करना, एंड दे विल बी डन एज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम। वर्चुअल होंगी, हाइब्रिड होंगी, इन पर्सन भी हो सकती हैं, सो पीपल कैन ऑल्सो कम इन एंड अटेंड इन पर्सन, बट दे विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। सो पीपल हु कैन नॉट अटेंड इट इन पर्सन, दे विल बी एबल टू अटेंड देम ऑनलाइन। सेकेंड थिंग इज कि हम आपको बाकायदा, बिकॉज डॉक्टर सिहाम का, मेरा, डॉक्टर ज़िले हुमा का, डॉक्टर जफर, डॉक्टर हुदा, हम सारों का बैकग्राउंड कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ रिसर्च का है। जो मैंने आपसे दो सिर्फ पेपर्स शेयर किए थे जो जामा और लांसेट के हैं, so that should tell you about the sort of scientific rigor that we place importance on। और हम आपके साथ मिलके काम करेंगे टू सी के व्हाट इज योर सर्कमस्टांस, आप कहाँ पे बेस्ड हैं, आपका पेशेंट कैचमेंट कैसा है, आप किस तरीके से रिसर्च को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक डॉक्टर साहब का कि ही वाज आस्किंग अबाउट
कि वो इंटेंसिव केयर में काम कर रहे हैं और वो फिर किस तरह मेंटल हेल्थ के उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी डाइवर्स, हर सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट, पॉपुलेशन के लिए मेंटल हेल्थ नीड्स फ़र्क होती हैं। तो वी विल वर्क विद यू टू सी कि आपके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांस से रिलेटेड मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटी कंडीशंस क्या हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेनिफिट पैकेज में किस तरह से कवर होती हैं और उसको आपके किस सर्कमस्टांस में किस तरह से ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। So, and you will get to know more about it once we start to roll out the program and work with you more and understand your circumstances more. But rest assured, inshallah, जैसे डॉक्टर नासिर ने कहा, डॉक्टर साइमन ने कहा, we will work with you to see कि किस तरह से इस नॉलेज बेस को स्किल बिल्डिंग और पेशेंट बेनिफिट में कन्वर्ट किया जाए। Thank you so much, Dr. Usman. Well addressed this question. और मुझे लगता नहीं है कि अब इस पे कोई किसी किस्म की कोई भी एम्बिग्विटी होगी हमारे कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल कैंडिडेट मेंटेन देयर लॉग बुक्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स। और अभी हमारे चैट में एक डॉक्टर सिद्रा हैं सॉरी, उन्होंने भी सेम क्वेरी पूछी है कि सर आई हैव रिक्वेस्टेड द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट आई विल वर्क देयर ऑन मंडेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। Can we have our logbook in this week, or we can start working? What is the procedure to maintain the logbooks? Over to you, sir. Thank you. I think Dr. Nasir is best placed to answer this question because it's integrated in the diploma in family medicine. So, Dr. Nasir, would you like to respond to it? जी सर जी, मैं कुछ जवाबात लिख रहा था. So sorry, can you repeat the question if you don't mind? Sir, the question is related to the logbooks का maintain करना, related to mental health, but because I said कि क्योंकि ये integrated है family medicine के अंदर, तो there will be cases related to mental health, but I am deferring it to you कि आप guide करें candidates को कि किस तरह से logbooks maintain होंगी। जी अच्छा, लॉग बुक्स जो है ना, मैं तो जो जनरल हमारी लॉग बुक होगी उसमें इट्स अ वेरी सिंपल गूगल फॉर्म, और उसकी शुरू की एंट्रीज में नाम और अपना वो नंबर वगैरह डालने से वो आपकी स्पेसिफिक एंट्री बन जाती है और आप एंटर करते जाते हैं। और उसमें वेरी सिंपल रखा हुआ है कि पेशेंट आया क्यों, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या थी, आपने किया क्या और उसका आउटकम क्या निकला। तो ये 4 एंगल से उसको देखते हैं। बेसिकली हम उसमें देखते हैं कि लेसन क्या सीखा आपने उसमें से, और उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ये 4-5 छोटे छोटे नुक्ते उसमें आते हैं। उसमें बहुत डिटेल नहीं है कि पता नहीं क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं, तो हमने तो उसमें से सबक सीखना है, लेसन लेना है, तो इस हिसाब से डिजाइन की हुई है और वो अवेलेबल होगा तमाम लोगों के लिए, उसमें एंटर करते हैं। बाय द सेम टोकन जो मेंटल हेल्थ का है, चूंकि वो स्पेसिफिक है, 90 केसेस हैं, हमने आउटकम देखना है, उसमें रेफर करना है, एग्जैक्टली उसी तरह का बनाया जा सकता है, और अगर ना भी हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ये मैं डॉक्टर उस्मान आपके साथ बैठ के ये जो सेम फॉर्म है वो मेंटल हेल्थ का भी बना लेते हैं, ताकि बिल्कुल वो स्ट्रीम अलग हो एंड यू बिकम द ओनर ऑफ दैट फॉर्म। आप उसमें से लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इट्स वेरी सिंपल गूगल फॉर्म विद योर नेम, ईमेल एंड 5 or 6 पॉइंट्स, बस वेरी ब्रीफ, तो आपसे हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। Thank you, Dr. Nasir. I think I will just add a little bit to it. Mental health के केस में, और क्योंकि next question भी इसी हवाले से है कि रिसर्च प्रैक्टिकम के हवाले से कि how many patients will be examined as part of research practicum, number of patients to be examined per month, per week. तो we are expecting कि 90 केस लॉग होंगे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से होंगे, जो रिसर्च प्रैक्टिकम के अंदर आप इंटीग्रेट करेंगे। हम आपको ट्रेन करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड टूल्स में जो आप यूज़ कर सकेंगे फॉर असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जैसे डॉक्टर नासिर ने इंडिकेट किया कि एक सिंपल सा फॉर्म है, लेकिन देयर विल बी सम एडिशनल टूल्स कि आपको हेल्प करेंगे टू बी मोर ऑब्जेक्टिव व्हेन यू आर असेसिंग पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। Over to Dr. Huda. Thank you so much, Dr. Usman. ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बेसिकली सेम ही क्वेश्चंस हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था कि जो हमारा रिसर्च प्रैक्टिकम है उसमें जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं वो हमें साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से ही मिलेंगे या हम उनको ओपीडी या किसी भी वार्ड से उनका डाटा हम लोग ले सकते हैं। जी डॉक्टर उस्मान।
आई थिंक इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि वी वांट टू जस्ट नॉट बिल्ड योर नॉलेज बेस बट आल्सो ट्रेन यू इन सम प्रैक्टिकल स्किल्स विच इज़ वेरी मच नीडेड ऑन ग्राउंड। जैसे डॉक्टर जफर ने, वीसी साहब ने, डीन ने एम्फसाइज किया कि वी रियली वांट टू क्रिएट अ चेंज इन हाउ द फैमिली मेडिसिन डिसिप्लिन इज सीन एंड हाउ वी प्रोवाइड सर्विसेज ऑन द ग्राउंड। तो हम आपके साथ काम करेंगे टू सी कि व्हाट इज़ द बेस्ट मॉडल जिसमें आप, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इट इज़ अबाउट कि आप किस तरह से पेशेंट को अप्रोच करते हैं जब आप उसको असेस करते हैं, और हम किस तरह ऑब्जेक्टिवली ये देखते हैं कि हमने मेंटल हेल्थ के आउटकम्स को चेंज किया गया है। बहुत सारा स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएटेड इसलिए है कि लोग ये समझते हैं कि साइकाइट्रिस्ट सिर्फ बातें करते हैं एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन चेंज फॉर द पेशेंट्स। हालांकि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा वेट रखती है, और कम्युनिटी में जो जनरल फिजिशियंस हैं दे आर बेस्ट प्लेस टू डू दिस। सो वी विल वर्क विद यू टू सी कि आपकी जो भी प्रैक्टिस की सेटिंग्स हैं उसमें वेयर कैन यू बी देयर। और अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि आई हैव सीन क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं कि अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो विल वर्क विद यू टू सी कि आपके नज़दीकी कोई फैसिलिटीज़ हैं जहां आप अटैच हो सकते हैं, जहां पे जाके आप ये पेशेंट्स देख सकते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर साइमा ने बताया, डॉक्टर नासिर ने बताया, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो वी विल वर्क विद यू टू सी कि आपके सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, आपको फैसिलिटेट करते हुए, हम किस तरह आपकी नॉलेज बेस के साथ साथ स्किल बिल्डिंग भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो to develop an evidence-based practice by integrating research into it. Thank you so much, Dr. इसी तरह आपका एक क्वेश्चन जो 5 है कि हाउ विल द डेटा ऑफ पार्टिसिपेंट्स बी शेयर्ड विद सुपरवाइजर्स और इंस्ट्रक्टर्स। तो एक जैसे बताया कि आपका ये केस लॉग्स होंगे, और दूसरा जैसे मैंने आपसे बताया कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको आप इसी तरह गूगल फॉर्म में फिल इन करेंगे और वो आपके असाइंड सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर के पास चले जाएंगे, एंड दैट इज हाउ विल कीप अ लॉग ऑफ इट। Thank you so much, Dr. Usman. Proceeding towards the next question. Research workshops will be organized online or in person? जैसे मैंने अपनी पिछली डिस्कशन में भी कहा कि ये हाइब्रिड होंगी, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो इन पर्सन अटेंड करना चाहते हैं। तो वी विल सी कि जैसे इस्लामाबाद में अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन कम एंड अटेंड देम इन पर्सन, बट वी विल मेक देम अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक्चर्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन और इन पर्सन? ये बिल्कुल सेल्फ पेस्ड है, ऑनलाइन है, और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होंगी ताकि आप अपने सर्कमस्टांसेस को सूट कर सकें, और हम इसको सेल्फ पेस्ड रखेंगे ताकि आपके जो नॉर्मल रूटीन है डे टू डे उसको हम ज़्यादा डिसरप्ट ना करें, और अपनी लाइफ सर्कमस्टांसेस को सूट करते हुए अपनी करियर बिल्डिंग कर सकें और पेशेंट बेनिफिट का काम जारी रख सकें। Okay, there is one question in the chat box from Dr. Mehar Khalid. She's saying that this hands-on training in CBT interventions are delivered during DFM or only to those who will enroll in mental health certificate course? As a principal, we are very open to anyone who wants to learn these skills, और ये पार्ट है मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग का, और जो मेंटल हेल्थ का हमारा डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि इंटीग्रेटेड है फैमिली मेडिसिन में, बट ऑन अ वेरी सेलेक्टिव बेसिस वी कैन आल्सो डिस्कस कि अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, बट दैट इज़ नॉट हाउ इज इट रियली envisioned. It is envisioned as part of the mental health certificate course, but we can see if someone is interested in, they do not want to do the rest of mental health, and if they just want to do these certifications, so how we work around it. But currently this is part of the mental health certificate program. Thank you so much, Dr. Usman. There is one query from Dr. Aruj Adil. She's saying that I don't have clinic so far, but I'm MRC GP international student. I've done my MRC GP, and can I join this mental health course, or do I need to take DFM also with it? जो हमारा मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था थियोरेटिकली कि हम इसको करना ही ऐसे चाहते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कंटेक्चुअलाइज करना चाहते हैं कि किस तरह हम एक जनरल प्रैक्टिस और फैमिली प्रैक्टिस के अंदर मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करें,
तो वी स्ट्रांगली एनकरेज कि आप इसे फैमिली मेडिसिन के प्रोग्राम के साथ करें ताकि यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन फैमिली प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. So this is how we have conceptualized this program. I suggest that you get in touch with Dr. Nasir or our team to better understand, to help us better understand your circumstance and also to explain you how we can support you the best. Thank you so much, Dr. Usman. I've seen that in chat box, most of the questions have already been addressed by Dr. Usman Hamdani. So I hope there is no query or any confusion regarding the integrated certificate course on mental health and research for universal health coverage. So I would like to take few questions from diploma family medicine side also. And I've seen Dr. Saima has been very kind and she's also been answering the questions right on the same time as well. So Dr. Nasir, I've seen many participants here have addressed regarding the experience also कि जिनके 5 साल से कम experience है उनको कितनी exemption मिल सकती है clinical rotations में. तो और वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं और उनका एक्सपीरियंस भी कम है, they are not more than 5 years experience, तो उसमें वो उनको कैसे हेल्प आउट ये डिप्लोमा कर सकता है? हाँ, ये बहुत टेक्निकल और सेंसिटिव क्वेश्चन है कि जो एग्जाम्पशन फ्रॉम ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन 5 year एक्सपीरियंस, और जो 5 year एक्सपीरियंस है ये हमारा इजाद करता हुआ नहीं है. दिस इज इन MCPS फैमिली मेडिसिन एज वेल, दिस इज इन MRC GP. तो ये होता है ऐसा है कि अगर वो 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग है तो उसकी बराबरी 5 साल के एक्सपीरियंस से करते हैं. तो एज अप्रूव्ड करिकुलम और हमारे जो स्टैट्यूट्स हैं उसके मुताबिक 5 years से जिसका कम है उसको रोटेशंस करनी पड़ती हैं. ये हमारे पास वो है कि हम उसको फिर कहीं ना कहीं से करवा लेते हैं. एंड रोटेशंस है क्या? देखिए, अब रोटेशंस का जो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये जहन में आ गया है या ब्रेन वॉशिंग है, ये जो भी समझ लें, या नॉर्म है कि सुबह को सरकारी अस्पताल में जो आप काम करते हैं उसको रोटेशन कहते हैं. ये इसकी वजह से भी काफी मुश्किलात होती हैं. उस सुबह को इतना रश होता है, इतनी चीजें होती हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. रोटेशन मीन्स यू वर्क विद अ टीचर एंड देयर आर पेशेंट्स, और पेशेंट्स देखते हैं, बड़े टीचर से डिस्कस करते हैं और वो आपको फीडबैक देता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो. और हम जो फॉलो कर रहे हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का जो नॉर्म है कि रोटेशंस किसके साथ की जा सकती है. CPSP में जब हम रोटेशंस पे भेजते हैं तो वहाँ ऑप्शन नंबर 1 होता है कि जो अगला बंदा है टीचर वो एक सुपरवाइजर हो. अगर सुपरवाइजर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 है वो FCPS या इसके इक्विवेलेंट टीचर मौजूद हो. सो बाय दैट टोकन वी हैव क्रिएटेड different options या opportunities of rotations हैं. like afternoon भी हो सकती है, private and public both हो सकती है. बस उस्ताद एक फेलो होना चाहिए, वहां पे कम से कम मरीज 10 रोज के हों जिसको आप देख सकें. ये हमारी एक रोटेशन होती है. बाय दैट टोकन वी कैन अरेंज रोटेशंस फॉर यू. सही. तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपको रोटेशन से एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि वो हमारे रेगुलेशंस में है, वो आपको नहीं मिल सकती. हाँ, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इन रोटेशंस. वो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बगैर जहमत के आपके करीब ही वो रोटेशंस आपकी हो जाएं. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Nasir. There's another question from Dr. Sadia Khalid. She's asking, she wanted to know about the details of rotations for doctors who are not residing in Islamabad and in Karachi. So where and when will be the rotation start? So I think Dr. Saima, I would like you to address this query, because I think कि शायद candidates के ज़हन में ये है कि the rotations will only be conducted in Islamabad or in Karachi. So I would like you to address this query, please. Okay, actually मुझसे ज़्यादा बेहतर तो नासिर ही बताएंगे, because he has been very proactive in arranging rotations. So let us know where you reside, और उसके मुताबिक फिर हम आपको facilitator या clinic identify कर देंगे, and they will facilitate. जो मैंने इस्लामाबाद कराची एग्जाम की बात की थी, not for training.
So that is for the final exam next year. जी, over to you, Nasir. जी जी बिल्कुल नहीं, बहुत अहम क्वेश्चन है और कि हमारी रोटेशंस कहाँ होगी। देखिए मैंने जो आपको बताया कि हम पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर कराची में अभी इब्न सीना हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, अभी हमारा वो स्टार्ट होने वाला है। अभी दारुसेहत हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल और सर ने मुर्शिद हॉस्पिटल का भी बताया। प्लस हमारी जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, जो फैकल्टी की क्लिनिक्स हैं वो भी मौजूद है वहाँ पे। मुल्तान में लकीली हमारे पास जो पाकिस्तान का सबसे जदीद हॉस्पिटल है, बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उन्होंने एग्री कर लिया है और निश्तर ने एग्री कर लिया है। So these are the big centers that we have. भावलपुर में कायद आज़म भी है और एक और शाहिदा इस्लाम, वहाँ भी हमारा वो चल रहा है। अयूब मेडिकल, इसी तरह से लाहौर के अंदर भी है। So we are working on a big network, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट कहाँ से है। सही। So जैसे डॉक्टर साहिमा ने कहा है, हम आपका एड्रेस देख रहे हैं और आपसे पर्सनल बात करके आपकी जो करीब तरीन जो सेंटर होगा उसको अफिलिएट करेंगे और वहां आपकी रोटेशंस करवाएंगे। ठीक, तो हम ये देखें, इसलिए अभी से कह देना कि कौन कौन सी साइट किसके लिए है वो मुश्किल हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। इट्स ऑल पर्सनलाइज्ड रोटेशंस। ठीक है, तो इसलिए आप हमसे राब्ता रखिए, हम आपकी रोटेशंस आपको बना के प्लान बना के दे देंगे। इसी के साथ डॉक्टर नासिर, एक और इंटरलिंक क्वेश्चन है। डॉक्टर शाहिदा ने हमसे पूछा है कि एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रोटेशंस इन दुबई एट पाकिस्तान मेडिकल सेंटर? जी, दुबई में इस वक्त करंटली तो हमारा कोई ऐसा अफिलिएटेड हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि वहाँ के रूल्स वगैरह होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर शाहिदा हमें थोड़ी सी गाइड व लिंकेजेस बना के दे दें, या हमें अपनी कोशिश करके कि वहाँ कोई हॉस्पिटल एग्री करे फॉर रोटेशंस, व्हाई नॉट। लेकिन करंट सिचुएशन में वहाँ हमारा ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। और फैमिली मेडिसिन का जो खास तौर पे जो हमारी फैकल्टी वहाँ काम करती है, विजिटिंग फैकल्टी, वो खुद एम्प्लॉयड है वहाँ पे, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको फिर परमिशन लेनी पड़ती है कि टू हैव ट्रेनीज। तो इस वजह से अभी तक हमने उस पर काम नहीं किया हुआ। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं दुबई से जो लोग हैं वो 5 ईयर एक्सपीरियंस प्लस वाले हों। ठीक है, तो लेकिन हम तो कोशिश जारी रखेंगे। अगर हमें कोई लिंक मिलता है, अपॉर्चुनिटी निकलती है और उसमें डॉक्टर शाहिदा ही हमें गाइड करेंगे करीब कौन सा हॉस्पिटल है, अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली विल कॉन्टैक्ट, विल कन्विंस देम और वहाँ उनकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। Thank you, Dr. Nasir. There is one more question from Dr. Rabia Fayaz. I've already done MCPS Family Medicine 3 years ago. Now I want to do MRCGP International exam in November 2023. Will this course modules enough for it? Yes, they are more than enough for it. Dr. Rabia, ये जो कोर्स है, it is one of the broadest and most comprehensive courses of family medicine. और ये एक ही कोर्स करने वाले MCPS भी देते हैं, MRCGP भी देते हैं, डिप्लोमा भी देंगे इंशाल्लाह। और इस कोर्स के अंदर FCPS फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो इट कवर्स ऑल दी फैमिली मेडिसिन एग्जाम्स। ठीक, और बिला खौफ व खतर, बगैर किसी टेंशन और परेशानी के आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और MCPS MRCGP भी दीजिए, डिप्लोमा भी दीजिए, दोनों के लिए मोर देन इनफ। Thank you, Dr. Nasir. There is another question from Dr. Sadia Khalid. She's saying that those doctors working in telehealth, telemedicine setups, will they be included in their clinical experience? Will this practice be included in their clinical experience if they are working in telehealth or telemedicine setups? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टेलीमेडिसिन क्या है। हमने जो टेलीमेडिसिन खुद हम भी करते रहे कोविड के ज़माने में, ये डिपेंड करता है आपकी जो टेलीमेडिसिन है वो किस लेवल की है। इज इट अ सिंपल फोन कॉल जिसपे मोबाइल पे बात हो रही है? इज इट अ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड शेयर करते हैं और उसमें आप फेस टू फेस कर रहे होते हैं? और इज इट हायर लेवल विद गैजेट्स जो कि थ्रोट एग्जामिन भी करवाते हैं, पल्स भी बताते हैं, ब्लड प्रेशर भी बताते हैं, जैसे अपने कॉमसैट्स वगैरह का है या जो दूसरे इदारों का है। ठीक, तमाम वो क्लिनिकल एनकाउंटर्स
Clinical encounter means you are talking to the patient, taking history. You are examining, आप पेशेंट को देख रहे होते हैं, show me your hand, show me your tongue, इसका ब्लड प्रेशर बताइए, इसके चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखिए. तो तमाम ऐसे एनकाउंटर जिसमें ये सारा कुछ होता है, यूर राइटिंग, दे डेफिनेटली फॉल अंडर क्लिनिकल एक्सपीरियंस. अब सिर्फ मोबाइल फोन वाले या ऐसी जो प्रिमिटिव किस्म की टेलीमेडिसिन है जिसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनको तसल्ली दे रहे होते हैं, वो मेरा खदशा है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते एज अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस. सो डॉक्टर सादिया हमें बताएं वो किस सेटअप में काम करती रही हैं. अगर वो इस तरह के सेटअप में है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज थी, तो डेफिनेटली वो आएंगी अंडर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड शी कैन एंजॉय द प्रिविलेजेस. थैंक यू डॉक्टर नासिर. डॉक्टर उमामा वुड लाइक टू नो कि जो भी फैमिली फिजिशियंस हैं जिनका मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, उनको डू दे नीड टू सबमिट एनीथिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रोटेशंस? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जिसका 5 year एक्सपीरियंस है उनको कुछ नहीं एग्जेम्प्ट करना, सर्टिफिकेट कोई कागज नहीं देना है. उन्होंने रोटेशन एग्जेम्प्ट के लिए कोई दरखास्त नहीं देनी. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ऑफ एक्सपीरियंस बाय एनी एमबीबीएस डॉक्टर जो अपने लेटरहेड पे लिख के देता है कि यस द डॉक्टर नोज यू एंड यू आर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर मोर देन 5 years. ये एक लेटर होता है जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स भी मांगता है, MRCGP इंटरनेशनल भी मांगता है, और हम भी इसी तरह से डिमांड करेंगे. सिर्फ टेस्टिमोनी फ्रॉम एनी डॉक्टर कि आप प्रैक्टिस में हैं, दैट्स इट. हमें और कुछ नहीं चाहिए होता. एंड इट्स अ नॉर्म फॉर ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड क्वालिफिकेशंस, नॉट ओनली अस, MCPS and MRCGP as well. Thank you, Dr. Nasir. There are some questions related to academic also, तो वो सेशन हम लोग post lunch उस पे discussion करेंगे. So I would like to take this last question that is from Dr. Habiba Humayun. She's asking that if we are unable to clear in the first attempt, तो उनको कितनी attempts बाद में दी जा सकती हैं for this diploma to clear? अच्छा, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं उनसे नॉर्म्स शेयर कर देता हूँ. हम जो MCPS और MRCGP जो हमारे दो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, और हमारे भी जो रिटन होता है, रिटन के लिए कोई लिमिट नहीं होती, आप ले सकते हैं. बट वंस यू पास द रिटन, देन यू हैव टू क्लियर द प्रैक्टिकल एग्जाम इन 3 attempts. ठीक, तो ये एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है तमाम एग्जाम्स में. रिटन की कोई लिमिट नहीं, और रिटन पास करने के बाद प्रैक्टिकल की 3 लिमिट्स होती हैं. अगर उन 3 लिमिट्स में 3 अटेम्प्ट्स में भी पास ना हो, देन यू हैव टू टेक द रिटन वंस अगेन. ठीक, अच्छा, ये डॉक्टर उमैमा का है ना, एक थोड़ा सा इसी नुक्ते को बिल्ड करते हुए, डॉक्टर उमैमा, जो पुराना मॉडल था जो पढ़ाई लिखाई का, जो हमारे FSC, हमारा मैट्रिक, हमारा ये प्रॉफ का सिस्टम, उसमें ये अंधेर नगरी होती थी कि पूरा साल उन्होंने मॉनिटर नहीं किया, आखिर में आके बच्चा फेल हो रहा है तो सर पकड़ के बैठ रहे हैं. ये वो पुराने जमाने की कहानी है जहाँ पे एग्जिट एग्जाम ही सब कुछ होता था. हम नए जमाने में हैं, नए जमाने का एक ब्लेंडेड कोर्स कर रहे हैं. ठीक, तो नए जमाने में पहले दिन से लेकर एग्जाम तक 1 साल वो जो हम एकेडमिक मेजबानी करेंगे, उसमें इंशाल्लाह इतना काबिल आप हो जाएंगे कि आप में से कोई भी फेल नहीं होगा. क्योंकि अगर आप फेल होते हैं, इसका मतलब है डॉक्टर नासिर शाह फेल है, डॉक्टर साइमा फेल है, क्योंकि हमने पूरा साल आंखें बंद करके आपकी पर तवज्जो नहीं दी थी और आप फेल हो गए. ठीक, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे. तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम इंडिविजुअल केयर आपके लिए एक्सेसिबल होंगे, अवेलेबल होंगे, गाइड करेंगे, टीच करेंगे, रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, और जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आपको इस काबिल कर देगा कि आपको फेल होने की सोचने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी. ठीक है, तो हम ये नए जदीद जमाने वाला कोर्स बना रहे हैं. Thank you so much, Dr. Nasir, Dr. Saima, Dr. Usman Hamdani. Ladies and gentlemen, we'll now take a 1 hour break. ये हमारी lunch break भी है और prayer break भी है.
और I would like to say thank you to all the panelists जिन्होंने अपनी presentations, अपना knowledge हमारे साथ share किया और हम कैसे आगे डिप्लोमा और universal health coverage, mental health के component को आगे लेके इसमें चलेंगे. So we'll reconnect again at 2 p.m. inshallah, and then Dr. Nasir and Dr. Saima will take lead in further explaining the question answers that are left behind. Sorry, Dr. Huda, before we break, can I suggest something? जी sir, sure please. मेरा ख्याल है काफी सारे कैंडिडेट्स के सवाल थे अबाउट द स्पेसिफिक रोटेशन के सेंटर्स पे. तो डॉक्टर नासिर एक अगर मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस उस पर दे दें, क्योंकि लोग स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि लाहौर में कौन से हॉस्पिटल है, डीजी खान में कौन से हॉस्पिटल हैं, मुख्तलिफ जगहों में कौन से हैं. तो डॉक्टर नासिर बिफोर वी ब्रेक अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सा रिस्पांस दे दें फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. जी नहीं, बिल्कुल. ये पार्टिसिपेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो पहले से पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों को आइडेंटिफाई करना, अफिलिएट करना, एक बहुत ही बड़ा टास्क था जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल लेवल का ये काम था. तो फिर हमने वर्किंग जो प्रोसीजर बनाया वो यही था कि पूरे पाकिस्तान को अपनी आगोश में लेने की बजाय जहां हमारा पार्टिसिपेंट आएगा, जैसे डीजी खान में अगर कोई है तो हम वो डीजी खान में करेंगे, अगर मुल्तान से कोई नहीं आता हम वहां नहीं करेंगे. तो बाय दिस टोकन हम जो आइडेंटिफाइड जगह की हुई हैं, गुफ्तगू चल रही है, तो प्रायोरिटी पे हम वो जगह अपने साथ एफिलिएट करेंगे या वहाँ रोटेशंस का बंदोबस्त करेंगे जो पार्टिसिपेंट के एरिया ऑफ रेजिडेंस के पास हो. ठीक, तो अभी तक जो लिस्ट है वो हमारे पास मौजूद है. हम वो लिस्ट शेयर कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी है. अगर CIFM.com.pk CIFM सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मेडिसिन .com.pk पे आप वहां जाइएगा तो ट्रेनिंग साइट्स की डिटेल भी आपको मिल जाएंगी. एंड दीज आर इन एडिशन टू द ट्रेनिंग साइट्स ऑफ शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी. और ये नेटवर्क है पूरा, वहां से भी आप ये तमाम एक्सेस कर सकते हैं. और याद रखिए अब इसमें ऐड होने हैं, ऐड होते हैं, बिकॉज हमारी टीम जाती है, वह इंस्पेक्ट करती है, तमाम लोगों से मिलती है, उसी हिसाब से हम उनका एफिलिएशन देते हैं. अगर कोई रोटेशन सब वहां पे स्टैंडर्ड नहीं मीट होता तो हम उसके लिए अप्रूवल नहीं देते. ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही अस्पताल में सारे करें. जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां हम करेंगे. शायद हम 2 अस्पतालों में या 3 में आपकी रोटेशंस कंप्लीट कर सकें. ठीक, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने वो करना है कि आपके लिए मौजू सहूलत के साथ और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें. और आपसे पूछ के कि आप सुबह सूट करता है या शाम सूट करता है या वीकेंड सूट करता है या वीकडे सूट करते हैं. ठीक, और जो टीचर है उसकी क्या टाइमिंग्स है, हम सारे के साथ सिंक्रोनाइज करके इंडिविजुअल रोटेशन प्लान आप सबसे शेयर करेंगे, आपका अपना होगा और उसी को फिर फॉलो करेंगे. ठीक, जिनको लिस्ट देखनी है वो हमारी CIFM.com.pk पे जाके वो लिस्ट भी देख सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर नासिर. और जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि उनको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, ये ऑलरेडी उनके ईमेल पे भी शेयर हो जाएंगे और गूगल क्लासरूम में भी उनका लिंक शेयर हो जाएगा. जी चलें, we'll now go for a break and we'll connect again after 1 hour. Okay, thank you. Thank you so much. अल्लाह हाफिज. No.
Assalamu alaikum all. I can see now 67 participants have joined. I think हमें 5-7 मिनट wait करना चाहिए, so we'll continue with the session. I think most of us has joined us now. So I welcome you all once again on this post-lunch session. And Dr. Saima, I would now request you to take the floor from here and tell our participants regarding the scope of family medicine. Thank you, Dr. Huda. Could you please make me co-host? Because Yeah, you are the co-host now. Okay, thank you. All right, thank you very much, all of you. ये presentation जो है अब जो मैं आपको देने जा रही हूँ, it's been made just this morning because I was busy over the weekend और Dr. Nasir ने मुझसे कहा कि मैं आके जो है एक presentation दूँ आप लोगों को about the scope of family medicine and कि इसमें what more can you do, and the reason I focused a lot on my personal journey in this presentation is because ताकि आप लोग मैं जो मेरी journey है, I want to share it with you so that you know maybe you can learn something from it and it will give you a better idea about the scope of family medicine for you in the future. So if I can just, is my slide turning or not? Still same ही slide है, Dr. Saima, the scope of family medicine वाली. Just okay. So a disclaimer before I start, because यहाँ पे ये सुबह मैंने presentation बनाई है and the images in this presentation have been taken from internet. I do not claim that these images are my own, but the purpose of using these images is only for the effect of presentation. So I will start off with sharing my personal journey of, you know, and then I'll also talk a bit about my professional journey. And I hope from there we can talk about how family medicine will influence you, and I hope to share how it has influenced me, and then maybe we can learn from each other's experiences. So my journey starts in medical school. I was a final year student and I remember quite distinctly कि ये surgery की rotation थी and I was rotating with a plastic surgeon और उनके पास एक patient आई थी probably for liposuction or something because she was very obese
and she was not a good candidate for surgery. So one of the things that the plastic surgeons did was he counseled her that, I'm sorry, I don't think you're a good candidate. You're high risk for surgery. So this is not, so maybe it's not the best option for you. So, so the patient understood. And then she said, अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी ना, मेरे पेट में ये मसला चल रहा है. And उसी वक्त उस प्लास्टिक सर्जन ने उनकी बात रोक ली पेशेंट की और कहा, नहीं बीबी देखें, अभी आप मुझे ये चीजें ना बताएं, ये आज से मैंने कोई 10-15 साल पहले की थी, तो बेहतर है आपके पेट के जो मसले हैं ना, वो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं. और बिकॉज आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे ये कहा गया कि डॉक्टर साहब आप इनका जो है ना वो गैस्ट्रो का रेफरल बना दें, ये गैस्ट्रो में दिखा दें. And that incident is so much imprinted in my mind since then कि मैंने ये सोचा कि कभी मैं अपने मरीज को ये इस तरह नहीं बताऊंगी कि जी आप मेरे पास आपके मसले का हल नहीं है, आप फलाने को जाके दिखाएं. So I think that event was recorded well in my mind कि नहीं इस तरह, this type of, I don't want to be such a doctor who will refer my patients elsewhere and not help them at all. So uske baad I did my house job, and I had the fortune of doing my house job in a place jahan pe family medicine ki rotation thi. तो house job में हमें 3 महीने के लिए community health center में we were allowed to do a supervised general practice. तो उन 3 महीनों में, once I was in my house job, I was seeing patients under supervision initially, and बाद में फिर I became independent. और उसमें अच्छी बात ये थी कि I was on my own, and if I needed help, there were always more experienced family physicians around me to help me and guide me. और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि I saw patients of all kinds. So मैंने बूढ़े भी देखे, मैंने जवान भी देखे, मैंने छोटे बच्चे भी देखे, मैंने औरतें भी देखी, मैंने मर्द भी देखे, और a variety of cases I saw. So I saw backache, I saw cardiac problems, I saw skin conditions, I saw respiratory problems. So one of the beauties of family medicine is that you are not confined by organ systems. So हर चीज का आपको अच्छा, more or less, you have a good knowledge of how to treat common diseases. And subsequently, I realized that there was a lot of patient satisfaction. So मैं जितने मरीज देखती थी, more or less, most of them were satisfied with the outcome. And it was very rewarding, professionally very rewarding when we got people, when your patients were satisfied with you. So that was something that really motivated me to consider a career in family medicine. और सबसे बड़ा जो मुझे उस टाइम पे खदशा था, because remember, जब हम final year medicals, अगर आप सब लोग अपने वक्त याद करें, final year में we are always impressed by the specialists, by the consultants, कि जी ये neurologist है, ये फलाना nephrologist है, वो cardiologist है. But family physician या family medicine का उस वक्त ये ज़मान मतलब idea था that we are a jack of all trades. So we are a jack of all and master of none. आपको बस हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन master आप किसी चीज में नहीं है. So and उस टाइम पे एक young medical student को शायद ये बात अच्छी नहीं लगती. We do not want to be called a jack of all. But one of my very senior and respected professors says that a jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. And अगर आप इस perspective से देखें कि एक gastroenterologist जो है, he will only be looking at probably peptic ulcer disease and colonoscopies throughout his life. He will not know how to manage other common problems like skin conditions or tension headaches or gynecological problems. So this is so I thought that being a jack of all is not so bad. And another way to look at it is that you're master of 90% diseases. So that is what a family physician would be. He would be a trained family physician, will be able to deal with 90% of problems, and only 10% will require referral.
और उसमें भी जब आप रेफर करते हैं ना, so then those patients will always come back to you if you have good consultation skills and communication skills. उसके बाद भी वो आपको देखेंगे, patients आप ही के पास आना जाएंगे. So जिस तरह वो कहते हैं ना, from the womb to the tomb or from cradle to grave, all these patients are yours and these are your patients for life. So my professional journey starts from here. And, you know, I became a doctor in training, and I joined a training program for family medicine, which was a 3-year training program. And I rotated through all specialties. I rotated through family medicine clinics, and I even did a rural rotation. So that was part of the training process. और इसी दौरान जब आप शादी के I got married. And then, of course, there was pressure to, you know, यहाँ पे within Pakistan, there is pressure to produce your first child. So I had delayed that by about 2-3 years. Or final year of residency में, you know, I had my first child. My son was born. And this is way back in 2002. अच्छा, तो अब ये तो हो गया आपका अब तक in training period. And from here on now, I little bit about my own professional journey. So I did my FCPS training completed, and then I did my FCPS examination. अब उसके बाद जो है ना सबसे बड़ा issue आता है how to search for a job और अब क्या करें. So one of the opportunities that I got was in Shifa College of Medicine. वहीं से मैंने start लिया. This was way back in 2005. And interestingly, उस ज़माने में family medicine का किसी को पता भी नहीं था. The closest that I could get was a post in community medicine. तो मुझसे ये कहा गया कि आप जी community medicine department join कर लें, और तो मैंने join कर लिया because my father said कि it's more important to be part of the system. And एक दफा system में अपने पैर जमा लो, and then you can make a change. And I remember telling my HOD at that time कि जी मैं तो family physician हूँ, मुझे आप community medicine में डाल रहे हैं. I do not want to lose that identity. He said, you don't have to lose that identity. आप अपना जितना family medicine का portion है वो करते रहिए. Clinics, I was allowed to do clinics. But I also had to do some community medicine teaching. And because of that, you know, जब community medicine भी पढ़ाना था, so then I had to look up other things. So I had to improve my skills of teaching epidemiology. I had to improve my skills of teaching research methodology, a lot of public health issues, a lot of environmental issues. So जो public health और community medicine में आता है, मैंने उसको भी पढ़ा साथ में, और undergrad level पे वो भी पढ़ाती गई. And clinical teaching as such उस time नहीं शुरू किया, but I was continuing with my practice within Shifa. So clinical practice भी चल रहा था साथ. And then, you know, in 2008, I got this era of doing bioethics. So then this was an opportunity to do a postgraduate diploma, and I utilized that opportunity. Bioethics किया, फिर उसके बाद उसमें masters भी किया. So again, you know, so my family medicine and my community medicine teaching were going hand in hand, but I got opportunities to do this, and I did this. And उसी time पे शिफा के अंदर medical education का भी बहुत नया आया था, and a lot of emphasis was being given on medical education. So there were a lot of workshops being conducted. So I was a part of those workshops as well. So medical education, say, you know, going down to making MCQs, making OSCE stations, ये साथ चलता जा रहा था. And then 2020 happened, COVID pandemic, we are all aware. And COVID pandemic has taught us a lot of new things. And उनमें से एक चीज तो हमने ये भी सीखी, how to do online sessions, do online teaching, Google Classroom से familiarity. And that is one of the reasons that now we realize that, you know, after COVID,
we need to make things flexible because anything can happen. And I think that is why we have put a lot of emphasis on your self-paced online teaching, even for learning family medicine. So opportunities for family physicians. Here is now what the crux of the presentation is. कि अब आपने फैमिली मेडिसिन कर लिया, चाहे आपने FCPS किया, चाहे आपने डिप्लोमा किया, हम कर क्या सकते हैं आफ्टर गेटिंग व्हाटएवर डिग्रीज दैट वी वांट टू अटेन. अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा तो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस है. You can start your own clinical practice, you can join a group practice. So again, you can join a hospital for being a consultant family physician. So the opportunities are endless. And one of the good things about family medicine, as I said, you are not restricted by gender or age or even disease or the organ system. So big opportunity hai ke then, and some of you may invest in your own practice, some of you may invest in a group practice, or some of you may just join and keep your timings according to what you want to be. So there is a lot of flexibility in opening your own clinical practice. You can go into academic teaching, which I did. So there are opportunities. If you equip yourself, you can become a clinical teacher for medical students. There could be undergraduate, there could be postgraduate. Is time pe I am taking both. Hum undergraduate clerkship chalate hain family medicine ka for students. और जो family medicine की importance बढ़ेगी, इसके departments भी खुलेंगे. And I have seen over the passage of time so many more departments being opened. So you can become a teacher of family medicine. Then you can become what we call gypsy. It's a GP with special interest. Again, I'm just introducing the term here. Some of you have opted to go into mental health and mental health research. So the good thing about family medicine is that आप किसी में super specialize भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. It could be mental health, it could be treating epilepsy, it could be treating non-communicable diseases. So yeah, so there is a lot of scope available to become a GP with special interest. You can also go into the corporate sector, and a lot of companies are now hiring their own family physicians. और उसका मकसद ये है कि then companies will not have to pay for consultants, different consultants for each problem. So one of the movements is that you have your own trained GPs, and companies will then hire you to look at the occupational health of their employees. So that is another good opportunity. Research is always something that Pakistan we are lagging behind. And if you are a family physician, I think you can generate a lot of research if you are equipped with the proper skills. This is something that will be needed in the future, because family physicians, if you are the first person in contact with patients, you are the best people who have patient pools and generate some good data which can be utilized to treat our patients. So this is another opportunity that, and again, through this diploma, we are introducing research skills. So we want people to be more involved in research, and especially family physicians. So I'm just coming towards the end of the presentation, but lessons that I've learned from this whole experience, and I'm taking into account my personal journey, my professional journey, and I'm taking into account lessons that I've learned from my peers. Nasir jo hai mere saath medical school se hain. We have a good network of family physicians, and how they have coped with starting family medicine. So some of the lessons that we have learned along the way is to never stop learning, because life will never stop teaching. I think there is always room to learn. मैंने खुद जो है family medicine करके भी मैंने community medicine की चीजें पढ़ी, मैंने bioethics किया,
medical education ki abhi bhi I'm enrolled in several other short courses, but I think that the bottom line is that kabhi ye mat sochiyega ki mujhe sab aata hai, kyunki wo kabhi nahi hoga. There is always so much more to learn, and there is always room for growth. I think that is important. And इसलिए हम जब डिप्लोमा और मास्टर्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस पे मत रुकिएगा. Don't think that diploma and masters is the end point. इसके beyond भी हमने जाना है और हमें जाना भी चाहिए. Try to move out of your comfort zone, because once you move out of your comfort zone, only then will you be able to grow. So professional growth is very important. One step is enrolling in the diploma and the master's program, abhi ke liye for the diploma program, but aap ek kadam बढ़ाएंगे तो आगे से आप बढ़ते जाएंगे. Be flexible. I think this is another important life lesson that I've learned, being flexible and being adaptable. And that is why when we started this diploma program, we wanted ke logon ko zyada discomfort ya inconvenience na ho, because if we realize कि अगर आप ही के शहर में आप ही के पास हम training provide करें, then do take that opportunity. And subsequently, once you go on your journey, be flexible towards others as well. And this is not only in terms of flexibility of your time, but also in terms of flexibility of your thoughts, of your beliefs. Things can change, and be open to change. I think that is something that we've learned, and we're also applying it in this diploma program. Don't forget to take care of your own health, and not only your physical health, but your mental health as well. I would say, only if you are healthy physically and mentally can you take care of the health of your patients. And so do not underestimate this or undermine it. Try to make time for your own relaxation, try to make time for your own physical activity, and so on. Do give time to your family. That is extremely important. वो family physician ही क्या जिसकी अपनी family life खराब हो. So make sure that you give adequate time to your family. I know a lot of women who, because they have given so much time to their family, they could not give time to themselves and could not give time to their career growth. But that's fine. That there is a time for everything. So now is the best time more than ever. You cannot control a lot of things and be okay with that. बहुत सारी चीजें, and especially after the COVID pandemic, we have learned कि कुछ चीजों हमारे कंट्रोल में नहीं होती. Life is not in your control. हम चाहते हैं कि हम उसी तरह काम करें ताकि टाइमलाइंस मीट करें, लेकिन ये नहीं होता. हर एक का पाथ डिफरेंट होता है. तो और कुछ चीजें आपकी control, and this is something that I tell even the medical students. Life is not a straight line कि बस मैंने ये achieve किया, ये achieve किया, ये achieve किया. Things will happen along the way, and be okay with it. Don't compare yourself with others. Don't look अच्छा मेरा फलाना जो मेरे colleagues थे वो तो इधर पहुंच गए, वो तो consultants बन गए. हर एक का path फर्क है. And after COVID, I think that we should learn that fate has something different decided for you. So don't be afraid of going on a separate path. You do not have to follow what others are doing. So, everyone has their own path to carve. And your scope, कि हम कहाँ हमें job, there were a lot of questions कि हमें फलानी जगह job मिलेगी, हमें फलानी जगह ये मिल जाएगी. देखिए, again, family medicine का जो scope है is worldwide. आप कहीं पे भी जाके family medicine कर सकते हैं, provided you fulfill certain criteria. ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से training लेके वो इंग्लैंड चले गए, आयरलैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, but they have adapted to the system and they have fulfilled certain requirements. There are some people who could not pursue a clinical role. Then they went into business administration or they went elsewhere.
There were some who did a second residency in lifestyle medicine. So according to wherever you land up, so कहना मैं ये चाह रही हूँ कि family medicine you can practice anywhere around the world. The idea is to just take one step further. And life has meaning only if you do what is meaningful to you. And if you find that family medicine is meaningful, if you find, and to me, I think I like the fact that there was variety, and if you have certain skills, so if you have good people skills and you enjoy listening to people, you enjoy socializing, then maybe family medicine is a good career option for you. So I will stop my presentation here. I noticed there were several people who raised their hands, but I couldn't stop and ask their questions. So again, this was quite a philosophical presentation, maybe not one that you expected, but I thought this was important because this will lay the ground of why you want to pursue a career in family medicine and what you hope to achieve. There were questions related to हमें job मिलेगी नहीं मिलेगी. देखिए वो तो मैं भी guarantee नहीं कर सकती कि आपको job मिलेगी कि नहीं. But just keep in mind the important life lessons, and if you see yourself as a family physician in the future, this is a good step. Okay. Thank you, Fiza. I appreciate your appreciation. Any questions, or if I can help anyone, अगर कोई सवाल हैं या Dr. Saima, I think हम लोग question answer session end में Dr. Nasir की presentation के बाद I think we'll accumulate, or we are going to address all those after the session, I prefer. चलें ठीक है. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Dr. Saima. Really, I appreciate, और we all are appreciating जिस तरह आपने present किया daily life के challenges को keeping in view के especially female से related जो working women नहीं होती हैं वो अपने scope को आगे कैसे देखती हैं. तो आपने बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से explain किया है. Once again, thank you so much. Now I would request Dr. Nasir Shah to take the floor और वो हमें fundamentals of family medicine के बारे में कुछ मजीद जो है वो हमारा ही आगाही करें. So I am making co-host to you also, Dr. Nasir. I think you have started sharing already. Dr. Nasir, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही जी. अस्सलाम वालेकुम. वो मेरे से माइक गायब हो गया था, नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आने लगा. Just a minute, let me connect my camera. मैं आपको नजर भी आ जाऊँ. अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स. मुझे जरा एक छोटी सी वो करने दें. मैं अपना स्लाइड का बैकग्राउंड कोई सेलेक्ट करूं ताकि कोई अच्छा लगू ना. ये अच्छा है नहीं, ये भी अच्छा नहीं, कोई भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है. वाई ब्लर मजा नहीं आया. अब ये ठीक है. चलो थोड़े से नखरे ज्यादा है मेरे, प्लीज माइंड मत कीजिएगा. हसीन दोशीजा होती है ना नखरे वाली. सर मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ. चलो जस्ट मुझे ये बता दीजिए इन चैट बॉक्स कि स्लाइड आपको नजर आ रही है. सर मुझे विजिबल है, और रेस्ट ऑफ देम प्लीज. आई थिंक सर सबको ही है, सभी मैसेज. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
Assalamu alaikum once again. माशाल्लाह 139 पार्टिसिपेंट्स हैं आफ्टरनून सेशन में पोस्ट लंच. अब मुझे नहीं पता लंच कितने लोगों ने किया है कि नहीं किया, क्योंकि इन फैमिलीज वाले सो रहे होते हैं, बड़े देर से नाश्ता करते हैं, तो लंच स्किप हो जाता है. वैसे डॉक्टर साइमन ने ना जिस तरह प्रेजेंट किया था, मैं तो बस ये कहते हैं शहर में मुब्तला था, इतना अच्छा था. तो मेरी भी थोड़ी जिंदगी आसान हो गई इस प्रेजेंटेशन के बाद. जब हमारी जितनी प्रेजेंटेशंस आप देखेंगे उसमें हमारी एक दुआ जो रब्बी ज़िदनी इल्मा है, ये हमारा एक सेंट्रल मकाम रखती है. कुरानी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा, ठीक है, और मुझे आगे भी है कि समझ बूझ भी दे दे. ये हमारी जो तमाम एक्टिविटी जिसके लिए हम हैं यहाँ पे और आप लोग हैं, वो इल्म का एक सफ़र है. तो इसलिए ये दुआ को हमेशा याद रखिएगा. जो आज की प्रेजेंटेशंस है वो फंडामेंटल्स में से है, बुनियादी में से है. तो क्लिनिकल काम शायद ना हम ना करें आज, वो तो मॉड्यूल्स में है, लेकिन एक माइंड बनाना एज अ जीपी, एज अ फैमिली फिजिशियन, वो बहुत अहम है. आज हम मेरी भी कोशिश ये होगी कम से कम अपने हम पहचान सकें अपने आप को कि हम हैं कौन. मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कौन हूँ. मैं डॉक्टर नासिर शाह हूँ. मैंने MCPS, FCPS, MRC GP, FRC GP किया है, और मैं शिफा में विजिटिंग प्रोफेसर, CPSP में डीन और नेशनल फैमिली मेडिसिन का कन्वीनर. दिस जस्ट माय एकेडमिक वो. लेकिन जो मेरे शुक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी हुआ कि मैं एक फैमिली मेडिसिन का टीचर हूँ, वो मकाम बहुत बड़ा होता है, तमाम एजाजात से बड़ा. एंड देन अगेन ये जो स्लाइड है कि शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कहीं पे, ये जो आज आपने फैसला किया कि आपने डिप्लोमा ज्वाइन किया, ठीक, ये बिल्कुल एक ज़रख़े ज़मीन में बीज डालने का है, और ये इल्म का बीज है. आज आप डाल रहे हैं तो इसको पहले पौधा निकलेगा, ये बड़ा होगा, लेकिन बीज डालने का अमल. हैंड रेज हुआ है, स्लाइड नजर आ रही है कि नहीं? Can you see the slide? वो seed वाला? Yes, Nasir, we can see your slides. अच्छा, You can address the hand raised after your presentation, I think. चलिए जज़ाकल्लाह. तो पहला स्टेप हमेशा ही ये बीज का होता है, और हर बीज अलग अलग होता है, ठीक है, हर बीज से अलग पौधा निकलता है. सो ये पहला कदम आज हमने कर लिया, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और आप सबके मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस पे इनविटेशन पे आप आए, इस कोर्स में ज्वाइन किया. और नेक्स्ट जो पिक्चर है, ये मेरी फेवरेट पिक्चर्स में से है, ठीक. और इस तस्वीर में जो आपको नजर चीज आ रही है वो है सीडलिंग. बीज से निकलने वाले पहले जो पौधा होता है छोटा, उसको सीडलिंग कहते हैं. फिर ये तो जो होते हैं टेम्पररी लीव्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह स्टार्ट करती हैं, फिर और पत्ते निकलते हैं. लेकिन इससे भी अहम बात, अगर आप लोग बता सकें इस पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है आपको, गेस. ठीक, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या नजर आ रहा है, चैट में, वो क्वेश्चन आंसर में ना डालिए. सॉइल, यस. ग्रोथ, यस. दो चीजें नजर आ रही हैं. सन लाइट, यस, जो एनर्जी का सोर्स है, लाइफ है. सॉइल, लाइट, ग्रीन, फ्रेशनेस, ठीक. क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल माइक्रोस्कोप में नजर आता है. शाइनिंग लीव्स, ब्यूटी. एंड एयर, द ऑक्सीजन, हवा भी है और नमी भी है, ठीक. बगैर पानी के भी आपको ये पौधा नहीं बढ़ेगा. सो द मैसेज इज, रूट, नीचे रूट है, ठीक. तो द मैसेज क्या है इस पिक्चर का? लाइफ, शेड फॉर अदर्स. मैसेज ये है, जो बीज डाला जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी का जरखेज होना, बंजर जमीन में नहीं, उसमें नमी का होना जो पानी होता है, उसमें सूरज की किरणों से उनकी एनर्जी आना, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और उसका एक्सचेंज होना,
ये सब मिला के वो फर्टाइल इन्वायरमेंट देते हैं जिससे पौधा बढ़ेगा। और हमारी एज ए कोर्स डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड फैकल्टी, हमारी कोशिश होगी कि हम वो इन्वायरमेंट दें आपको कि आप लोग उसमें ग्रो कर सकें। ग्रो आपने खुद करना है, ठीक। ये जो बीज आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी स्पीड, आपके पेस और जो अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी हैं वो आपने करना है, ठीक। तो हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, मेहनत आपने करनी है, ठीक। आगे बढ़ना ये आपने, ये स्लाइड का मैसेज है। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। एंड देन जो दूसरे पत्ते निकलेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद इन 1 ईयर आपके ये पौधे बड़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ग्रेजुअली योर नॉलेज एंड स्किल विल इंप्रूव। एंड ये कोर्स डिप्लोमा, MCPS, MRCGP के बाद, ठीक है, वी होप कि आप लोग भी हर बंदा अपनी जगह पे एक तनावर दरख्त हो। इस पिक्चर में देखिए सारे दरख्त एक साइज के नहीं है, सारे दरख्त एक साइज के नहीं है, क्योंकि हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं, हर एक का स्टार्टअप मुख्तलिफ है, हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, उसकी जिंदगी के हालात, उसकी घर, उसकी सेहत, उसकी नजरें, बहुत से लोग स्क्रीन नहीं देख सकते, मुख्तलिफ है, लेकिन मिल के एक दरख्तों का एक नज़ारा है, ठीक है। सबकी अपनी ब्यूटी, अपना मकाम है। सो जैसे डॉक्टर साइमा ने कहा, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। हर बंदा अपनी पाथ, अपनी स्पीड से, अपने मुकद्दर के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से ग्रो करता है। सो यू शुड ऑल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप इस इल्म के सफर में आए हैं, ठीक है। आगे पीछे कुछ नहीं होता। सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। सो ऑब्जेक्टिव जो मेरी प्रेजेंटेशन के इन 3 तस्वीरों के बाद, बॉटनी का लेक्चर के बाद, कि एटलीस्ट अगर हम इस सेशन के बाद समझ सकें कि फैमिली मेडिसिन क्या होती है, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अपनी स्टोरी के साथ उसको एक्सप्लेन किया, ठीक। कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं जो फैमिली मेडिसिन की हैं, जो हमें दूसरी स्पेशलिटी से मुमताज करती हैं। तीसरा, हमारा जो रोल है हेल्थ सिस्टम में, क्या क्या हम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक, बिगिनिंग टू थिंक एज ए टीचर्स। ये मजबूरी है हम सबकी, क्योंकि हम जिस नबी के उम्मती हैं वो मुअल्लिम नबी थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इल्म का था, और हमने ये ट्रांसफर करना है। पहले हासिल करना है, फिर ट्रांसफर करना है, ठीक। ये इसलिए सोचिएगा, ये अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं बताया गया। हमें बताया गया कि पढ़ो लिखो नौकरी ढूंढो, नौकरी के पीछे लगा दिए नहीं, इल्म हासिल करो और इल्म बांटो। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ये हमारे ही पाकिस्तान के एक अस्पताल का मंजर है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी एक मशहूर शख्सियत की अम्मी है, जो आपने मुझे बताना है किसकी अम्मी है। बेचारी अस्पताल में आ गई, दुपट्टा कहीं रह गया, कमीज टेढ़ी है, सबके सामने कोई खींच रहा है उसको गंदे से स्ट्रेचर पे। तो मैं हमेशा से पूछता हूँ लोगों को ना, लोगों को तो पता होता है, मालूमात लोगों के पास बहुत सी, सोशल मीडिया का जमाना है, ये किसकी अम्मी है, ठीक है। कोई गेस लगाएं, एनी एजुकेटेड गेस, ये किसकी वालदा है, चैट में डालें, गेस करें, गेस। आई हैव ओपन द चैट बॉक्स। अच्छा, some common man। बस 2 आइडियाज आए। माय मॉम। वाह, डॉक्टर शगुफ्ता जीत गई हैं। नो मोर कमेंट्स नीडेड। डॉक्टर शगुफ्ता ने लिख दिया माय मॉम, और यही चीज पाकिस्तानी मॉम। सो द मैसेज इज, जिस दिन पाकिस्तानी डॉक्टर को इस बूढ़ी औरत में अपनी मां नजर आई, उस दिन उसकी डॉक्टरी शुरू होगी। उससे पहले वो टेक्नीशियन था सिर्फ, जिसको स्किल्स और नॉलेज और मेडिकल की चीजें सिखाई गई थी। ये है वो एम्पैथी जो कि हमारे यहाँ नहीं है, और ये अगर हम डेवलप कर पाते हैं तो हमारे हाथ में शिफा भी आती है, हमारी जबान में तासीर होती है, हमारे रवैये बदलते हैं, इख्लाक बदलता है,
अदब बदलता है, मकाम और इज्जत बदलती है। मैंने आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जिसके इखलाक अच्छा हो और उसको डांट पड़ी हो या मार पड़ी हो। ठीक, जितनी भी ये मकाम खोने वाला डॉक्टरों ने मकाम जो खोया हुआ है वो उनकी इस एम्पैथी से नाबलद होने से है। कोल्ड रिस्पॉन्स देना, अपने आप को अफसर समझना, ठीक, इस वजह से है। तो अगर हम सीख पाते हैं कि जो भी पेशेंट आया है वो अल्लाह ताला ने उसको बीमार किया, हमें अल्लाह ताला ने इल्म दिया कि हम उसकी हेल्प कर सकें, हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम उसकी हेल्प करें, हिस्ट्री सुने, एम्पैथी दिखाएं, हमदर्दी दिखाएं, अच्छा इलाज करें, उसके मुताबिक इलाज करें। इससे बढ़ के मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोफेशन में सआदत होगी। और ये अल्लाह के मेहमान होते हैं पेशेंट्स, जन्नत का दरवाजा है हमारे। सोचे उस बदनसीब डॉक्टर का जिसको अल्लाह ताला ने हजारों पेशेंट्स उसके पास, जिसको अल्लाह ने खुद बीमार किया है, भेजे वो करो और उसे बदइखलाकी की, इलाज सही नहीं किया, कंपनी से पैसे खाए और वो जन्नत के दरवाजे से वापस पलट के जहन्नम में जाए। वेरी बैड लक, वेरी बदकिस्मत होगा, अनफॉर्चुनेट होगा उसके लिए। तो ये दरवाजे के करीब खड़े हैं, हर पेशेंट को वो मकाम दीजिएगा जो उसका हक है, फिर देखें कि आपके लिए अल्लाह ताला की रहमतें कितनी आती है। अगेन, ये जो ओपीडीज के अंदर इतना रश होता है, क्या हम चाहेंगे कि हमारे चाचा ताया और बूढ़े अम्मे की तरह वो जो खातून है वो रो रही है, वो मैं पूछूंगा किसकी बहन है, वो होपफुली सब बोलेंगे हमारी बहन है। क्या हम, हमारी फैमिली इस तरह धक्कम पेल में हम चाहेंगे? कभी चाहेंगे? लेकिन ये मजबूर लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो धक्के खाते हैं। और इसकी वजह प्राइमरी हेल्थ केयर कमजोर है हमारा, बस बड़े अस्पतालों में रश लगा रहता है। इतना रश, बीमारियां फैलती हैं। एक टीबी का मरीज इस रश में हो, कितनों को टीबी लगा के छोड़ेगा, कितने इन्फेक्शंस फैलेंगे। लोग मजबूर हैं, आते हैं। वजह प्राइमरी हेल्थ केयर कमजोर है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कितना एम्फेसाइज किया था, कमजोर प्राइमरी हेल्थ केयर, कमजोर फैमिली मेडिसिन, जिसकी वजह से अस्पताल ओवरबर्डन है। कमजोर प्राइमरी हेल्थ केयर, वीक प्राइमरी हेल्थ केयर, वैक्यूम होता है, क्वैक्स जन्म लेते हैं। जितने डॉक्टर पाकिस्तान में रजिस्टर हैं उससे डबल क्वैक्स हैं। इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, साइड इफेक्ट्स, बहुत कुछ फैला हुआ है। पावरफुल जिन मुल्कों में प्राइमरी हेल्थ केयर और फैमिली मेडिसिन स्ट्रांग होती, वहां क्वैक्स नहीं होते। ये तो हद है सर्जिकल क्वैकरी की। ये जंग के क्वैक्स थे, ये ओटीओ में काम करते थे और शाम को प्राइवेट किसी घर से जगह में केटामीन लगा के सर्जरीज भी करते रहे, पकड़े गए। उसकी लाइट्स चेक करें, पता नहीं किस टॉर्च में क्या कर रहा है, पता नहीं ड्रिप में क्या है। ऐसे तो कसाई नहीं होते, लेकिन ये होता रहा है पाकिस्तान में। वीक रेगुलेशन इन पाकिस्तान। ये एक दुख भरी दास्तान है प्रोफेसर साहब की। मीडिया पे रिपोर्ट हुई है तो इसलिए मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं है। बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया बहुत आया। किसी वजह से प्रोफेसर साहब थे, जेल में हार्ट अटैक हुआ, जो डॉक्टर थे मौजूद थे, सीपीआर नहीं आता था। ठीक है, अफसोस की बात, जब प्राइमरी ट्रेनिंग नहीं होती है, अब जेल में या कॉर्पोरेट में हो एंड यू डोंट नो हाउ टू सेव अ लाइफ, सही, तो उनकी डेथ हो गई क्योंकि सीपीआर करने वाला नहीं था। डॉक्टर आता था, देखता था, परेशान होकर पलट जाता था। जब उनका इंतकाल हुआ, फिर इंतकाल के बाद उनकी डेड बॉडी को हथकड़ियां पहनाई ताकि लगे कि ये कस्टडी के अंदर हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं था। सो लेसन इज, all doctors who are in corporate sector, in public sector, in private practice, at least life saving skills उनको आनी चाहिए। यही वजह है कि CPSP के प्रोग्राम में BLS है और शिफा के डिप्लोमा में भी BLS है। अस्पतालों के अंदर क्या, बाहर कितना रश होता है। क्या हम चाहेंगे कि आप सोचे, अपना बेटा सोचे, अगर आप इस तरह बैठे हो, लेडीज, हाँ शुक्र है मर्द ही नहीं है, मर्द तो जाके इधर कोई सिगरेट पी रहा होगा। एनीवे, आप सोचे लेडी डॉक्टर्स, आप इस तरह पसंद करेंगे कि अस्पताल के गंदे फर्श पे आपका बीमार बेटा जख्मों पट्टियां बांध के गर्मी में बैठा और गत्ते से आप हवा दे रहे हैं? ये अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम उससे डिस्कनेक्ट है, हमारा मामला नहीं, दिस इज नॉट अ हेडेक,
You are wrong. This is our headache. अस्पतालों पे ये 3 पेशेंट्स, लेकिन लोकेशन बड़ी अच्छी बनाई हुई है उन्होंने ना, 2 के सर उस तरफ है, 1 का पैर उस तरफ. वजह, प्राइमरी हेल्थ केयर इज वीक, देयर इज नो प्रिवेंशन, देयर इज नो हेल्थ प्रमोशन, देयर इज वीक फर्स्ट कांटेक्ट. अस्पतालों में आते कितनी डेथ्स होती हैं डायरिया से इस जमाने में भी. क्या आप समझते हैं कि हम डिस्कनेक्ट हैं? हमारा कोई इससे सरोकार नहीं? सॉरी, वी ऑल आर रॉन्ग. वी हैव आवर रोल इन दिस. ये केपी के हॉस्पिटल है. क्या ये अस्पतालों की दीवारें देखें, क्या इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? क्या इन बेड्स पे पता नहीं किस किसने यूरिन पास किया होगा, कितना ब्लड, स्पूटम और पस और वो लगा होगा, और वो माँ जो है बोतल रख के बच्चे को पिला रही है, उसके हाथ में जरासीम नहीं होगी, बच्चा ठीक होगा, बीमार होगा. इफ यू थिंक एज ए फैमिली फिजिशियन यू आर डिस्कनेक्टेड, या आपका हेडेक नहीं है अस्पताल के इंतजामिया, MS हेल्थ डिपार्टमेंट का, सॉरी, यू आर रॉन्ग. यू हैव अ रोल. ये केपी का एक THQ का वार्ड है, ठीक है, एक जनरल वार्ड है. ये वार्ड कम, अस्तबल ज्यादा लगता है, ठीक है. यू थिंक यू आर डिस्कनेक्टेड, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सॉरी, यू आर रॉन्ग. इस मुल्क पे पीने के पानी की शॉर्टेज, एक तरफ टैंकर माफिया, एक तरफ लोग पानी भर रहे होते हैं जिंदा रहने के लिए. ऐसे गंदी जगहों पे पानी भरते हैं. क्या कॉलरा, जार्डिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, हेलमेंस, ये नहीं होगा? These are called social determinants. क्या हम डिस्कनेक्ट हैं? ये हमारा हेडेक नहीं है, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, वासा का काम है. यही सोच रहे हैं ना सारे कि डॉक्टर नासिर का दिमाग खराब हो गया है कि वासा के काम भी डॉक्टर के माथे लगा रहा है. सॉरी, वी आर रॉन्ग. वी हैव अ रोल टू प्ले. बताऊंगा एंड में, जरा सब्र से बैठे. तो अगेन ये हालात है. मेल न्यूट्रिशन, थर में कितने बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, मीजल अटैक करता है. क्या हम डिस्कनेक्ट हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले, हमारा कोई काम नहीं है तो थर में मुराद अली शाह साहब जाने और वो जाने कि गुर्बत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं. इफ यू थिंक कि आपका कोई रोल नहीं है, सॉरी, रॉन्ग. वी हैव अ रोल टू प्ले. अब आ जाए कि मैं सारी कहानियां क्यों मैं बता रहा हूं, हमारा रोल, हम किस तरह से हमारी एजुकेशन पे असर पड़ा. ये एक पब्लिश्ड डाटा है, इसको स्लाइड गौर से देखिए, ग्राफ को. दिस ग्राफ इज शोइंग दैट इफ 1000 पीपल गेट सिक, ये एविडेंस बेस्ड है, 1000 लोग बीमार हुए तो किस तरह से वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर होता है, कहां से इलाज करवाते हैं. 800 बंदे की रिपोर्ट होता है, बाकी तो 200 एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. कुछ जो है ना सीकिंग मेडिकल केयर, या किसी से पूछ पाछ के सेल्फ मेडिकेशन कर ली. फिजिशियन के ऑफिस से आउट पेशेंट पे, और उसमें से 113 आते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास. हाईएस्ट नंबर हेल्थ केयर में आने की प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास है. और एक फिगर आपको और दिखाना चाह रहा हूं, 1000 में से 8 एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में. तमाम मेडिकल एजुकेशन जो हमारी है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन दीज 8 पेशेंट्स, 8 आउट ऑफ 1000. ठीक है, तो हम 8 मरीजों की जो चीज सीखेंगे हम 313 पे अप्लाई करते हैं. इसीलिए हमारा प्राइमरी केयर वीक है, हम पे टर्शियरी केयर की छाप लगी हुई है. इंजेक्शंस, हैवी ट्रीटमेंट, हैवी एंटीबायोटिक्स, न काउंसलिंग है न लिसनिंग है. सो one of the beauties of Shifa diploma is that it's a mix of rotations and outpatient. GPs के साथ वो होगा, ठीक. So it strengthens primary health care, proper primary health care. अल्लाह करे तमाम लोगों को ये बात समझ में आए और मेडिकल एजुकेशन MBBS वालों की भी आउट पेशेंट बेस्ड आ जाए. अच्छा, क्या ये बात मैं कर रहा हूँ या कौन करता है? What is the importance of what I am saying? ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए आई ओपनर्स हैं. इसको आप भी एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं. ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट आपकी नहीं, ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि हमारे PMDC को, तमाम दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस को
गवर्न करता है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है। वो क्या कहता है? The objective of medical education in all countries, whether developed or developing, is to train doctors to respond to the health needs of the country. And this is the overall mission of World Federation of Medical Education. ये उनके अल्फाज हैं। अल्लाह हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, PMDC को, HEC को, वाइस चांसलर्स को, प्रिंसिपल्स को और पॉलिसी मेकर्स को ये तौफीक दे कि हेल्थ नीड्स ऑफ द सोसाइटी के मुताबिक काम करें। हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम कहीं से बाहर से आ गया, बंदा प्रोग्राम लेके आ गया, हमने कर दिया। जो हेल्थ नीड्स है विच इज फैमिली मेडिसिन, उसमें बहुत कम फोकस है। WHO क्या कहती है? ठीक, WHO ने मेडिकल स्कूल की सोशल अकाउंटेबिलिटी बनाई हुई है। WHO defines social accountability in medical school as the obligation to direct education, research and service towards addressing the priority health concerns of the community, region or nation that they are mandated to serve. WHO भी कहती है जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज, PMDC है, खुदारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सर्विस दो, रिसर्च करो। तो मुझे खुशी है कि शिफा का डिप्लोमा में जो मेंटल हेल्थ है, दिस इज वन ऑफ द नीड्स, फैमिली मेडिसिन इज वन ऑफ द नीड्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज वन ऑफ द नीड्स। तो एक स्टेप हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द नेशन। एक और इदारा भी है जो ग्लोबल कंसेंसस फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, वो भी यही कहता है, ठीक है, कि जो हेल्थ नीड्स ऑफ द सोसाइटी है उसको सामने रख के करो। ऐसी ट्रेनिंग्स मत स्टार्ट करो जो तुम्हारे मुल्क में जरूरत ही नहीं है। अब आ जाए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम बेबस हैं। जो डॉक्टर आप में से समझते हैं कि वो बेबस है, कुछ नहीं कर सकते, वो इस दुनिया के सबसे बेबस आदमी को देखिए। हाथ पांव दूर, गर्दन तक नहीं हिला सकते, ना होंठ हिला सकता है, ना जबान, ना आंखें झपका सकता है। इससे ज्यादा माजूर शख्स आपको नहीं मिलेगा। पलकें झपकाना उसके लिए मुश्किल। वो क्या कहता है और वो कितना बड़ा मकाम उसको अल्लाह ने दिया। एंड हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू and succeed. It matters that you don't just give up. हम में से किसी डॉक्टर्स, no one of us should give up improving our health system, improving our nation, improving our profession. ठीक, और ये बात मेरी नहीं, ये इस माजूर आदमी की है जो सबसे बेबस था लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे करके गया है, स्टीफन हॉकिंग। क्या हम, वो तो स्टीफन हॉकिंग अमेरिका में है, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं? जानते हैं इनको? लाहौर वाले शायद जानते हो। अतिया अनवर रेजिडेंट, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, सही। मेडिकल कॉलेज में इनको मस्कुलर कोई प्रॉब्लम्स हुई, ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर, लेकिन अब सहारे से चलना पड़ता है, उठना बैठना मुश्किल होती है, सहारा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनका मिशन तो देखिए, पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन के पायनियर्स में से हैं, FCPS रिहेबिलिटेशन मेडिसिन स्टार्ट करने वाले, अपने लोगों का इलाज करते हैं, उनका एम्पावर करते हैं, उनको उस्ताद बनाते हैं, उनको कहते हैं अब तुम अपना भी करो, दूसरों का भी इलाज करो। तो फाउंडर ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इन पाकिस्तान डॉक्टर खालिद जमील अख्तर। ये कहने का मकसद क्या है? जैसे डॉक्टर खालिद जमील अख्तर है, वो एक लीडर है अपने शोबे में। हमें जो कॉन्सेप्ट लीडरशिप का दिया गया है वो ये क्या है? शोला बयां मुकर्रर, जोशे खिताबत वाला, स्टेज पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला, जोर जोर से चीखें मारने वाला, ऐसा नहीं है। हर शख्स अपने मकाम पे लीडर है। ईच वन ऑफ यू, 136 लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं, 136 लीडर्स इस वक्त इस ग्रुप में हैं, बिकॉज एवरीवन इज अ लीडर इन हिज ओन स्पेस, इन हिज ओन और हर ओन लाइफ। ठीक, मैक्सवेल की ने कहा है एवरीवन इज अ लीडर बिकॉज एवरीवन इन्फ्लुएंसेस समवन, चाहे फैमिली हो, चाहे आपके ऊपर वाले हो, चाहे लोअर वाले हो, चाहे कोलीग्स हो।
सो ये फीलिंग्स अपने अंदर डालनी है। लीडर वो नहीं जो बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, जो आपका रोल है, मकाम है, जो जगह है आपकी अल्लाह ताला ने आपकी जो बनाई हुई है, उसको अच्छे से निभाना होगा। A leader is someone who demonstrates what's possible. ये नहीं कि द बेस्ट एवर दुनिया का कारनामा कर दे, जो भी मुमकिन आप कर सकते हैं कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ये मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, ये डिमागियो की है। अ पर्सन ऑलवेज डूइंग हिज और बेस्ट बिकम्स अ नेचुरल लीडर जस्ट बाय एग्जांपल। कितने लोग हैं जिनको हम देख के इंस्पायर होते हैं, वो इसलिए तो नहीं करते, वो तो अपनी नेचुरल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हम उसको देख के इंस्पायर होते हैं, वो हमारे लीडर होते हैं। ये कहानी देखने वाली है। इंडिया, आपने देखा होगा ये लड़की इंडियन आईसीएस, जैसे हमारा पीसीएस होता है, वो इंडिया का जो सर्विस सिविल सर्विस का इम्तिहान में टॉप किया था इसने, ठीक है। और अब्बा को बिठा के पूरे शहर में घुमाया, सही। और वही टांगा जिसमें अब्बा इसको स्कूल ले जाता था, पढ़ाता था और फिर मेहनत करता था और बेटी को इस मकाम तक पहुंचाया, तो बेटी ने उसी टांगे को खींचा, ठीक है। क्या था ये? ही वाज अ लीडर एज अ फादर इन हिज रोल ऑफ फादर। ये एक एग्जांपल है लीडरशिप की, वो नहीं है कि जो हम समझते हैं। तो आपको जो अल्लाह ताला मकाम दे, एज अ हाउस वाइफ, एज अ कॉर्पोरेट डॉक्टर, एज अ जीपी, आप उसको अच्छी तरीके से निभाएं। जिसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं करें, जो पॉसिबल है करें, तो ये होता है लीडर। दूसरा क्या कर सकते हैं? मार्टिन लूथर किंग की बहुत अजीम बात है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो कि बेबस और मायूस समझते हैं अपना, ठीक है। तो बिल्कुल महसूस मत कीजिए, यू हैव द पावर, you have power, you have opportunity, you have energy, you have the opportunity, अल्लाह ने मौका दिया है, so you prove yourself as a leader in your own role। वज़ीर आज़म बनने का कोई नहीं कहता आपको। There is a big lesson in this picture। ये पेंटिंग है, उस जमाने में कैमरे नहीं होते थे। सोक्रेटिस, सुकरात, जो कि बहुत बड़ा आलिम था, और ज़माने के जो नाखुदा होते हैं, द गवर्नमेंट्स और द किंग्स और द प्रीस्ट, ये जो हुक्मरान और मजहब का जो गठजोड़ होता है, उसके खिलाफ था। देन ही वाज कॉर्नर्ड, पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, कि आइदर यू हैव टू किल योर आइडियाज और किल योरसेल्फ, ठीक है। बोल दो कि मैंने गलत बोला था, माफी मांग लो, वरना जहर का प्याला पी लो। ये वो जहर का प्याला पीने के मंजर कशी है, ठीक। लेसन क्या है? लेसन इसमें है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे मुश्किलात आएंगी। एज अ डॉक्टर, एज अ जीपी, एज अ मेडिकल ऑफिसर, जब भी आप कोई नेकी के रास्ते पे जाएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्डशिप्स एंड सैक्रिफाइसेस। ये नहीं कह रहा हूं कि आप जहर का प्याला पी के, हमारे 136 पार्टिसिपेंट है बेचारे, जहर का प्याला पी लें और मैं जेल में पड़ा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप जहर का प्याला पिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं बी रेडी फॉर हार्डशिप्स एंड बी हैव द करेज टू टॉलरेट द हार्डशिप्स। सब्र कहते हैं इसको, ठीक है। और लेकिन ये अच्छा रास्ता नहीं छोड़ना होता। दैट्स व्हाई आई से कि आप लोगों का रोल है बहुत बड़ा। इस शख्स को जानते हैं, दूरबीन से देख रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, बंदा गैलीलियो है, दूरबीन इजाद की, सैयारों को देखता था, तो उसने कहा सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, जमीन सूरज से गिर्द घूमती है। सारे हुक्मरान और मजहबी जो बादशाह होते थे मजहबी, उसके पीछे पड़े। बिल आखिर इसको भी कॉर्नर किया
या तो तुम तौबा करोगे और या तुम्हें सजा देंगे। एंड इस दूरबीन से देखने वाले जो दुनिया की आंखें देने वाला था, इसकी दोनों आंखों में लोहे की सलाखें डाल के अंधा कर दिया था बेचारे को। और 300 साल बाद पता चला ये बेचारा सही कह रहा था। ये आसानी से कह सकता था नहीं 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 मैं झूठ बोलता हूँ, जमीन नहीं घूमती, मुझे अंधा मत करो, कह सकता था। ठीक है, इसको एनआरओ ले सकता था बादशाहों से, मेरी तौबा, मेरे अंधा ना करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज गलेलियो को तो सब जानते हैं, सोक्रेटिस को सब जानते हैं, लेकिन अंधा करने वाले और जहर का प्याला पिलाने वाले को कोई नहीं जानता। इसको जानते हैं कोई? यस, ये कौन है? चैट में डाल देखो किसने कुछ लिखा है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बंदी बच्चे को नहीं जानते। क्यूट है ना, नंगे पाँव एंजॉय कर रहा है जिंदगी को, अजीम बच्चा है। इसको जानते हैं? अब तो शायद जानते हो। सुपर हीरो एतजाज हसन, इसने क्या किया था कुछ पता है? खुदकुश बम्बार को पकड़ा था और बाकी बच्चों को बचाया था। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Yet another example, इसको जानते हैं? चैट में लिखिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन इजाद करने वाला बंदा। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक सारी कंपनियां पहुंची राइट्स के लिए, तुम्हें इतने करोड़ डॉलर देंगे, इतने डॉलर बिलियन डॉलर देंगे, इसकी रॉयल्टी हमें हमारे साथ काम करो। लेकिन इसने क्या किया? 1 रुपया नहीं लिया, इसने फ्री पेनिसिलिन की रॉयल्टी दी तमाम कंपनीज की। हम कर सकते हैं इस तरह? तो हम तो 100 रुपए के लिए बंदा कत्ल करते हैं, फीस नहीं छोड़ते। कोई फीस मरीज कहे कि मेरी फीस कम कर दो, लड़ने को आ जाते हैं। हम तो कंपनी से पैसे खा जाते हैं, एसी लगवाते हैं, टूर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, फिर बाद में उनको बेनिफिट दे रहे होते हैं। और ये आदमी करोड़ों अरबों रुपए ठुकरा के मुफ्त दे रहा है। और रीजन क्या बताई थी इंटरव्यू में कि क्यों इसने फ्री दिया था? ठीक है, इसने कहा कि जो मैं तो रिसर्च कर रहा था ऑन बैक्टीरिया एंड फंगस का स्पोर आया और वो अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह की ने मुझे वसीला बनाया, तो मैं इसके पैसे कैसे ले सकता था इंसानों से? अब कितने लोग इससे फायदा उठा चुके होंगे, कितने लोग की जिंदगियां बची होंगी, इसको तो फरिश्ते भी नेकियां लिख लिख के थक गए होंगे। ठीक है, ये फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कराची वाले तो फौरन पहचान गए होंगे कि ये कौन है। चैट में लिखिए कौन जानता है? डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी द ग्रेट। माशाल्लाह अब 90 को पहुंचने वाले हैं, अभी भी सुबह आते हैं शाम तक काम करते हैं। ऐसा यूटी में ऐसा इदारा बना के गए हैं जहाँ पे बादशाह और फकीर एक साथ होते हैं, कोई माइंड नहीं करता। वहां पे काम का ऐसा यूटी, अब जाइए सफाई वाला काम करेगा, बोलिए कैसे जज्बे से काम कर रहा है। मजदूर आते हैं, कोई दीवार बनानी है, कुछ है,
जज्बे से, जैसे कोई मस्जिद बना रहे हो। कारपेंटर आता है तो वैसे काम करता है जैसे कोई मस्जिद में काम कर रहा हो। एक आदमी का ऑनेस्ट जज्बा है जो कि पूरी की टीम में आया हुआ है। डॉक्टर से बात करें, वो भी नेकियों वाले बात हो रही होती है। नर्स से बात करें, एडमिन से बात करें, समहाउ इतना वो है। और क्योंकि ये ऑनेस्ट है। अनदर इस तरह का आदमी है डॉक्टर बारी साहब जो इंडस को चलाते हैं, उनके भी नेकियां बड़ी हैं, साफ नीयत से काम करते हैं। हमें इसके बारे में तो कोई नहीं बताता। ये जो लेडी हैं जो इंसानियत से मदर टेरेसा, सवाल मेरा आप सबसे ये है, क्या इनकी जो अफेक्शन थी, मोहब्बत थी, इंसान कंडीशनल थी? क्या सिर्फ ईसाइयों के लिए थी? नहीं ना, सबके लिए थी। अनकंडीशनल लव टू ह्यूमैनिटी। डॉक्टर भी तो कर सकता है। क्या ईदी साहब की चीजें कंडीशनल थी? अनकंडीशनल। तो हमें अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल अफेक्शन, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल एम्पैथी करनी पड़ेगी। हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अपब्रिंगिंग में दीवारें, नफरतें, पार्टीशन ही बहुत है, गिनानी पड़ेगी। ये लेडीज के लिए चैलेंज है। कौन है हमारे इस 130 पार्टिसिपेंट में जो कहता है कि वो हो सकता है अभी नजर कैमरे बंद हैं, वो कहता है नहीं यार मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। कोई चैलेंज कबूल करे इस लड़की का? है कोई चैलेंज कबूल करने वाला? देखता हूँ कौन चैलेंज कबूल करता है। नो चैलेंज, गुड। हार गए ना। ये जो लड़की है मैडम रूथ फाओ, ये इस स्टेज में, इस जवानी में आई थी पाकिस्तान, जो इसका मुल्क नहीं है, जर्मनी से आई। और क्या करने आई कि मैंने लेप्रेसी खत्म करनी है। क्या उसने लेप्रेसी पाकिस्तान से खत्म कर दी? जी हाँ। एक खातून की मेहनत पूरी जिंदगी उसने की, और इसके लिए क्या क्या पैसे कमा के गई है। क्या बंगला, गाड़ी, प्राडो, बैंक बैलेंस, स्विस बैंक, और वो लंदन के फ्लैट्स हैं, या सरे महल है, या बनी गाला। क्या बनाया इसने? कुछ भी तो नहीं बनाया। ठीक है, जन्नत कमा के गई। ये होती है अनकंडीशनल काम, अल्लाह को खुश करने वाली। और पेशेंट्स, हमारे जो पेशेंट्स हैं, क्या हम उसको इस तरह से मोहब्बत दे सकते हैं? मैं नहीं कि सारे पेशेंट को गले मिल रहे, नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। एक जज्बा है, ठीक है, गले लगाना नहीं है। पता चले पिटाइयां हो रही हैं, हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट के सारे मर्द हजरात जो है ना बोलते, डॉक्टर नासिर ने कहा था पेशेंट को गले लगाओ। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अफेक्शन, अनकंडीशनल लव, इस सब को जानते हैं। आइंथोवन अपने ऊपर तजर्बा कर रहा है ईसीजी मशीन बनाने के लिए। खुदा का झटका लगे तो मैं मरूं, कोई किसी इंसान को जान ना जाए। आज वो ईसीजी कितने लोगों की डायग्नोसिस करती है, कितने की जान बचाती है, कितने एमआई, एरिथमियाज, ब्लॉक्स पकड़ती है। कुछ अंदाजा है हमें पूरी दुनिया में अरबों लोगों की? ठीक है, एक आज तक उनके मरने के बाद और आज तक रहती दुनिया तक जितनी ईसीजियां होंगी उसमें इस बंदे का सवाब होगा। इसको कहते हैं इल्मुन नाफियन। और सदका जारिया की जो किस्में हैं, वो इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाता रहे, वो सर्विस सदका जारिया जो लोगों को फायदा पहुंचाती रहे, ये वो चीजें। और एक नेक औलाद जो आपके बाद दुआ करते रहे, ये वो चीजें हैं जो बनने के बाद भी सवाब है। अल्लाह में भी इतने सवाब कमाने के। अब मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, उसके बाद से बाकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है। रिलैक्स कीजिए, जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो के बाद बात करेंगे। रेडी हैं फॉर द वीडियो? चलें। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए मेरे पिछड़े। मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी को लुटा दे कोई। मेरे बचपन के दिन
दिन, कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी तो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते। काश फिर वो ज़माने, काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। शादी वो बचपन की रे, वो सब मिलके एक घर बनाने का खेल, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में 100 अफसाने, सबके सब वो फसाने, सबके सब वो फसाने सुना दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।
चलिए, ये वीडियो मैं स्पेशली दिखाया करता हूँ इनॉग्रेशन में, इसकी खास वजह है। इस वक्त आप सबकी कैफियत क्या है? मेजॉरिटी की ये खास कैफियत फील कर रहे हैं ना, अभी स्टांस में चले गए, पिछले चले गए, और एक अजीब सी फीलिंग होती है, किसी की अच्छी, किसी की बुरी, किसी के दुख, किसी को खुशी, किसी का अफसोस, एक मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। एक खास स्टैंस में होगा, कोई इमोशनल होगा, ठीक है। ये खास मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, रीजन भी सुन लें। अभी जो आपकी कैफियत है ना, ये आज से 25, 30, 35, 40 साल बाद जब आप अपनी आज के दिन को देखेंगे तो यही फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। तो उस फीलिंग को शानदार बनाने के लिए, 30-35 साल वाली फीलिंग्स को शानदार बनाने के लिए आज आपको कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे। बी योर सेल्फ। जो अल्लाह ने जिंदगी दी, हाथ पांव सलामत दिए, आंखें दी, जबान दी, दिमाग दिया, मौका दिया, रिश्ते दिए, सेहत दी, तालीम दिया, सब कुछ दिया, मेक यूज ऑफ दिस। पेशेंट्स के लिए, अपने लिए, फैमिलीज के लिए, नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। फिर 35 साल बाद आपकी डिफरेंट फीलिंग्स होंगी और आप इस जिंदगी को बार बार इंजॉय करेंगे। गुजारते एक दफा है, इंजॉय बार बार करते हैं जब आप उसको सोचेंगे। तो आज जिस तरह आप पढ़ाई के सफर में आए हैं ना, इस टेम्पो को मत टूटने दें। जैसे डॉक्टर साइमा ने कहा, इल्म का सफर को जारी रखिए, डिप्लोमा करें, एमसीपीएस करें, एमआरसीजीपी करें, डिप्लोमेट बोर्ड करें, आगे बढ़ते जाएं। बी अ लीडर, बी अ रोल मॉडल। सो इसको सामने रखते हुए जो नेक्स्ट मेरा है कि हम हैं क्या चीज। आज हम 135 लोग क्या हैं। डॉक्टर का लफ्जी मतलब होता है टीचर। लैटिन में टीचर को डॉक्टर कहते हैं, इसीलिए पीएचडी वालों को भी डॉक्टर कहते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, फ्लेक्सनर रिपोर्ट। उसने कहा डॉक्टर इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। आप खुद सोचिए, लोग आपसे नहीं आते कि रिश्ते ढूंढने के लिए भी आते हैं। बेटे को समझाओ, वो नाफरमान है, अम्मा दवाई नहीं खाती, समझाओ, ठीक है, मशवरा करते हैं हर एक में। डॉक्टर्स आर रोल मॉडल्स। हर एक कहता है देखो उस तरह तुम डॉक्टर बनो, ठीक है। और एंड ऑफ द डे वी आर सर्वेंट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये हमारी ये खसूसियात हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा, डॉक्टर वीसी साहब ने भी कहा। तो सोशल एंगल है, एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत बड़ा मकाम है इस कायनात में, ठीक। और टेक्निकल टर्म्स में देखें, जो डॉक्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स, बीडीएस वाले हैं, और पीएचडी, 3 के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या फलसफा। आज डॉक्टर साइमा और हम दोनों जो है ना, वो बन गए हैं, अल्लामे बन गए। दिस इज कॉल्ड पासिंग द बैटन। कमाल का फलसफा है, ठीक है। दौड़ में, जिंदगी की दौड़ में आपको अगली नस्ल को चीजें ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। अपने साथ पकड़ के रखेंगे इल्म को, कभी वो आगे नहीं जाएगा, आप थक के हार जाएंगे। हर एक का मखसूस वक्त है इस दुनिया में, और इस जिंदगी के सफर में, इल्म में, प्रोफेशन में कामयाब वो है जो अपना सारा कुछ अगले जनरेशन को या अलग बैच को ट्रांसफर कर सके। ये हमें सीखना पड़ेगा। हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। 80-90 साल का रिटायरमेंट नहीं मांगता, बेचारे जूनियर्स को रोक के बैठा होता है, बांटते नहीं है। सो लेट मी गिव क्रेडिट टू दोज हु हैव ट्रांसफर्ड दिस बैटन। और साइमा और मैं तो हम तो कह सकते हैं, हम अगर यहाँ पे हैं तो इन बड़े बड़े लोगों की वजह से हैं। आप लोग बहुत ज्यादातर तो जानते भी नहीं होंगे, प्रोफेसर रुखसाना जुबैरी इंटरनल मेडिसिन की, और प्रोफेसर अस्मा फौजिया कुरैशी पीडियाट्रिशियन, इन दोनों ने मिलके एफसीपीएस और एमसीपीएस का करिकुलम लिखा था। इन दोनों ने मिल के आगा खान में फैमिली मेडिसिन स्टार्ट की थी। अनदर एग्जाम्पल, आगा खान के शुरू के 30-35 साल में जितने स्टूडेंट निकले सब इनके शागिर्द रहे हैं। डॉक्टर बदर साबिर अली,
क्योंकि हम अपनी कहते हैं फैमिली मेडिसिन की नानी, माशाल्लाह शी इज अराउंड 90 नाउ, तो काफी बड़ी एज की हैं, चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने चीजें हमें ट्रांसफर की। प्रोफेसर रियाज कुरैशी, जो फादर ऑफ फैमिली मेडिसिन हम कहते हैं, जो हम सबके टीचर हैं, डॉक्टर रियाज कुरैशी ने फैमिली मेडिसिन के 10 नुकात बताए थे, 10 C's, जो सारी दुनिया में माने जाते हैं आप, 10 C's of family medicine, and these 10 C's explain the family medicine very well. Number 1 C जो है, that is caring attitude. सोचिए, ऐसी क्लिनिकल स्पेशलिटी है फैमिली मेडिसिन जहां पे डॉक्टरी सेकंड नंबर पे है कॉम्पिटेंस, पहले नंबर पे इखलाक है। That's the difference between family medicine and other specialties. इखलाक पहले है, कोई भी फैमिली फिजिशियन बदतमीज नहीं हो सकता, रूड नहीं हो सकता, बद इखलाक नहीं हो सकता, चाहे वो जितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो। सो पहली चीज हमने ये सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी, अदब व एहतराम भी, देन कॉम्पिटेंस। कॉमन डिजीज एक्सपर्टीज, कॉमन डिजीज दुनिया की 80% बीमारियां कॉमन है, हम 80% बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। चाहे हमें दुनिया जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन का है, लेकिन हम कह सकते हैं 80% बीमारियां हम करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, कोई महंगा काम नहीं करना, फालतू कोई चीज नहीं है दुनिया में। कॉम्प्रिहेंसिव केयर, हम मेंटल हेल्थ, बॉडी, स्किन, फैमिली सब कुछ देखते हैं। कंटिन्यूअस केयर, जो सीनियर फैमिली फिजिशियन से पूछिए, वो दादा भी उसी के पास आता था, बेटा भी आता था, पोते भी आते हैं, नस्ल दर नस्ल चलती है, और बीमारी से लेकर टर्मिनल केयर, फौतगी तक जाते हैं, फातिया में भी जाते हैं। सो हमारा केयर, फिर उसके इंतकाल के बाद फैमिली को सपोर्ट देते हैं। कम्युनिटी बेस्ड केयर, हम कम्युनिटी में बैठ के घरों के पास लोगों के डोर स्टेप इलाज देते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, डॉक्टर उस्मान ने जो जिक्र किया था, रिसर्च वीसी साहब ने भी किया था, हमारा वीक एरिया है जिसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर साइमन ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, इल्म का सफर कभी नहीं रुकेगा। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, हम भेजते हैं इलाज के लिए, वापस भी हमारे पास आता है। ठीक है, ये एक ग्रीक यानी यूनान वालों की एक बहुत मशहूर कहावत है, अ सोसाइटी ग्रोज ग्रेट व्हेन ओल्ड मेन प्लांट ट्रीज whose shade they know they should never sit in. हमारे यहाँ क्या है, मेरा की फायदा, सानू की, मेरा की। अब तो मैं जवाब ही नहीं देता, जो मुझसे पूछता है मेरा क्या फायदा, उसको कहते हैं सोच बदलिए, आप ये बताए मैं दूसरों को क्या फायदा पहुंचाऊं, तब जाके माशरफ बनेगा। तो आप भी ये सोचिए, आज डिप्लोमा और एमसीपीएस कर रहे हैं आप दूसरों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। और एक छोटी सी बात, 6 अल्फाज का एक जुमला है, और दुनिया के सबसे मशहूर जो पॉप सिंगिंग का ब्रांड द बीटल्स है, उसके बंदे ने कहा 6 वर्ड्स सेंटेंस, ठीक है, लेकिन समुंदर है इसके अंदर। बीटल्स के बारे में उसने कहा, द बीटल्स विल एग्जिस्ट विदाउट अस। ठीक है, मेच्योरिटी सोचे, हम तो कहते हैं हम नहीं तो कुछ भी नहीं, आप चले जाएं दुनिया से, लेकिन अपने पीछे लेगेसी छोड़िए, इदारा छोड़िए, प्रोग्राम्स छोड़िए, स्टूडेंट्स छोड़िए, अच्छी औलाद छोड़िए, ताकि वो सब कुछ चलता रहे। ठीक है, जो हम बार बार टीचर्स का कहते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। जो एफसीपीएस ट्रैक पे कोई जाता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो 4 साल की ट्रेनिंग लेता है, फिर वो सुपरवाइजर बनता है। ठीक, जो आप लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आप भी एमसीपीएस वगैरह करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, एंड यू बिकम ट्रेनर्स, आप भी उस्ताद हैं, चाहे आपको रिसर्च थीसिस नहीं भी करनी पड़े, दोनों तबरुक वाले रास्ते हैं, चाहे एफसीपीएस के जरिए जाएं या एमसीपीएस के। सो हम जो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रेनर्स बने, और माशाल्लाह सैकड़ों लोग ट्रेनर बन चुके हैं। तीसरा ये समझिए हमारा रोल है क्या। ठीक है, दिस पिक्चर इज शोइंग 3 रेक्टेंगल्स। जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है जिसमें बाकी 2 रेक्टेंगल्स हैं, वो हमारा हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर, पब्लिक हेल्थ, सारा कुछ है। हेल्थ सिस्टम के अंदर प्राइमरी केयर इज अनदर रेक्टेंगल जो ब्लू कलर का है। प्राइमरी केयर, पब्लिक हेल्थ, फिजिशियंस हैं, LHV, मिडवाइफ, वर्टिकल प्रोग्राम, ये प्राइमरी हेल्थ केयर है।
और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर एक और रेक्टेंगल है जिसको कहते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियंस। सो 3 लोग हैं जो प्राइमरी केयर फिजिशियन कहलाते हैं। नंबर 1 फैमिली फिजिशियंस, नंबर 2 इंटरनल मेडिसिन, नंबर 3 इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई कहता है प्राइमरी केयर फिजिशियन, तो प्राइमरी केयर फिजिशियन 3 है, जीपी, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स। अगर कोई कहता है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में एलएचवी, नर्सेस, कम्युनिटी मोबिलाइजर, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर सब शामिल होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी केयर फिजिशियन। ये फैमिली मेडिसिन है क्या, वो पहले हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, फिर आप स्लाइड बाद में पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर साइमन ने बहुत अच्छा किया। वी आर स्पेशली इन ब्रेथ, हम मेल फीमेल दोनों देखते हैं, ऑल एज ग्रुप फ्रॉम न्यू बॉर्न टू एल्डरली, हर ऑर्गन के सिस्टम देखते हैं, रेस्पिरेटरी, स्किन, इनिशियल इवेल्युएशन ऑफ ऑल द पेशेंट, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, हम करते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हम दोनों साथ देखते हैं। इंसान, उसकी रूह उसके दिमाग से अलग नहीं हो सकता। हम तमाम हेल्थ सिस्टम में बीएचयू, आरएचसी, टीएचक्यू, टर्शी, क्लिनिक, हर जगह फर्स्ट कांटेक्ट हम है। प्लस एक्यूट कंडीशन भी देखते हैं, क्रॉनिक भी देखते हैं, इमरजेंसी भी देखते हैं। हार्ट अटैक भी हम में आना चाहिए, हाउ टू सेव अ पेशेंट इन हार्ट अटैक एंड टू रेफर। और क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, ये सारी चीजें हम करते हैं। और एक और खातून, अपनी अंग्रेज आंटी, जो बारबरा स्टारफील्ड आंटी है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे फैमिली मेडिसिन पे। ये मशहूर खातून है, जॉन हॉपकिंस की प्रोफेसर है, जिसने एविडेंस प्रोड्यूस किया था कि जहां फैमिली मेडिसिन होती है वो हेल्थ केयर अच्छा होता है, जिससे फैमिली मेडिसिन को बूस्ट मिला। फैमिली मेडिसिन का मतलब एक अनाड़ी जीपी नहीं है जिसको सिर्फ टीके लगाने आते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर जो आप लोग अब हासिल करेंगे। प्रिवेंट करना, जो अस्पतालों में रश इतना लगा हुआ है इसलिए कि प्रिवेंशन नहीं है, इसलिए आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अस्पतालों को बचाना है। पेशेंट को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं कि हाथ ऐसे धोने हैं, ये हेल्थ है। प्रिवेंशन होती है, अस्पतालों में रश कम होगा। बर्डन अस्पतालों पे आपने कम करना है। डिसेबिलिटी बचानी है, डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी है, किडनी बचाने हैं, ठीक है, फॉल्स बचाने हैं, एल्डरली के, दवाइयां कम से कम लिखनी है, हमने सस्ते में इलाज करना है। और पूरे मुल्क की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो बदनाम ज़माना स्टैटिस्टिक्स हैं, हम कोई फख्र नहीं कर सकते पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी पे। आप लोगों ने इसको इम्प्रूव करना है। बायो साइको सोशल मॉडल हमारा है। मीन्स बायो मीन्स बीमारी, साइको मीन्स मेंटल हेल्थ, सोशल मीन्स उसके सोशल अवेयरनेस। ये होता है फैमिली मेडिसिन का मॉडल। तीसरी चीज, क्लिनिक में जब बैठे होंगे आप, क्लिनिक में बैठे होंगे, अप्रोच बदलनी है, सोच बदलनी है। फ्रॉम डॉक्टर सेंटर्ड टू पेशेंट सेंटर्ड बनना है। पेशेंट सेंटर्ड एक ह्यूमनिस्टिक होता है, इंसान को इंसान का वकार दिया जाता है। डॉक्टर सेंटर में डॉक्टर बाप होता है, ऊपर अल्लाह, नीचे डॉक्टर, जो हुक्म सादिर करे वही होता है। ऐसा नहीं चलता अभी। वी शेयर मैनेजमेंट, कोलैबोरेट करते हैं, हम एम्पैथी शो करते हैं, ठीक है। बायो साइको सोशल मॉडल पे जाते हैं, हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, पूछते हैं उसको फिजिबल है भी या नहीं। और हम कंप्लाइंस नहीं कहते, हम एडहेयर कहते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा सा ताल्लुक हमारा पास साथ होता है। हम उसके गॉड फादर नहीं होते, हम उसकी एक वकील होते हैं, उसके हमदर्द होते हैं, उसके फ्रेंड होते हैं, और उसके लिए अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता इलाज तजवीज करते हैं। लोग पूछते हैं आपसे कि फैमिली मेडिसिन और जीपी और एफपी में क्या फर्क है फैमिली फिजिशियंस में। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया ना, इंटरचेंजेबली। तो ये कंफ्यूजन ज़हन से निकाल दीजिए, दोनों एक ही चीज होते हैं, जीपी और फैमिली फिजिशियन। कुछ कंफ्यूजन्स फैली थी, अमेरिका में उसको फैमिली फिजिशियन कहते हैं, यूके वाले जीपी कहते हैं। हमारे यहाँ दोनों मौजूद है, तो कंफ्यूजन थी, निकाल दीजिए कंफ्यूजन। फैमिली फिजिशियन और जीपी एक होता है। जनरल फिजिशियन भी लोग कहते हैं इसको, जनरल फिजिशियन नहीं है हम लोग। जनरल फिजिशियन इज इंटरनल मेडिसिन, जो सिर्फ एडल्ट देखता है। जनरल फिजिशियन एडल्ट्स देखता है, बच्चा नहीं देखता, गायनी नहीं देखता, स्किन नहीं देखता, ऑर्थोपेडिक्स नहीं देखता, ईएनटी नहीं देखता, जनरल सर्जरी नहीं देखता। एंड अ जीपी सीज ऑल ऑफ देम।
जीपी स्पेशल इंटरेस्ट डॉक्टर साहिमा ने बहुत अच्छा जिक्र किया। ये एक ऐसी चीज होती है समवेयर बिटवीन स्पेशलिस्ट, बहुत कमाल की चीज है। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसके कोर्सेज ला रहे हैं और अपनी पसंद की चीज में एक्सेल कीजिएगा। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये दुनिया की अजीम किताबें हैं, वेयर देयर इज नो डॉक्टर, इंडिया में, अफ्रीका में। एक कमाल की बुक है, बहुत ही नेक किताब है, बहुत ही अजीम बुक है, कोशिश है, वेयर देयर इज नो डॉक्टर। इसके अंदर जब इलाके में डॉक्टर ना हो तो ऐसी चीजें बताई गई हैं जो लोग अपना इलाज कर सकें, लेकिन देयर इज अ बिग साइड इफेक्ट। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये समझा कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, किताब ने कहा डॉक्टर ना हो तो क्या करना है। पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि डॉक्टर ना हो, मैंने खुद सुना है बड़े लेवल पे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती, जो बिल्कुल गलत कंसेप्ट था। उन्हें हमारे हेल्थ सिस्टम को पंक्चर किया, हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की गाड़ी रुकवाई, हवा निकाल दी हमारी उन पॉलिसी मेकर्स ने जिन्हें कहा डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत है। कहाँ जरूरत है? इन फैमिली मेडिसिन में जो प्राइमरी केयर होती है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव, क्यूरेटिव केयर के बगैर ही कंप्लीट नहीं होता। और मैं आपको दुनिया का सबसे अजीम चार्ट दिखा रहा हूं जिसने दुनिया को चेंज कर दिया। अब हैरान होंगे इतनी बड़ी बड़ी दवाई क्यों कर रहा हूं। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीन ग्राफ्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या शो कर रहे हैं? इस पे वाई एक्सिस पे एक हेल्थ पैरामीटर है कि चाइल्ड सर्वाइवल है, और दूसरे पे इनकम है। देयर इज अ ट्रेंड। अगर आप देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जो अमीर ममालिक हैं, जैसे यूएसए आपको नजर आ रहा है राइट टॉप पे, जितने मुल्कों की पैसा ज्यादा, आमदन ज्यादा, उतनी पैरामीटर्स अच्छे हैं, नॉर्मल है। जितना अमीर मुल्क है उतने अच्छे सेहत है, को समझ में भी आता है। लेकिन क्या हुआ कि इस ग्राफ में एक मुल्क दूर पड़ा हुआ है, क्यूबा। क्यूबा का हेल्थ स्टेटस अमेरिका के बराबर है और उसकी इनकम पाकिस्तान से भी कम है, इंडिया से भी कम। तो ये था वो बड़ा सरप्राइज जो दुनिया को मिला कि सारी दुनिया के सारे ममालिक में एक ट्रेंड है कि जितना मुल्क अमीर होगा उतनी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन एक मुल्क दूर पड़ा हुआ है जो गरीब भी बहुत है, अफ्रीका के ममालिक के बगैर बराबर गरीब है, लेकिन हेल्थ अमेरिका के बराबर है। तो ये कैसे हुआ? तो पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ क्यूबा भी बना हुआ है जो स्टडी करता है कमाल क्या हुआ। ठीक है, तो इनकम इसकी पाकिस्तान से भी कम है। क्यूबा में क्या गाड़ियां जदीद है? ना बाबा, वो एम्बुलेंस बेचारा मरीज कैसे पड़ा हुआ इधर। ठीक है, ऐसी गाड़ियों के साथ वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। क्लिनिक्स को अजीम क्लिनिक्स है, टाइलें लगी हुई है, खूबसूरत बल्ब लगे हुए। ना बाबा, बड़ी सिंपल सी क्लिनिक्स है जो हमारा बीएचयू भी इससे बेहतर होगा। क्या फर्नीचर बड़ा अजीम था जिसपे मरीज ठीक होता है? ना बाबा, वो सादा सा गरीब मुल्क है, उनकी विजडम है, उनके पास नेशनल इथोस है, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि जो फैमिली फिजिशियन है, मिडवाइफ है, नर्सेज हैं, जिन्होंने क्लिनिक में काम करना है, उनकी ट्रेनिंग भी इकट्ठी करते हैं। नंबर 1, सबको कहते हैं जिसने अस्पतालों में काम इकट्ठा करना है, पढ़ाई भी इकट्ठी होगी। नंबर 2, वहां पे हर डॉक्टर पहले 2 साल फैमिली मेडिसिन करता है, फिर वो स्पेशलिस्ट बनता है। सो एवरीवन इज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन, और वो अपनी लोकेलिटी का इंचार्ज होता है और उसकी बात मानी जाती है। सो इट्स अ फैमिली मेडिसिन लेड सिस्टम उस गरीब मुल्क में जो अमेरिका को टक्कर देता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें उस मकाम तक पहुंचा दिया है कि अब हमारे MCPS, MRCGP, डिप्लोमा है, मेंटल हेल्थ उसमें शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो यहाँ से कहानी को आगे लेके जाना है, आप सब ने लेके जाना है, पढ़ना है, क्वालिफाई करना है और फिर पढ़ाना है। सदका जारिया के तौर पे मुल्क का सिस्टम ऊपर करना है, टर्शरी केयर का बोझ कम करना है, लोगों को हाई क्वालिटी केयर देनी है। सर ने, डॉक्टर जफर मिर्जा ने दिखाया भी कि माशाल्लाह अब रियलाइजेशन हो गई है फैमिली मेडिसिन की। WHO ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं। रेजोल्यूशन भी यही कहती है कि डॉक्टर्स को ट्रेन करो। ठीक है, PMDC ने भी मैंडेटरी कर दिया और 100 आवर्स ऑफ टीचिंग भी आ गए।
तो वहाँ आप लोग ही पढ़ाएंगे कॉलेजेस में। सो दीज आर द रेफरेंसेस, और मेरी तरफ से इतना ही है। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई जज्बात में, जोश खिताबत में कोई ऐसी बात कर दी हो, किसी का दिल दुखा हो, आई एम रियली सॉरी। कभी कभी हो जाता है, सख्त अल्फाज निकल जाते हैं मुझसे, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, इस काबिल करे कि आप लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो। और सदका जारिया जो आपकी पेशेंट ठीक होने हैं, लोगों के दुख कम करने हैं मेंटल हेल्थ के जरिए, और शिफा देनी है, और हेल्थ सिस्टम को ऊपर करना है, वो सब साथें आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर हुदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर। इंडीड बहुत ही मोटिवेशनल और एंथुजियाज्म से भरी प्रेजेंटेशंस थी दोनों की, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर नासिर। और जिस तरह हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रिप्लाई भी करें तो सब बहुत ही गौर से इस चीज़ को सुन रहे थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आई थिंक एड्रेस भी होगी उसी टाइम ही। आप लोग जो हमारे पैनलिस्ट थे वो उसको टाइमली एड्रेस भी कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें भी रिसीव हुए डॉक्टर नासिर, तो मैं चाहती थी कि आप दोनों जो हैं वो टाइमली इनके जवाब इनको दे दें। डॉक्टर सबाहत आसिम पूछ रही हैं कि प्लीज शेयर द एकेडमिक कैलेंडर विद अस सो दैट वी नो व्हिच मॉड्यूल विल बी शेयर्ड विद अस एंड हाउ मच टाइम वी हैव टू कंप्लीट इट। तो डॉक्टर नासिर इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें। जी हाँ, एकेडमिक कैलेंडर जो है ना, पूरा साल का जान के इन्होंने क्या करना है, ठीक। सो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स आर CVS एंड ENT, द नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स आर न्यूरोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। और ये कैलेंडर है, और ऑन गोइंग पूरा साल चलेगा। एवरी मंथ 2 मॉड्यूल्स विल बी शेयर्ड, और एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ देयर विल बी असाइनमेंट। ये एक जनरल सा रूल है। और बाकी जो बना हुआ मॉड्यूल कैलेंडर हमारे पास है, तो हम उसे शेयर कर लेते हैं, जिसमें मॉड्यूल्स के नाम भी लिखे होंगे, लेकिन उसका कोई इतना मकसद नहीं होता। मकसद ये है कि जो मॉड्यूल आपके हाथ में है उसको कीजिए, उसी पे फोकस करें। और जनरल प्रिंसिपल है कि हर साल, हर महीने 2-2 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम ये सवाल हमसे बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन उनका किसी को फायदा नहीं होता कि कौन सा मॉड्यूल अब अक्टूबर में कौन सा आ रहा है। आपने अक्टूबर अभी पहुंचा ही नहीं ना, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के काफी है हमारे लिए। I think Nasir, if I may add, ये भी मकसद होता है, we don't want to overwhelm the students. So because people get overwhelmed, so it's better कि वो हम पेस पे चले, 2-2 महीने के साथ 2-2 मॉड्यूल्स पर मंथ, so that वो नो बुर्की आराम से खाई जाए, बजाय इसके कि आप पहली बूफे खा लें। हाँ, नहीं, हम तो 2 महीने, हर महीने 2-2 देंगे बस। ये रूल सिंपल सा है हमारा, इसी पे चलेंगे। लेकिन नवंबर दिसंबर के मॉड्यूल का नाम जान के उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। बिकॉज एक और चीज भी है, समटाइम्स वी एडजस्ट मॉड्यूल के आगे पीछे कर दिया हमने, तो ठीक है, तो वो भी एक होता है। फिर वो लोग कहते हैं क्यों चेंज किया, इसलिए भी हम नहीं देते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो 2-3 अगले 2 महीने का हमने दे दिया, बस ठीक है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मतलब आई थिंक कि ये यहाँ पे ठीक है कि अभी हम अगर इसको शॉर्ट ही थोड़ा सा कोर्स अपने कैंडिडेट्स को बताएं और उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते जाएं, तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। डॉक्टर नासिर, एक और सवाल है डॉक्टर अर्शिया सदीक की तरफ से कि आई मे गो आउट ऑफ कंट्री इन जून एंड जुलाई, कैन माई क्लिनिकल रोटेशंस ऑफ दीज 2 months कैन बी रिप्लेस्ड लेटर और कैन बी एग्जेम्प्टेड, टू whom आई कैन डिस्कस दिस मैटर। यानी अगर किसी की रोटेशंस ओवरऑल किसी भी मंथ में मिस हो गई हैं तो वो उनको बाद में उनका अरेंज हो सकता है, या क्या है इसमें? जी बिल्कुल, हमने जो रखे हुए हैं ना रोटेशंस का, अगर जो आखिरी 2 महीने हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि नवंबर दिसंबर तक सारा मटेरियल कंप्लीट हो जाए। 2 महीने हमने रेमेडिएशन के और इस तरह के वर्क के लिए रखे हुए हैं। तो जिन जिन की चीजें मिस होती हैं और एग्जाम से पहले उनको पूरा कर देंगे। किसी की वर्कशॉप मिस होगी वो भी पूरा कराएंगे, किसी की रोटेशन मिस होगी, और इवन अगर असाइनमेंट्स इस तरह की हैं जो उनसे मिस होती हैं वो भी उनको पूरा करवाएंगे। इन शॉर्ट, फाइनल एग्जिट एग्जाम से पहले आपकी जितनी कमी बेशी रह जाएगी वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमने 2 महीने रखे हैं एंड पे, ठीक है। तो हम 10 महीने में सारी स्टडीज मुकम्मल करेंगे, 2 महीने रेमेडिएशन एंड रिवीजन के हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर।
एक एनोनिमस अटेंडी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि विल पीएमडीसी रिकॉग्नाइज द डिप्लोमा होल्डर एज अ कंसल्टेंट? आसान सा आंसर है नो। कंसल्टेंट के लिए 4 साल वाली डिग्री चाहिए, ठीक। FCPS हो, MD हो, या डिप्लोमेट बोर्ड हो, या MRCGP UK, जो मेजर क्वालिफिकेशंस होती हैं लेवल 3 वाली, वो कंसल्टेंट बनते हैं। जो उससे नीचे वाली कैटेगरी है, जो 2 साल वाले प्रोग्राम्स है, लाइक MCPS, MRCGP एंड मास्टर्स, वो कंसल्टेंट नहीं, वो स्पेशलिस्ट बनते हैं। मिडिल ईस्ट में भी स्पेशलिस्ट बनते हैं, यहाँ भी स्पेशलिस्ट बनेंगे। उससे जो नीचे वाली डिग्री 1 साल वाली है, वो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होती है, और उससे आपके कैरियर में इतना बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हमने जो उसमें शिफा में जो हमने जो बेनिफिट दिया है लोगों को, कि अगर वो 1 साल डिप्लोमा करते हैं, 1 साल और करते हैं, तो they will get masters, which is a 2-year program, and it master will make you a specialist in family medicine. ठीक है, तो इसलिए इस मास्टर्स का उसके साथ बेनिफिट ऐड किया हुआ है, to make it a bigger program so that PMDC recognizes it and you can become a specialist. Thank you so much, Dr. Nasir. I hope this addressed the query. और इससे आगे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि इस डिप्लोमा का इंटरनेशनली क्या स्कोप होगा, हमें जॉब्स कैसे मिलेंगी। तो आई थिंक ये जो प्रेजेंटेशंस अभी डॉक्टर साइमा और डॉक्टर नासिर ने प्रेजेंट की हैं, इससे हमारा जो एक लिमिटेड सी बाउंड्रीज थी रिगार्डिंग जॉब, वो काफी ज्यादा अब हम वास्ट सोचना शुरू हो जाएंगे कि हमें अपनी अपनी कैरियर और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी ये चीजें करनी है जो हमने आगे सर्व करनी है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर डॉक्टर नासिर टू इट। जी बिल्कुल, आपने ना एक और चीज देखनी है कि आप सिर्फ डिप्लोमा को आइसोलेट मत कीजिए, इट्स अ कंप्लीट लर्निंग पैकेज। लर्निंग पैकेज का फायदा ये है, आपको इसके एंड पे MCPS, MRCGP भी मिलेगा, और ये डिप्लोमा आपको मास्टर्स में भी लीड करेगा, जिसमें आपको रिसर्च भी, डिसर्टेशन भी करवाई जाएगी। तो इसको इस तरह से लीजिएगा। प्लस इस डिप्लोमा के दौरान आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा है, जिसमें ये लिखा होगा कि आपने कौन कौन सी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, आपने के कौन कौन सी वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट आपकी हुई है, ठीक है, आपने कौन कौन सी रोटेशन किया है। तो आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है या पोर्टफोलियो है, वो भी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। उससे जॉब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर नंबर 2, आपकी अपनी प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे, उससे अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और जब मास्टर्स या MCPS करेंगे तो टीचिंग साइड पे भी जा सकते हैं। आपके रास्ते खुलते हैं, रास्ते पे जाना आपको होता है। इसलिए मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इसको 1 ईयर डिप्लोमा मत देखिए, इसको 2 साल का मास्टर देखिए। इसी तैयारी को आप MRCGP का और MCPS का दरवाजा जानिए, वो इम्तिहानात भी दीजिएगा। इतने मौके कोई नहीं देता किसी को कि 1 ट्रेनिंग 3 डिग्रियां। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर नासिर, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। मैं चाहती थी कि इसको एक लास्ट टाइम हम इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर लें, ताकि बाकियों के एंड पे फिर से क्लैरिटी हो जाए कि जो वर्कशॉप्स हैं और जो क्लिनिकल रोटेशंस हैं, उनका स्केड्यूल कब आएगा। और दूसरी बात ये कि क्लिनिकल रोटेशंस के लिहाज से कोई स्पेसिफिक क्लिनिक्स हैं जिनको अभी आप बताना चाहते हैं, जैसे कराची, शेखुपुरा के बारे में लिखा हुआ है, रावलपिंडी के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अभी तो आज हमारी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, ठीक। जो रोटेशन प्लान है, फॉर एग्जांपल शेखुपुरा में अगर किसी जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीस के रोटेशंस है, जो क्लिनिक ढूंढी जाएंगी, जो अस्पताल होगा, उसके अंदर टीचर की अवेलेबिलिटी भी है। हम ये प्रोग्राम उनकी अवेलेबिलिटी के साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स का बंदा अवेलेबल नहीं है 2 महीने तक, जो कहते हैं मेरे पास अभी रश है, मैं अगले करूँ। सो हम जो ये जो रोटेशन प्लान है, दैट इज वेरी कस्टमाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, और उस पर्सन के रेजिडेंस के मुताबिक होता है। ये एक जनरल प्लान नहीं है जिसमें हम बंदों को फिट करेंगे। हमने अपना प्लान उस कैंडिडेट के हिसाब से फिट करना है, और उस इलाके की जो टीचर्स हैं और अस्पताल है उसके हिसाब से फिट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोई ऐसा वो ढांचा नहीं बना हुआ जिसमें हमने बंदे डालने हैं। पूरा सिस्टम आपको इंपॉर्टेंस देता है कैंडिडेट को, कैंडिडेट्स के लिए करेंगे उसके मतलब, ठीक है। तो इसलिए अभी ये इसको बड़ा प्लान मत जानिए, किसी दूसरे का प्लान आपको नहीं शेयर करेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्लान है
और आपके हालात के मुताबिक आपके इलाके में शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो उम्मीद बड़ा वो बन भी नहीं सकता। I hope this addressed the query. Next question ये है डॉक्टर नासिर के how much this diploma course is beneficial for people who have done MCPS family medicine before? जी बिल्कुल, देखिए नंबर 1 एक तो नॉलेज रिफ्रेश होती है, नंबर 2 इसके अंदर वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट्स भी हैं जो कि MCPS में नहीं थी, जो आपको फर्दर टीचिंग में काम आएंगी, रिसर्च का वर्कशॉप भी है, प्लस इट विल लीड टू मास्टर्स एज वेल। तो और आपके पोर्टफोलियो पे यानी दीवार पे लगाने वाला एक और आपको मिल जाएगा फ्रेम, प्लस जो एडेड वैल्यूज हैं इसकी जो मेंटल हेल्थ का है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है वो भी चीजें मिल जाती हैं। और नॉलेज कभी भी जाया नहीं होता, कभी भी हो नहीं सकता नॉलेज जाया हो, हमेशा फायदा ही पहुंचाता है। और अगर आप देख रहे हैं फायदा किस लिहाज से देख रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल कितना फायदा होगा, तो वो भी मिल सकता है आपको। 2 MCPS वाले हैं, जगह अप्लाई करते हैं, एक ने डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो नेचुरली एम्प्लॉयर उसको फेवर करेगा, कंपटीशन में आप आगे चले जाते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट बनता है, फाइनेंशियल भी, करियर वाइज भी, और नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाती है। Thank you, Dr. Nasir. Next question is how can we contact the team for mental health placement for logbooks? ये logbook से related है सर, तो ये किस तरह जो है वो टीम को कांटेक्ट करेंगे? जी, मेंटल हेल्थ हमारा जो CVS और ENT के बाद नेक्स्ट मंथ से मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजी इकट्ठे लॉन्च हो रहे हैं। उस वक्त वो लॉगबुक का शेयर कर देंगे, और एक जो लिंक है उसमें वो लोग डालते रहेंगे। डॉक्टर उस्मान जो है ना उसमें अभी 1-2 पॉइंट्स जो है वो मेंटल हेल्थ में ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स डाल देंगे जो हमारे लॉग बुक है। तो वो हम जब मेंटल हेल्थ लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ, उस वक्त वो लिंक भी शेयर कर देंगे, और वो लिंक मेंटल हेल्थ के मॉड्यूल में पड़ा होगा। जब तक वो चल रहा है तो आप उसको करते जाएं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 मंथ कि मेंटल हेल्थ हम लॉन्च करें सेकंड मॉड्यूल, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर नासिर। कल जिन लोगों ने आई थिंक जो गूगल क्लासरूम साइन इन की है उनकी तरफ से कुछ क्वेरीज आ रही थी, उनमें एक डॉक्टर साहिबा पूछ रही थी कि उसमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें उन्होंने अपने क्वेश्चंस लिख के सबमिट कराया है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो सबमिट नहीं हो रहे, या उनको उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कब मिलेगा, उसकी मार्किंग कैसी होगी, इस लिहाज से थोड़ी कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को डॉक्टर नासिर, तो उसको प्लीज एड्रेस करें आप। जी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक गौर से सुनिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SAQs वो मॉड्यूल में रखे गए हैं, ठीक। और वो एक केस होता है जिसके बारे में 4-5 सवालात होते हैं कि हिस्ट्री में क्या पूछोगे, एग्जामिनेशन क्या, एंड द पर्पस ऑफ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन इज टू गिव यू द अप्रोच, एक MCQ की तरह नहीं है। और उसकी मार्किंग कैसे होती है? उसकी मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। उसमें जब आप क्वेश्चंस एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं पूरे सारे सवालात, आपको उसका रिटन फीडबैक मिल जाता है, उसके आंसर्स फीड हुए हैं कि आपने पूछना क्या है, एग्जामिन क्या करना है, दवाई कौन सी देनी है, फॉलोअप प्लान क्या बनाना है। सो द इंस्टेंट आपको उसमें रिटन फीडबैक मिल जाता है, और उसी से आप अपना आंसर कंपेयर करते हैं, यार मैंने ये गलत कर दिया था, ये गलत कर दिया था, तो आप खुद ही चेक करते हैं। इसके अलग से नंबर नहीं है, नंबर जो है मैंडेटरी MCQs के हैं, और वो भी सबमिट करने के बाद आपको उसका फीडबैक मिलता है, समझ रहे? तो SAQs के कोई नंबर नहीं है, आप करते जाएं और आपको फीडबैक इंस्टेंट वहीं से मिल जाएगा, मशीन दे देगी आपको। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट ने रिप्लाई भी कर दिया है, डॉक्टर महविश हैं कि थैंक यू डॉक्टर नासिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। वो ये है कि अगर आपको MCQ सॉल्व करने में या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको एड्रेस देखते हुए कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, तो टू हुम दे शैल कॉन्टैक्ट, या तो गूगल क्लासरूम की चैट में उसको लिख दें, उसको वहीं पे एड्रेस करके उनको जवाब मिल जाएगा, या कोई पर्सनल नंबर शेयर होगा किसी इंस्ट्रक्टर के साथ जिनको वो एड्रेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सारे ऑप्शंस होते हैं। जो वहाँ पे जो IT रिलेटेड स्टफ है वो आमिर साहब हैं जो हमारा IT देखते हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं कि टेक्निकल इश्यूज है। बाकी जो है चैट में भी डाल सकते हैं, इश्तियाक को मैसेज करते हैं आमतौर पे लोग, अगर कोई बहुत अर्जेंट हो तो फिर वो टीचर्स को भेज देता है कि यार ये क्वेरी आई, इसको एड्रेस करो, फिर हम उनको जवाब दे देते हैं। सो इश्तियाक का नंबर आपके सबके पास है, उसको कीजिएगा। ग्रुप के अंदर टीचर भी हम भी मौजूद होंगे,
और टीचर्स भी हम उसमें रखेंगे जो फौरन आपको रिप्लाई उसमें भी करेंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं भी उसको उसके अंदर ही आंसर दिया करूंगा। सर, डॉक्टर फैसल वदूद का सवाल है कि जिन लोगों ने सीपीएसपी से वर्कशॉप्स की हुई हैं पहले, उनके लिए वर्कशॉप्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगी या उनको दोबारा से हमारे साथ करनी पड़ेंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने जो शिफा का डिप्लोमा जब डिजाइन किया था उसको ये चीज को सामने रखा था कि जो लोग एमसीपीएस करना चाहेंगे तो वो डबल डबल वर्कशॉप करेंगे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, अगर उसने किसी भी मुस्तनद इदारे से वर्कशॉप्स की हुई हैं तो हम उसके उसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे। दिस इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, जो BLS, ये सब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा जहमत नहीं देंगे। तो एमसीपीएस वालों का ये फायदा है कि उसकी एक वर्कशॉप एग्जाम्प्ट हो जाएगी। आई होप डॉक्टर फैसल की क्वेरी जो है वो एड्रेस हो गई है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में भी कि डॉक्टर साइमा भी टाइमली सबकी क्वेरीज को एड्रेस करती जा रही हैं साथ साथ। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर डॉक्टर महविश। साइमा द ग्रेट, डॉक्टर साइमा को हम मुलाकात देते हैं डॉक्टर साइमा द ग्रेट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। डॉक्टर महविश ने एक और क्वेश्चन लिखा है कि वी हैव 1 month फॉर CVS एंड ENT टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टडी, प्लीज एड्रेस इन डिटेल। MCQ नीड टू अटेंड एट द एंड ऑफ द मंथ या वो कब करना है? जी देखिए, ये जो ऑनलाइन है ना सेल्फ बेस्ड, इसमें आपके पास एक महीना है। जो लेक्चर्स होते हैं ना वो बड़े इजी लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो देख लें लेक्चर, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा जो वीडियोस वगैरह है वो छोटे छोटे 5 मिनट्स के स्टफ है, उनको देख लें। ठीक, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। फिर आपके जो MCQs है ना उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, MCQs को अटेम्प्ट मत कीजिए, लेकिन उसको पढ़ लें। ठीक है, और लेक्चर दोबारा देखें या मटेरियल दोबारा देखें। इट इज ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट। तो 3000 क्वेश्चन जो ओपन बुक के होते हैं वो आपको लर्निंग देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्निंग है। असेसमेंट तो हम एंड में आपका MCQ से इम्तिहान ले लेंगे। ठीक है, सो आपने क्या है, ओपन बुक है, MCQ देखिए, समझें और आप जाके पढ़ लें दोबारा। ठीक है, सारे MCQs इस तरह से आप समझ लेंगे, फिर आप अटेम्प्ट कीजिए एट द एंड ऑफ मंथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, क्योंकि एक दफा आपने सबमिट कर दिया वो बंद हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के पढ़ के करना आपने। ठीक, सो लेक्चर्स एंड देन MCQs, उसके बाद से गोइंग बैक टू द लेक्चर्स और द लिटरेचर और द वीडियोस, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, और अच्छा अटेम्प्ट करें तो 1 महीने में हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है मैं बता देता हूँ, आप लोग भी करेंगे। वो शुरू में ना 2-3 हफ्ते नहीं पढ़ते, ना वीडियो देखते ना कुछ देखते। एंड में जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत तो मैं तसल्ली से बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार इतने स्लो स्लो क्यों बोले डॉक्टर नासिर। तो फिर वो फास्ट मोड में चलाते हैं, उसमें मैं तेजी से बोला था, ठीक है, वो उनको समझ में नहीं आता क्योंकि MCQs का टाइम सर पे होता है। फिर वो अंदाजे से अटेम्प्ट करते हैं, स्कोर कम आता है। फिर हमें कहते हैं मेरा स्कोर गलत, दोबारा ओपन करें, मेरा स्कोर कम है। इसे सर सच्ची कहानी बता रहा हूँ। तो आप ऐसा मत कीजिए, वीडियो शुरू में ही देख लें ताकि जहन नशीन हो जाए। MCQs को भी पहले 2 हफ्ते में देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से क्वेश्चंस हैं, दोबारा उसको समझें, फिर एंड में जाके अप्लाई करें। टाइम जाया मत कीजिएगा, तो वो कवर हो जाता है इस तरह का। सही, तो होगा क्या, जो पढ़ाई लिखाई का मॉड्यूल है, ENT मॉड्यूल विल रिमेन ओपन, CVS विल रिमेन ओपन फॉर 1 year, लेकिन जो MCQ जो सबमिट करने वाले हैं मैंडेटरी, वो 1 महीने पे बंद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर नासिर। डॉक्टर सदफ हैं, इज देयर एनी मॉड्यूल वाइज ऑनलाइन असेसमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ? और आई थिंक उसमें एक क्वेश्चन ये भी ऐड होना चाहिए कि जो अभी वो असेसमेंट्स अपनी सबमिट कराएंगे उसके फाइनल एग्जाम में कितनी वर्थ होगी? जी बिल्कुल, वो हमारा है उसमें। एक मिनट, मैं जरा बजाय तुक्का लगाने की मुझे सिर्फ 1 सेकंड चेक करने दें, मैं उसको देखता हूँ। बस मुझे 1 सेकंड लगेगा, मैं वो फाइल खोलूं ताकि इनको तसल्ली बख्श आंसर दे सकूं।
मैंने खोल लिया है जी। मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट है जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है। जो एंड ऑफ मॉड्यूल एमसीक्यूज हैं उनका कलेक्टिव वेट मींस ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर 40% वेट है, ठीक है। और जो फाइनल एग्जाम है जिसमें 100 एमसीक्यूज करने हैं उसका 60% वेट है, ठीक। तो 40% weight of all the MCQs together and 60% weight of the final exam. बिल्कुल ठीक है सर, वेल एड्रेस्ड जी। एंड पासिंग जो है ना, पासिंग और फेल जो है ना, पासिंग वो आपके फाइनल में है। एंड ऑफ मॉड्यूल में तो आपने 40% में से नंबर लेने हैं, ठीक है। तो उसमें कोई पास फेल का नहीं है, कलेक्टिव है वो। और सर ये जो एमसीक्यूज हैं ये इन्होंने विद इन 1 मंथ सबमिट कराने होंगे, ये इस पे भी जी जी बिल्कुल, लॉन्च होने के 1 महीने बाद, क्योंकि इनको 4 तारीख को लॉन्च हुआ है तो अगले महीने की 4 तारीख तक होगा। फिर उस दिन जिस दिन वो क्लोज होगा उसी दिन नया मॉड्यूल ओपन होगा उनके लिए। Thank you, sir. Next question is from Dr. Shahpara Malik. She's saying that clinical rotations will be in family medicine generally, or we would have to do separate rotations for medicine, surgery, peds, gynae, etc. जी, रोटेशंस फैमिली मेडिसिन की रोटेशन जो 8 वीक्स है वो जीपीस के पास होंगी जो हमारी फैकल्टी हैं, और बाकी मेडिसिन की मेडिसिन में, सर्जरी की सर्जरी में, गायनी की गायनी में, पीड्स में, और साइकेट्री में, ठीक है। सो ये इस तरह से हम करेंगे। वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही स्पेशलिटी में सारी हो, ये नहीं होगा। सेपरेट डिस्क्रीट रोटेशंस, और नॉट नेसेसरली इन वन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर जगह हर रोटेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा लोगों को कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं रिगार्डिंग द लिंक जो उनके गूगल क्लासरूम में शेयर हुए हैं। तो आई थिंक कि फिर जैसे उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल ने कि सीवीएस का मॉड्यूल ज्वाइन नहीं हो रहा थ्रू ईमेल, ईएनटी का हो गया है। तो ऐसी क्वेरीज के लिए फिर हम मतलब इश्तियाक साहब के साथ ये कम्युनिकेट करें कि इसको चेकिंग कर लें आईटी साइट पर कि क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आमिर है, और आमिर का डॉक्टर सफदर इकबाल, उनका भी सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं वैसे वो आमिर से रिक्वेस्ट कर लेते कि अभी बल्कि एक काम कीजिए, जिनका नहीं लिंक हो रहा वो चैट बॉक्स में लिख दें कि कौन सा नहीं ओपन हो रहा, तो चैट बॉक्स हम सेव कर लेंगे, फिर आमिर को फॉरवर्ड करेंगे, वो पर्सनल एक एक करके एंटर करवा देगा सबको। बिल्कुल जी, काइंडली कैंडिडेट्स 2 के नाम तो हमारे पास हैं, डॉक्टर मुजम्मिल हैं और डॉक्टर सफदर हैं। डॉक्टर सफदर ने ये नहीं लिखा हुआ कि उनकी कौन सी नहीं खुल रही है। डॉक्टर मुजम्मिल का ईएनटी ऑन हो गया है लेकिन सीवीएस उनके साथ नहीं हुआ। तो बाकी कैंडिडेट्स ही प्लीज इसमें चैट बॉक्स में ही लिख दें कि उनके कौन से लिंक्स जो है वो ओपन नहीं हुए हुए। डॉक्टर रिदा है, उनका ईएनटी शो नहीं हो रहा। डॉक्टर तलहा है, सीवीएस उनका ओपन नहीं हुआ। डॉक्टर रिदा ज़ाहरा है, उनका भी सीवीएस ऑन है। जी हाँ, क्योंकि एक का दुका टेक्नोलॉजी के इश्यूज आते हैं, देखिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है जी, और ईमेल्स का भी होता है, ईमेल के अंदर स्पेस हो या डॉट हो या कुछ भी अलग हल्का सा भी वेरिएशन हो तो वो नहीं जाता। तो इसलिए जो करेक्ट ईमेल जिन्होंने भेजा है, जैसे डॉक्टर सिद्रा कैसर ने, ये बहुत अच्छा किया, फिर इसी पे हम भेज देंगे। डॉक्टर मनहा अली पूछ रही है कि सीपीएस मैंडेटरी वर्कशॉप, हाउ कैन आई डू? आई एम आउट ऑफ कंट्री इन यूएई, सो हाउ कैन आई डू इन पर्टिकुलर टाइम एंड आई हैव जीपी एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, डू आई नीड टू वेट फॉर एन एग्जाम? अच्छा, इनका है मैंडेटरी वर्कशॉप्स के लिए। देखिए वर्कशॉप्स जो है ना, जो सीपीएसपी करता है हम भी वही कर सकते हैं। वो प्लान करके आते हैं और बैक टू बैक तो सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट होती है। तो मोस्ट लाइकली हम देखेंगे हमारे जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको 1 हफ्ता 10 दिन बुलाया जाए, जब वो आए तो बैक टू बैक उनकी वर्कशॉप करा दी जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हो सकता है कि हम कोविड में करते रहे हैं कि ऑनलाइन वर्कशॉप जितनी मैक्सिमम हो सकती है हम वो कर रहे हैं, भी रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, वो बीएलएस वो वहीं से यूई से कर लें, वहाँ होता होगा।
ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशंस जो है ना, हमारी वे में फैकल्टी तो मौजूद है, अगर लोग ज्यादा हो तो वहीं पे कर लेंगे, वरना जब वो पाकिस्तान आएंगे किसी भी वक्त तो उस वक्त उनकी कर देंगे, तो बैक टू बैक सारी इकट्ठी कर देंगे 10 दिन के अंदर। थैंक यू सो मच सर। इससे अंदाजा होता है कि कितना फ्लेक्सिबल हमारा डिप्लोमा जो है वो हो रहा है, कि हम लोग कैंडिडेट्स की जो नीड्स है उनको सामने रखते हुए इसको प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर नूर फातिमा कह रही हैं कि रोटेशंस हैव एनी वेटेज इन द फाइनल एग्जाम्स, इसमें भी इनके कोई मार्क्स या वेटेज है? नहीं, मार्क्स नहीं है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो 5 साल से कम तजर्बा है उनके लिए वो लाजिम है, उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होगी ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके मार्क्स नहीं, वो एसेंशियल है, यस से नो वाला है, दोबारा करनी पड़ेगी इनकी रोटेशन अगर नहीं करती। एक स्पेशल क्वेश्चन है बाय डॉक्टर नूरुल्लाह के आई एम इंटरेस्टेड टू मीट डॉक्टर उस्मान हमदानी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्रोच। तो ये मैसेज हमें डॉक्टर उस्मान तक कन्वे करना चाहिए। लंदन जाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर सादिया खालिद पूछ रही है कि इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप अदर देन डीएफएम मेंटल हेल्थ एसटीएमयू, इसके अलावा भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? व्हाट्सएप ग्रुप ये इश्तियाक सही बता सकते हैं कि वो ये ग्रुप्स रन करते हैं हर बैच के। असल में सर दो कैंडिडेट मतलब दो ग्रुप्स जो इस डिप्लोमा के हैं वो अभी बने हैं। एक ग्रुप में डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन के लोग हैं और दूसरे ग्रुप में जिन्होंने डीएफएम और मेंटल हेल्थ दोनों को लिया हुआ है वो इसमें हैं। तो दे आर 2 ग्रुप्स एट प्रेजेंट। 2 ग्रुप मर्ज भी किए हो सकते हैं वैसे। नहीं, वैसे अगर आप लोग देख लीजिएगा कि मैनेज करना 2 आसान हो तो कर ले, वरना मर्ज हो तो भी हो सकता है। तो ये आपका फिर आप इसको देख लीजिएगा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा। कुछ लोगों के चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं कमेंट्स कि उनको अभी तक गूगल क्लासरूम का लिंक रिसीव नहीं हुआ। जी, तो उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जीमेल चेक करें जिनको लिंक रिसीव नहीं हुआ, और अपने जीमेल में स्पैम फोल्डर या जो फोल्डर था वो चेक करें। ठीक है, कल रात को हमने 100% लोगों को भेज दिया था सही, या तो ईमेल गलत होगा या जंक में होगा। ठीक, तो वो चेक कर लें सबसे पहले कि स्पैम फोल्डर या जंक में ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर सादिया पूछ रही हैं कि बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू वी नीड एनओसी फॉर दिस डिप्लोमा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एनओसी उसके लिए चाहिए जो आप ड्यूटी छोड़ के आ रहे होते हैं, ठीक है, या आप दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं, या ऐसी चीज हो जिसका कन्फ्लिक्ट हो। इस टेक्निकली या कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स कोई भी आप अपने पर्सनल टाइम में कर रहे हैं, ड्यूटी आवर्स में तो नहीं कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, वीकेंड को कर रहे हैं, तो उनका कोई बनता नहीं है एनओसी का। और अगर आप लतीफा सुनाऊं, अगर आप सरदार जी वाला काम करेंगे, सरदार जी का ये था, एक म्यूजियम के दरवाजे पे सरदार जी खड़े हुए थे, सब लोग अंदर बाहर जा रहे थे, एक बंदा आया, उसने सरदार जी से पूछा कि मैं अंदर जा सकता हूँ? उसका नहीं, इजाजत नहीं है, खड़े हो जाओ। तो काफी देर हो गई, उसने कहा ये बाकी लोग क्यों अंदर जा रहे हैं? कहते किसी ने मुझसे पूछा था। सही, तो अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, सॉरी टू से, हमारे लोगों के हमें पता है मेंटालिटी क्या, छुपाना ढकी छुपी बात तो नहीं है, वो खुद ही अपने आप की कैपेसिटी नंगी की होती है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि मुझे एनओसी दे दो, मैंने जाना है, कभी नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए यू डोंट नीड एनओसी, यू डोंट नीड टू टेल एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनीबॉडी। खामोशी से अपने पर्सनल टाइम में डिप्लोमा कीजिए। बिल्कुल ठीक है सर। वन मोर कैंडिडेट डॉक्टर सरिता, वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इफ वी हैव मॉर्निंग जॉब्स इन हॉस्पिटल लाइक मेडिसिन डिपार्टमेंट, सो हाउ कैन वी डू रोटेशंस इन सर्जरी, पीड्स एटसेट्रा? जी, ये जिनको अस्पताल अगर इजाजत दे दे, चल बेटा तुम मेडिकल ऑफिसर हो तो तुम ये रोटेशन चलो 2 महीने मेडिसिन में काम करो, 2 गायनी में कर लो, 2 उसमें कर लो, तो ये आइडियल है कि अस्पताल की इंतजामिया उनकी जो ड्यूटियां हैं वो मुख्तलिफ वार्डों में लगा दें। नथिंग लाइक इट, ये तनख्वाह की तनख्वाह है, रोटेशन की रोटेशन है। बिलफर्ज वो नहीं मानते, वो कहते नहीं यार तुमने जाके बस वैक्सीनेशन सेंटर ही चलाना है, तुम्हें हम रोटेशंस नहीं देंगे। फाइन, शाम को अरेंज करेंगे। सो हम जो चीज पे काम कर रहे हैं बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट, ताकि शाम की अटैचमेंट्स हो,
ठीक। और हमारी कैलकुलेशंस में आपको बता भी देता हूँ कि क्लिनिक जो है ना कम से कम 3 घंटे होनी चाहिए। 3 घंटे की क्लिनिक हो तो एक मानीखेज क्लिनिक होती है, उससे कम नहीं। और हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो क्लिनिक करें। तो इफ यू मल्टीप्लाई 3 by 5, 3 hours a clinic मल्टीप्लाई बाय 5 days, कितने बने? 15 घंटे टेक्निकली चाहिए होते हैं आपको। बाकी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, दूसरी जगहों पे होता है। ठीक है, तो ये क्लिनिक हम जो क्लिनिक करते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, हमारी क्लिनिक्स का दौरान या आमतौर पे 3 घंटे होता है, 2 से 5 होता है या 10 से 1 तक होता है। सो ये हम इसको कंसिडर करेंगे। और हो सकता है कि हम लोगों की ऐसी रोटेशंस भी करें जहां पे वो एक दिन में 6 घंटे काम करें। हो सकता है वीकेंड के 2 दिन वो काम करें 12 घंटे, 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। 3 दिन 3 घंटे और कर लें। तो ये सारी हम रख रहे हैं बिकॉज VIP आर द पार्टिसिपेंट्स। हमारे कोर्स में पार्टिसिपेंट्स इंपॉर्टेंट है सबसे। उनकी लर्निंग फैसिलिटेट करना, उनको हेल्प आउट करना। तो हमारा है कोर्स ही यही मकसद, फ्लेक्सिबल ब्लेंडेड कोर्स, ताकि किसी को जहमत ना हो, इल्म हासिल करना बोझ ना हो। सिर्फ आपकी तवज्जो हो पढ़ने पे और सीखने पे हो, बाकी चीजों में आपको तकलीफें ना हो। ठीक, इस मकसद से आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू डॉक्टर नासिर। डॉक्टर अज़का शाहीन है, वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो लॉग बुक में एंट्रीज करनी है, उनके लिए पेशेंट्स का डेटा के लिए हमें NOC लेना पड़ेगी हॉस्पिटल से? नहीं, जो पेशेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपकी रिफ्लेक्शंस उसमें आएंगी ना। उस पे आपको इसको इंतजामिया में उसकी ट्रीटमेंट पे चेंज नहीं कर रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ की नॉलेज बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, और आप उसको अच्छा इलाज दे रहे हैं, जिसमें से 45 में से 30 मरीजों पे अच्छा रिस्पॉन्स आपने एंटर करना है। वो आप अपने पर्सनल टाइम में करेंगे। ये कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं उस पर, कोई उसका वो चीजें आप नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए आपको एथिकल अप्रूवल चाहिए। जो इलाज कर रहे हैं वही है। और मेरा ख्याल में जो लॉग बुक्स होंगी वो भी एनोनिमस होंगी, किसी की आइडेंटिटी नहीं उसमें शायद होती कि आप उसको किसी को बता रहे हैं। ठीक है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, तो उसको एज ए सब्जेक्ट हम करेंगे। ये मैं डॉक्टर उस्मान से फिर और भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। डॉक्टर महविश कंवल पूछ रही हैं कि we also have to enter cases other than mental health in any portal. उसके अलावा भी जो पेशेंट्स देखेंगे उनको भी किसी पोर्टल में उनके केसेस को हमें एंटर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, वो रिफ्लेक्टिव लॉग्स हैं, वो थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, हर हफ्ते की थोड़े से ही हैं। उसका फायदा ये होता है कि यू रिफ्लेक्ट ऑन योर पेशेंट्स, और वो उस सिंपल सा गूगल फॉर्म होगा, पेशेंट किस एज का था, क्या तकलीफ थी, आपने क्या सीखा, उसमें क्या किया था, आउटकम क्या निकला। वेरी सिंपल ब्रीफ, इतना कि बोझ ना हो आप पे। बिकॉज मॉडर्न लर्निंग में रिफ्लेक्शन जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये सिर्फ लॉग नहीं है, रिफ्लेक्टिव लॉग है। आप उसमें रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या गलत किया, क्या सही किया, और आइंदा आप कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। 1-2 जुमले। ठीक हो गया सर, बिल्कुल। एक क्वेश्चन 2-3 जगहों पर पूछा गया है, मैं इसको एक ही क्यूमुलेटिव उसमें पूछ रही हूँ सर आपसे कि एक तो लिखा हुआ है कि अगर रमजान में किसी ने उम्रे पे जाना हो और वो 1 मंथ में MCQs को सबमिट कराने में लेट हो जाए तो उसको क्या रिलैक्सेशन है। सेम डॉक्टर शाजिया ने भी यही क्वेश्चन पूछा है कि फॉर सम रीजन इफ यू आर अनएबल टू सेंड आवर MCQs इन 1 मंथ, तो हमें दोबारा ये नहीं मिलेंगे, या हमें थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशल केसेस में कुछ ईज मिलेगी या नहीं? ठीक है, सादा अल्फाज में बताऊं, उनका MCQ कज़ा हो गया ना, ठीक है ना, उनका मॉड्यूल कज़ा हो गया, तो कज़ा मॉड्यूल्स के लिए हमने आखिरी 2 महीने रखे हैं। अब ये कोई ना कहे कि मेरे 10 मॉड्यूल कज़ा हो गए, अब ये नहीं हो सकता। जैसे 1 मंथ है, 2 मंथ है, हो सकता है हमने 2 मंथ्स रखे हैं इन कज़ाई कामों के लिए, कि किसी का MCQs खराब हुआ, बीमारियां हैं, मसरूफियात है, हमें अंदाजा है, तो आखिरी 2 महीने हम इसी काम के लिए रखे। ऑनलाइन सेशन, जी ऑनलाइन सेशन जो रमजान के होते हैं, ठीक है, आमतौर पे हम नहीं रखते। लेकिन जो एक और चीज हम करते हैं, वेरी डेमोक्रेटिक, हम लोग ना जब कोई काम करना हो, कोई एक्स्ट्रा सेशन हो या सेशन स्किप करना हो या कोई चेंज करनी हो, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गूगल फॉर्म बनाते हैं या पोल बनाते हैं और पार्टिसिपेंट से पूछते हैं
कि हम ये करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू से, जो मेजॉरिटी कहती है कि हाँ ये कर लो, हम वही करते हैं। दिन भी पार्टिसिपेंट बताते हैं कि संडे नहीं तो सैटरडे वो कर लो, तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों की राय के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, रमजान का भी पूछ लेंगे, इफ दे फील कॉन्फिडेंट कि 1 घंटे 2 घंटे के छोटे सेशंस हो, वो खास वक्त हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है हम अफ्तारी के टाइम पे करें, अफ्तारी के बाद कर सकते हैं, कोई भी हम पूछ के करेंगे, बट मेजॉरिटी विल डिसाइड। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर नासिर, थैंक यू। ये रमजान में हम भी कामचोर होते हैं, हम भी ख्वाहिश यही होती है कि कोई ना करे अंदर की बात है। वेल सेड सर। दूसरा, आई थिंक हमें मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने एड्रेस सारे ऑलमोस्ट कर लिए हैं, और अब पार्टिसिपेंट्स भी थक गए हैं सवाल पूछते हुए तो आई थिंक कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। So I would like to thank Dr. Nasir, Dr. Saima, Dr. Usman Hamdani, Dr. Zafar Mirza, Dr. Seham, and all of the faculty members to make this orientation session and the second open house session a successful one. I hope the candidates are fully satisfied और उनकी जो भी ambiguities थी वो clear हो गई हैं। जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ और वो रजिस्टर करना चाहते हैं, काइंडली शेयर योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, ताकि हमारी टीम उनके साथ कांटेक्ट करे और जल्दी से उनको भी इस प्रोसेस में हम इनको डालें। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह नीड बेस्ड है कि जब हमें लगेगा कि और पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है या क्वेरीज बढ़ गई हैं जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, तो वील प्लान अ नेक्स्ट सेशन सून, लेकिन अभी हमारी कोई ऐसी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। So, Dr. Nasir, Dr. Saima, before we end this session, would you like to add something from your side, please? Dr. Saima. I just want to wish the participants best of luck. जिस तरह नासिर ने कहा, this is the first, अभी तो बीज डल रहा है, और इस वक्त जो है ना फोकस करें to get the training, and a lot of people are very worried about the future. मेरा मशवरा ये है कि अभी बहुत ज्यादा दूर की ना सोचें, जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं हम उसको बेहतर करें, एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएं, तो रास्ता खुद बहुत खुल जाएंगे आप सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जी, मैं बस आखिरी कमेंट, अपने ऊपर एतमाद रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन यू, बस कॉन्फिडेंस रखिए और तवक्कल रखिए, सब कुछ सही हो जाता है। हमारे अंदर बचपन से लेकर बड़े तक वो एतमाद नहीं बनने दिया जाता। ठीक है, आज वो एतमाद पैदा करें कि यस आई कैन डू इट, और मैं बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर कर सकता है। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर नासिर, डॉक्टर साइमा, वी विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू ऑल द रिस्पेक्टेड ऑडियंस कि आपने टाइम निकाल के हमारे सेशन को सुबह से शाम तक हमारा साथ दिया और क्वेश्चंस हमें भेजे। जो आपकी क्वेरीज थी, हमारी कोशिश यही थी कि हम उनको टाइमली एड्रेस करें। इसके अलावा जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, गूगल क्लासरूम्स हैं, ईमेल एड्रेस हैं, फोन नंबर्स हैं। Do reach out to us in case of any query. We'll be happy to address your queries timely. Thank you so much. I would like to end the session now. So Allah Hafiz from my side. Allah Hafiz.